Perfect. Good evening, everyone. Good evening. Thank you so much for joining on time. Thank you for joining the industrial training guidance session. And post this session, I can say for sure कि हाँ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इंडस्ट्रियल करनी चाहिए कि नहीं, कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कैसे अप्लाई करना है, and how you should be cracking it. Who am I? I'm Padam Bhansali, CA Padam Bhansali, founder of My Student Club, wherein we help out students in finding the right career opportunities. Only thing you should know about me is we have placed thousands of students in their dream organizations. So how do we help? We help them. We have multiple programs. One such as CA Industrial Training Program, where we help them from CV review to ultimate placement. My assistance is there till placement. It's not a placement guarantee program kind of thing, but yes, if you follow the process, you get the placement done. That's for sure, right? So the registrations are open for that. We'll talk about that later upon. So first of all, if you guys are here, so you must be having the thought in mind कि industrial training करनी है, या probably you're still dicey कि industrial training करे कि नहीं करे, right? So if you ask me whether to do industrial training or not, then I would be suggesting, I'll be completely biased कि yes करनी चाहिए. तब करनी चाहिए sir if you are someone who is not liking your work at articleship, like you are not interested towards audit, taxation or any other traditional domain and want to go into corporate in future, then probably industrial training is the way forward for you, right? But if you are going for practice in future, if you are thinking कि मैं practice करूंगा, then obviously you should be going for your articleship itself, because that is the work which you are going to do. Whatever you are aspiring to do, whatever you are thinking that you will be doing in future, build a profile for that, because आपका CV would be the seller document. It should say story to the recruiter that yes, this person has previously worked in an articleship firm, maybe a boutique investment banking firm, and then he moved to Goldman Sachs for investment banking, and now he is seeking for front-end investment banking wala role, right? So that way you should build your profile. Just imagine what you want to be in future and उस तरीके से अपनी profile बनाओ. And it's completely normal if you're not clear, because many people even after qualifying, even after 5 or 10 years of experience, are not sure कि उनको क्या करना है, takes on switches. So it's completely normal. But the more important aspect for you would be explore. अगर कुछ चीज की नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे वो पसंद है कि नहीं है, right? So it's your age to explore. Try to get a good work experience, and more importantly, a good brand on your CV. If you are from mid-size or small-size firm, you will be facing this issue कि big four नहीं है हमारे पास, big six नहीं है, big 10 नहीं है. So this is your chance to change your journey altogether by getting a good industrial training opportunity, and it's perfectly normal. It's completely normal to get a good industrial training opportunity. There was a student of mine in one of the batches. She landed Flipkart. So many of you have these questions कि सर मेरे इतने अटेम्प्ट्स है, मैंने स्मॉल साइज फॉर्म से आर्टिकलशिप की है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मेरे कैरियर गैप है. सो दैट पर्टिकुलर पर्सन had 14 attempts in CA intermediate, had a career gap of 1 year between the articleship itself. Okay, so and was from a small size firm in some South India firm, right? So she was probably from Chennai, और चेन्नई में भी कोई स्मॉल साइज फर्म में, चेन्नई के आसपास कोई गांव के स्मॉल साइज फर्म में शी वाज डूइंग हर आर्टिकलशिप. और उसके बाद उसने फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर ली, एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर इट. What are the benefits of industrial training? Obviously, a brand gets added. You get exposure into finance roles, FP&A roles. If you land that, you can get into front-end investment banking roles. Like today, Dave will be joining us. He is also a student of mine. He is into UBS front-end investment banking. So these people, why we have called? Because they can be the best persons to guide on what they are doing in that domain, right? ठीक है सर. और एक ऑब्वियसली बेनिफिट रहता है कि जैसे मैंने जब क्वालिफाई किया था, व्हेन आई क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो सी नाउ मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर क्वालिफाइंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? सो उसमें कंपटीशन बढ़ गया है. नाउ यू आर हैविंग 3 अटेम्प्ट्स आल्सो. सो you should be having something additional, some edge on your CV, and that edge can be your industrial training also. Like when I qualified, I did my industrial from Flipkart, and the high paying companies are probably e-commerce companies or FMCG companies. So as I did my industrial from Flipkart, it was very easy for me to land in companies like Meesho. I had an offer from Meesho. I had an offer from Amazon and all the other e-commerce players basically. And how much they are offering? Like an average CA fresher earns 10 to 12 lakhs. They are offering double of it. Amazon offers 25 and Meesho offers 20 lakh in fixed salary. That this would be the amount that would be only credited to your bank, no ESOP, nothing. So good opportunities are there, and this will also help you in various different ways actually, right? मतलब आपका एक thinking perspective, if I say my student club was built, if I say the current scenario where I am today, I'll completely give the credits to Flipkart, because there when we were seeing ki every day 40 lakh orders are getting delivered,
So that was something mind blowing, right? That is also possible. That is the scale. So it is possible. And as I said, 14 attempts, उसके बाद भी मिड साइज स्मॉल साइज फॉर्म से आर्टिकलशिप और कैरियर गैप, उसके बाद भी इंडस्ट्रियल लग सकती है. तो इट्स ऑल ऑन हाउ यू आर अप्लाइंग. ओके, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस आल्सो. Who should start and when should start? So anyone can start. There is no criteria कि आपके पास attempts है तो आप नहीं कर सकते हो. There is no criteria कि आपने small size form से articleship किया तो आप नहीं कर सकते हो. There is nothing like that. The only criteria is that you should be consistent and patient. You should be willing to put in the efforts. If you are willing to put in the efforts, no one can stop you. I can write it down that yes, मिल जाएगी इंडस्ट्री, पर efforts डालने पड़ेंगे आपको, right? हाँ, और एफर्ट्स नहीं डालोगे और सिर्फ प्रोग्राम में एनरोल करोगे और फीस दे दोगे तो इट्स नेवर लाइक कि आपने 2000 रुपीज दिए और मैं आपको ऑफर लेटर दूंगा. ऐसा नहीं हो सकता है. दैट इज नॉट पॉसिबल इन एनी सिनेरियो. सो यू, इफ यू आर विलिंग टू पुट इन द एफर्ट्स, देन ओनली यू शुड बी एनरोलिंग फॉर द प्रोग्राम, राइट? ठीक है सर. ओके, व्हेन टू स्टार्ट सर? स्टार्ट आपको करना है 3 months बिफोर यू आर कंप्लीटिंग योर 1 year. बेसिकली 9 months ऑफ योर आर्टिकलशिप अगर हो जाए ना, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो. विच कंपनीज टू टारगेट, दैट विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग पार्ट ऑफ दिस सेशन. 9 months of articleship हो जाए तो you can start off, but majority offers you will be getting in the last month of your eligibility. Why? Because companies need immediate joinees. You are smart people. What you will be doing, you will be collecting offers from all the companies और उसके बाद लास्ट में जाके सबको बाय बाय टाटा बोल दोगे कि आई विल बी बैकिंग आउट, आई विल बी बैकिंग आउट, और एक कंपनी जिसका बेस्ट स्टाइपेंड होगा, अच्छा ब्रांड होगा, अच्छा डोमेन होगा, उधर चले जाओगे. एंड और 9-10 कंपनी जहां से भी आपको ऑफर लेटर होंगे. मेनी पीपल आई नो, स्टूडेंट्स ऑफ माइंड हु हैव बैक्ड आउट 30-40 ऑफर लेटर्स आल्सो. तो बैकआउट करना पॉसिबल है, बट कंपनीज को वो अगर अवॉइड करना है तो दे विल बी गिविंग यू लेस टाइम कि जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो हमें. ठीक है, आज सिलेक्शन हुआ, 2 हफ्ते बाद ज्वाइन कर लो, ताकि दे डोंट वांट टू गिव यू टाइम. सो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज, आई से 90% ऑफ द कंपनीज विल बी सिलेक्टिंग यू in the last month of your eligibility only. So why we should start early, sir? If you are targeting good brands like Morgan Stanley, HSBC, Goldman Sachs, then UBS, then they will be recruiting you early, राइट? बिकॉज दे आर नॉट टाइम कंस्ट्रेंट. उनको पता है कि इस किसी को भी हायर कर लूं वो बैकआउट नहीं करने वाला है अल्टीमेटली, राइट? बिकॉज दे आर ए गुड ब्रांड, दे आर पेइंग गुड स्टाइपेंड. अल्टीमेटली अगर उधर से किसी को ऑफर आया तो वो वहीं पे अपना हंट बंद कर देगा. सो 1 month ऑफ आर्टिकलशिप, नो. उन सब पे आते हैं कि कौन से स्टेज पे आप और व्हाट यू शुड बी डूइंग एट दिस स्टेज. ठीक है सर, तो 9 months ऑफ आर्टिकलशिप हो जाए तो शुरू कर लो हंट. एंड सर मेरे 12 महीने हो चुके हैं. तो इफ यू आर डन विद द 12 months, see, ultimate priority for you should be becoming CA. There is nothing like कि इंडस्ट्रियल नहीं मिली तो मैं एक अच्छा CA नहीं बनूंगा, इंडस्ट्रियल नहीं मिली तो मेरी जॉब नहीं लगेगी. There is nothing like that. Get a priority straight that CA बनना is the ultimate priority, not industrial training, not articleship, nothing, right? Because that prefix will change everything for you ultimately. So अगर आपको नहीं मिल रही है अभी तक तो keep a date in mind कि सर मैं 31 दिसंबर तक टारगेट करूंगा. बिकॉज अभी जैसे हमारे बैच में मेनी पीपल हैव एनरोल्ड 15 नवंबर से 15 दिसंबर, मार्च वाज द एलिजिबिलिटी, राइट? 31 मार्च. तो 15 नवंबर से काफी लोग अभी इमीडिएट ज्वाइनर्स है, तो उन्होंने हंट करना शुरू कर लिया. एंड दे हैव ए टारगेट इन माइंड कि 31 ऑफ दिसंबर तक आई विल गेट एन ऑफर, आई विल एंश्योर कि मिल जाए उनको, विल बी ट्राइंग फॉर दैट. बट हाँ, ऑफर लेटर आपको लाना पड़ेगा 31 दिसंबर तक. कीप ए टारगेट इन माइंड, बिकॉज जितना आप डिले कर रहे हो अल्टीमेटली यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर एग्जाम लीव्स. कंपनीज वोंट बी प्रेफरिंग यू. आर्टिकलशिप आप 1 साल कर सकते हो, इंडस्ट्रियल 1 साल कर सकते हो, राइट? सो कंपनीज वोंट बी प्रेफरिंग यू इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन फॉर 9 months 10 months. मेजॉरिटी कंपनीज वांट कि वो बंदा 12 महीने यहीं पे करे, राइट? इफ यू आर विलिंग टू डू, इट्स गुड, बट अल्टीमेटली आई विल बी सजेस्टिंग ओनली वन थिंग, दैट सर अभी के लिए सीए के ऊपर प्रायोरिटी रखो. जैसे अभी किसी ने बोला कि 15 महीने मेरे आर्टिकलशिप के खत्म होने वाले हैं, तो प्रोबेबली यू शुड नॉट सर्च फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, और एटलीस्ट डोंट एनरोल फॉर द बैच. व्हाई? बिकॉज बहुत लेट हो जाएगा अभी, राइट? अप्लाई कैसे करना है, एवरीथिंग विल बी कमिंग ऑन दैट. ठीक है सर. सो एनीवन for the batch eligibility, many had this question. So if you are going to enroll for the batch, it would be, you should be eligible, you should be completing your 1 year by 15th of November. अगर 15th of November से 15th of March 2026 तक अगर आप अपना 1 year complete कर रहे हो तो you can enroll for the batch. If it is 1st November, don't enroll. I will be suggesting कि 1 महीना extend करना is okay. उससे ज्यादा extend कर रहे हो तो you are compromising on your exam list, and I feel that please, मतलब सीए बनने पे फोकस करो, अपने स्टडीज पे भी फोकस करो. इट्स हाँ, वन मोर कॉमन मिथ यू ऑल हैव इज कि सर अगर मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की
तो मेरी स्टडीज कॉम्प्रोमाइज होगी, नथिंग। मतलब ये तो एकदम दिस इज द व्हाट वी से वर्स्ट मिथ आई कैन से। व्हाई? बिकॉज आप आर्टिकलशिप में सैटरडे संडे भी काम कर रहे हो ऑन योर ड्यू डेट्स। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में तो आपके सैटरडे संडे भी ऑफ है। इन आर्टिकलशिप यू आर वर्किंग अंडर ए पार्टनर, जो जिसको पैसे मिल रहे, प्रॉफिट है उसका। यहाँ पे तो आप एम्प्लॉयर के अंदर वर्क करने वाले हो, जिसको पैसे नहीं मिलने वाले, ही इज गेटिंग ओनली सैलरी, फिक्स सैलरी ही मिलनी है उसको। तो ही वोंट बी प्रेशराइजिंग यू कि करते रहे करते रहे। तो अल्टीमेटली आई वुड बी सजेस्टिंग कि बॉस, इंडस्ट्री में आपकी स्टडीज इम्पैक्ट नहीं होने वाली, बट ओवर एक्सटेंडिंग फॉर समथिंग, देन दैट इज रॉन्ग. Okay, and if any one of you, if you are part of the industrial training program, if you have already enrolled for it, you will be receiving the links very soon, and you don't need to watch this session, because यहाँ पे जो हम करने वाले हैं, that is only 10% of it, because we are having time constraint. और ultimately जब वहाँ पे करेंगे तो it would mix and match. So it's better if you're part of the industrial training guidance session, don't waste your time, start applying abhi se, start watching recorded lectures if you want to, if you are getting eligible by 31st of December, and if not then wait for 16th, 16 से अपनी बैच शुरू हो जाएगी, तब से कर देना. ठीक है सर, हमने डिसाइड कर लिया कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है. अप टू 31st मार्च एनीवन कैन एनरोल. अपने बैच के ऊपर आएंगे, पीछे बात करेंगे, पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं. हमने सोच लिया सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है हमें, कहाँ से करें? ओके, तो मेनी ऑफ यू, आई विल सजेस्ट कि बी ओपन. Okay, be open that I am okay with all the locations if possible. If you are having some constraint and you are saying कि sir मैं हैदराबाद के बाहर नहीं जा सकता, it's okay, it's fine. You have companies in Hyderabad also, UBS hires, you have Red Health. But if you are open, you open doors to various opportunities. You can go to Bangalore, you can move to Mumbai, you can go to Delhi, and every location has one company which is really good. Like Pune has Cummins and UBS, you can go there. You can go for Mumbai, Mondelez में आपको अच्छी स्टाइपेंड मिल जाएगी, HSBC है. You can go for Delhi, दिल्ली में भी आपको HSBC मिल जाएगा, Barclays मिल जाएगा, सिटी बैंक मिल जाएगा. बैंगलोर आ सकते हो, बैंगलोर में हर टाइप ऑफ स्टार्टअप आपको मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट, Amazon, every kind of startup is here. Zepto भी अभी हायर कर रहा है. So there are opportunities, ample amount of opportunities. If you start hunting in the right direction, I can say मिल जाती है. Because I have seen in past, I have placed, I can't count the number of students, but I have seen multiple journeys, and from small size firm to rankers, I've seen every journey, and I can say it's not at all that difficult. In any organization you say, you'll be finding many people. Like you all dream for Amazon. My students, around 40 plus students would be in Amazon at this moment in a single batch. Recent बैच जो अभी 2 महीने पहले हमारी बैच थी, उसमें 16 जने अभी मॉर्गन स्टैनली ज्वाइन कर रहे हैं. मुंबई में मॉर्गन स्टैनली में भी ओपनिंग्स है, अभी जनवरी में वापस ओपनिंग्स आएगी. हाउ वी हेल्प? सी गाइस, सिंपल थिंग है कि I have been in this journey for long now, right? So मुझे थोड़ा सा idea, and if you feel maybe along your journey could help, then yes you can. Okay, चलो, let's share my screen. कोई भी क्वेश्चंस हो ना, आप लास्ट में मुझे पूछ लेना, मैं सारा आपको क्वेरी पूरा खत्म करके ही आपको भेजूंगा, चिंता मत करो. अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन ओपन है. कब बंद होगी? मोस्टली 15 नाइट को बंद होगी, बट इफ यू आर समवन हु इज गोइंग एलिजिबल फॉर इमीडिएट ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग बाय 31st December, आई विल सजेस्ट ज्वाइन अर्ली, बिकॉज मेजॉरिटी पीपल वुड बी कंप्लीटिंग लेक्चर्स बाय टुमारो इटसेल्फ. जो 31st December वाले हैं, उनको मैंने टारगेट दिया हुआ है कि क्योंकि यू डोंट हैव टाइम राइट नाउ. चलो, सी गाइस, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर आपको करनी है तो इट्स अ सिंपल 3-step प्रोसेस. ओके, कुछ नहीं है, 3 स्टेप है. एंड again on the program thing, even without the program you can crack industrial training opportunity, because जो अभी बता रहा हूँ वैसा ही, बस उसको बहुत डिटेल में, और थोड़े ट्रिप्स ट्रिक्स एंड हैक्स, एंड ऑल्सो माई मेंटरशिप वुड बी देयर एंड माई रेफरल्स वुड बी देयर. पर उसके अलावा इफ यू आर फीलिंग कि नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा, इफ यू आर फेसिंग सम फाइनेंशियल इश्यू, you don't want to register for it, it's completely normal. It's not, you're not missing something bigger out. Obviously if I were in your stage and if I were along with you, you could have cracked something better, but even without that you can try and you will be getting an opportunity. Don't worry much on that. Okay, 3-step process hai. You have to craft a perfect CV, you have to apply the right way, and you have to give cracking the interviews. ठीक है, 3 सिंपल स्टेप है, इट्स नॉट एट ऑल दैट डिफिकल्ट. सीवी बनाने के लिए व्हाट यू शुड बी डूइंग, अगर आपको सीवी बनाना है, अभी mystudentclub.com पे जा सकते हो, और यहाँ पे ना आपके फ्री रिसोर्सेस है इधर.
ठीक है, सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिसोर्सेस। तो यहाँ पे हमने ना फ्री में थोड़े टेम्पलेट्स दिए हुए, 2 टेम्पलेट दिए हुए, ऑब्वियसली प्रोग्राम वालों को ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे ये टेम्पलेट दिया हुआ है, यू कैन यूज दिस टेम्पलेट एंड यू कैन मेक ए सीवी। ठीक है, CV1, CV2, कवर लेटर 1, इंटरव्यू सिलेबस, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, हायरिंग कंपनीज लिस्ट और फाइनेंस इंटरव्यू क्वेश्चंस, ऑल दीज आर गिवन आउट फॉर फ्री ओनली। ओके, और अगर आपको प्रोग्राम वाला देखना था तो यहाँ पे है वो, समवन वाज आस्किंग दिस, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एनीवन हु इज कंप्लीटिंग बाय 15 नवंबर टू 31 मार्च इज हियर। ओके, आज के स्पीकर्स भी यहीं से है वैसे। ठीक है, सो रिसोर्सेस में जाना है आपको, रिसोर्सेस में जाके यू विल बी गेटिंग आउट सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिसोर्सेस वाला थिंग। ठीक है सर, यहाँ से मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आप वो हो इसमें mystudentclub.com, once you enroll for this, which so you can simply log in with your ID password, और यहाँ पे आप जाके माई कोर्सेज में जाके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये जो प्रोग्राम के लिए आप एनरोल करने वाले हो, यू विल बी गेटिंग दैट। तो यहाँ पे आपको है ना सीवी के लिए अराउंड 7 टेम्पलेट्स प्लस 10 टेम्पलेट्स है, कवर लेटर के 3 टेम्पलेट है, देन देयर इज ए सीवी का चेकलिस्ट। हाउ शुड बी ए सीवी? सीवी इफ यू आर मेकिंग ना, सीवी इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर ही आपको इंटरव्यू कॉल्स आएंगे अल्टीमेटली, राइट? दिस इज द डॉक्यूमेंट जिससे आपकी सीवी इज लाइक कोर्स ऑफ वन लाइफ। Ultimately, you have to communicate what you have done in the life. And if you are saying I have done nothing, then probably they would not select you, right? So if I show you something, huh. So this was one resume. Wait, I'll open it with preview. What this resume is like, it's a CA freshers resume. I hope my screen is visible. Which नहीं दिख रही? It's visible, right? Yes, no, क्या होता है? चलो वापस शेयर कर देते हैं। Hello to share screen, share entire screen. हैंड्स बाद में रेज करना, लास्ट में करते हैं अपने। चलो 1 second, I'll just reload this. Now it's visible, everyone? Perfect. Reactions तो आ रहे हैं। जिंदा रहना, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बाय 8 o'clock आई विल बी कंप्लीटिंग, 7 o'clock आई विल बी, सॉरी 8 o'clock आई विल बी कंप्लीटिंग माय सेशन। उसके बाद हम स्पीकर्स को बुला देंगे। 8 o'clock तक आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस व्हाट्स रिक्वायर्ड, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑनेस्टली, राइट? ठीक है, सीवी बनाना है सर। सीवी बनाने के लिए हमने किसी का सीवी खोला था अभी, वंशिका जी। ठीक है, इसका सीवी है वंशिका अग्रवाल, शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, व्हाट शी हैज रिटन टू वर्क विद, एंड शी हैज रिटन एन ऑब्जेक्टिव टू वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी कैन लर्न न्यू स्किल्स एंड इंक्रीज माय एबिलिटीज इन एजुकेशन। शी हैज रिटन बीकॉम, passed out 12th from CBSE, passed out 10th from CBSE, CA intermediate, she has passed out both groups in 2022, CA final completed in 2024. Basically, she is a first attempt candidate. But उसके CV देख के, you won't be finding that. Technical knowledge and skills, she has written all the technical knowledge and skills which she has having. Work experience में उसने लिखा है कि भाई मैं CA fresher हूँ। Okay, no work experience, nothing. Articleship भी लिखने का, she did not think so. Strength and hobbies में she has written hard and smart working, honest and punctual, good communication skills, and arts, drawing, reading books. पर्सनल डिटेल्स में उसने अपने पापा मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, कि वो सिंगल है, वो भी लिख दिया है। एंड सेकंड पेज उसने ब्लैंक छोड़ दिया है। सो डू यू थिंक इट्स अ गुड सीवी? Like no work experience, and you can see how much blank space we are having. So probably it's not a good CV, especially for a CA fresher. It's not a good CV, right? Okay, let's go to Finder. Let's go documents, my student club, industrial training program, resume. Let's go to this one.
Okay. So this is also one CV wherein यहाँ पे उन्होंने पूरा प्रॉपरली अरेंज किया है बेसिकली, राइट? दे हैव रिटन एवरीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड. दिस इज यू कैन कंसीडर फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. ओके, यहाँ पे उसने अपना नाम लिख लिया, यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट इमीडिएट ज्वाइनिंग लिख लिया. दे हैव रिटन. अब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सीवी ना, तो बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट? एवरी माइनर डिटेल इज गुड. अब जैसे ये ईमेल आईडी है, विच इफ यू आर हैविंग दिस ईमेल, अरे यार, विच ईमेल आईडी, हाँ, ये ईमेल आईडी है. दिस शुड बी अ प्रोफेशनल ईमेल आईडी. व्हाट इज अ प्रोफेशनल ईमेल आईडी? इट कैन नॉट बी riderboy1234@gmail.com. It cannot be intelligent1234@gmail.com. It should be a first name last name @gmail.com, a one number in between. If you are having a number, write it correct. One of the student wrote 9-digit number and was complaining कि वहां पे क्यों नहीं आ रहे उसको calls. If you are talking about your location, you should be writing your location only if you are from a tier 1 city. Like if you are willing कि मुझे उधर ही नौकरी करनी है, तो ही अपनी लोकेशन लिखो. लिंक्डइन पे है ना, लिंक्डइन यूआरएल को आप कस्टमाइज कर सकते हो. जस्ट गो ऑन टू लिंक्डइन, यू कैन एडिट योर यूआरएल. जस्ट गो ऑन टू योर प्रोफाइल एंड यू कैन एडिट द यूआरएल. एल्स क्या होता है ना, यूआरएल आपको ऐसा दिखेगा. आई डोंट नो इफ शी हैज रिटर्न दैट यूआरएल. आ गया इसका. इसने लिंक्डइन यूआरएल नहीं लिखा है. आइडियली लिखना आप, क्योंकि उससे भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है. ओके, देन यू हैव योर LinkedIn URL आप edit कर सकते हो. Then you come to your professional and educational qualifications, wherein you write CA Intermediate November 21, CA Foundation. Ensure that you're writing in consistency. Basically, अगर 3 लेटर के months लिख रहे हो, तो 3 लेटर ही लिखो आगे. Right? Suppose you're writing November full somewhere, and somewhere you're writing March and half, and you're writing somewhere 2023, somewhere you're writing just 23. That would be wrong. It should be properly aligned, right? It should be in the center of the cell. What is the center of the cell? This is the center of the cell, right? You should be, it should not be on top, bottom of stuff. Like if I show you one CV, intelligent वाला गया क्या? We have it. So see this CV, wherein the things are not in center, right? कुछ आगे पीछे है, कुछ बिखरा हुआ है, कुछ लेफ्ट है, कुछ राइट है, कुछ बीच में है. समवेयर ही हैज रिटन फुल नेम, समवेयर हाफ. सो बहुत माइनर माइनर थिंग्स है, बट इट मेक्स अ डिफरेंस फॉर यू, राइट? देन यू कैन सी दिस, you can have this at center, you can you can have this at center, you can have this at center, you can have this at center. Even in percentage you can have decimals. अब यहाँ पे 2 decimal लिखे हैं, यहाँ पे 1 decimal लिखा है, यहाँ पे you have written 0 decimals. So probably you can write that. और marks लिखना है तो marks लिखो, percentage लिखना है तो percentage लिखो. नीचे मत जाने दो फालतू unnecessary वाला thing. Don't bold entire content in work experience. Bold only necessary content. Sir, I have not done much in work experience. Probably you can go to this file, company wise selected CV. In this file you will be having अपना which CV has got shortlisted in which company. Basically Goldman Sachs में किस बंदे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिली और कौन से CV से मिली, ठीक है? इफ फ्लिपकार्ट में कौन से बंदे को किस CV से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिली. इससे आपको एक टेम्पलेट भी मिल जाएगा बेसिकली, और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से वर्क एक्सपीरियंस को वो प्रेफर करते हैं, राइट? सो दिस ऑल्सो वुड हेल्प. और वर्क एक्सपीरियंस में है ना, इफ आई शो यू वन CV, अब इसने जो सीवी लिखा है, इसमें लिखा था इसने फाइल्ड रिटर्न फॉर अराउंड 50 इंडिविजुअल्स, टैक्स ऑडिट, ऑडिटेड कंपनीज विद टर्नओवर ऑफ अराउंड 50 करोड़. बहुत बेसिक लैंग्वेज यूज की है. यूज एक्शन वर्ब्स इन दिस. हाउ टू यूज एक्शन वर्ब्स? सर सिंपली गो टू चैट जीपीटी. अगर आपने जेरोक्स भी किया है, एंड इफ यू कीप टू चैट जीपीटी अ प्रॉम्प्ट कि बॉस रीड्राफ्ट माय वर्क एक्सपीरियंस, इट विल रीड्राफ्ट इन अ मैनर दैट यू विल आल्सो नॉट रियलाइज कि आपने ये सब काम किया अल्टीमेटली, राइट? सो हाँ, रीड्राफ्ट दिस वर्क एक्सपीरियंस, यूज एक्शन वर्ब्स, मेंशन क्वांटिफाई इम्पैक्ट. कुछ अगर आप काम कर रहे हो तो उसको क्वांटिफाई भी करो. जस्ट डोंट शेयर कि मैंने ये किया, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ और वो भी लिखो.
managed income tax compliance for 50 plus individual clients including return preparation, computation and filing. होता यही है, पर ये लिख देने से कितना अच्छा लग रहा है. Ensuring 100% statutory compliance and timely submissions. Executed tax audits for companies with aggregate turnover exceeding 50 crores. Preparing audit reports, schedules and working papers in line with Income Tax Act and applicable rules. What she had written, filed returns for around 50 individuals. Same point, but with lot different impact. So you can use this or you can do this also. Okay, so you can go here, you will be finding ki kya kya work experience the and how it got changed also. If I show you one more thing, I don't think वो वाला CV होगा, but yes, उसने थोड़ा सा करेक्ट किया था उसके बाद. ठीक है, न्यू registration, all types of performed internal audits, part of the team on concurrent audit of oil maintenance fund, MCA form filings and everything, right? So you can change your work experience like this. You can see this CV again. Where were we? Industrial CV template. यहाँ पे आप देखोगे तो you have written bank with over 75 branches, 10,000 crores in deposits, conducted comprehensive statutory audits, tax audits, GST audits. Okay, Goenka Mehta and Associates, you can merge your transfers like this. Many of you have dummy transfer, तो ऐसे merge करके भी आप दिखा सकते हो. You can avoid showing it also, and if you want, you can show separately also. Ideally, this way is better. और यहाँ पे ना आप अपने फर्म का डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो. लाइक इफ आई शो यू वन मोर सीवी, let's say CV template 1. So we have a description for your firm that it is a boutique CA firm in Mumbai offering personalized tax planning and corporate finance services with a growing clientele of over 120 SMEs and family-owned business. इससे एक अच्छी पिक्चर क्रिएट हो रही है in the mind of the interviewer that yes, इस सेशन की रिकॉर्डिंग आई एम सॉरी अवेलेबल नहीं होगी because sometimes okay. क्या दिखाना था आपको, कैसे दिखा सकते हो सर आप लोग? यू कैन गो टू दिस, यहाँ पे डिफाइन फर्म की एक पीडीएफ है. You can see this. Associates of XYZ, a prominent CA firm headquartered in Coimbatore, leading CA firm having over 40 years of experience, most renowned CA firm in Udaipur, a dynamic CA practice. है छोटी सी सादी सी firm, but that person does not know it's mid size or small size. It's the way you're communicating and phrasing the stuff, right? With me? No, yes, हो कि नहीं? चलो, perfect. CV templates, here we are. ट्रांसफर अगर है ना आपका या करियर गैप है, आइडियली आई रिकमेंडेड हरिनी टू रिमूव दिस ऑल टुगेदर. डेट्स ही मत दिखा, सिंपली 1 year दिखा दे या 9 months दिखा दे, 3 months दिखा दे. नो वन इज गोइंग टू क्वेश्चन. सर अगर अटेम्प्ट्स है तो देयर आर मल्टीपल वेज टू हाइड अटेम्प्ट्स. विल बी डिस्कसिंग दैट आल्सो, बट लेट्स से I cleared my CA intermediate group 1 in September 21, September 24, and I cleared my CA intermediate group 1 in May 24 probably, let's say. तो 24 ही है, तो सितंबर में ही मत दिखाओ, ईयर ही दिखा दो, सीधा 2024 ही दिखा दो, right? That way also you can hide attempts. You can hide attempts by if you are having multiple attempts. हरिणी के केस में क्या हुआ, when she was my student only, so 14 attempts. तो अब कैसे छुपाए? तो we removed the year section altogether. Like if you see her before and after वाला CV, you will be finding हरिणी resume old. यहाँ पे उसने attempts दिखाए हुए सारे, and इसका नया वाला CV attempts ही गायब हो गए. No one is going to ask for you, right? So ऐसे भी आप change कर सकते हो. हाँ, गैप था उसका, गैप की जगह उसने 1 year दिखा दिया, 6 months दिखा दिया, तो गैप भी चला गया. तो अल्टीमेटली दिस इज द वे यू शुड बी. इट्स लाइक यू आर प्रेजेंटिंग, यू आर नॉट लाइंग समथिंग, यू आर नॉट हाइडिंग दी अटेम्प्ट्स. अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि कितने अटेम्प्ट्स है, तो यू विल बी सेइंग द ट्रूथ. बट इफ दे आर नॉट आस्किंग, दे आर नॉट केयरिंग फॉर दैट, देन यू आर स्किप्ड इट, right? Only do this if you are having many attempts, more than 6-7 attempts. If you are having less than that, it is justified, it's completely normal. और career gap देख लेना. और other than this also work experience है तो दिखा दो. Any additional degree, any additional work ex will only make you 1 degree hotter, right? So do that. I'll just go really quick because we are short of time. And okay, इसके अलावा भी we'll be discussing, don't worry. And today I'm there post 12 also, मतलब 12 AM basically session होने के बाद भी I'll be in touch with you over the session, right? सब सारे speakers होने के बाद भी we will be contacting with each other. You will be raising your hands, you will be asking your queries, and I will be answering all of them. Okay, perfect. ठीक है सर. उसके बाद ये वर्क एक्सपीरियंस
आप डिसाइड कर लेना. इफ यू आर हैविंग ऑडिट का वर्क एक्सपीरियंस, दैट्स आइडियली मोर इंपॉर्टेंट. डोमेन उन सब पे अपने आते हैं. We'll be talking about that. Leadership, extracurricular skills, these are really important. Basically, everyone has work experience, everyone has education. What will make you different is a work, ये अपना एक्स्ट्रा करिकुलर वाला स्टफ. आई हैव सीन मेनी कासा मेंबर्स, जो कमिटी मेंबर्स होते हैं, आई हैव फाउंड देम that they have done something really good. They have done something really good extracurricular activities, but that would help. If you don't have that, you can probably get on to that forage internships and stuff. That would help. If you are someone good in sports, you can mention. Just don't mention lemon spoon race I have won first prize, right? Just mention something that is good. You can do that. उसके अलावा certifications में, if you can get certificate on SAP, Power BI, Excel, then that would help. I'll show you one message. चल वो बाद में दिखाएंगे अपने. शुभम जब आएगा ना, फ्लिपकार्ट से है वो शुभम, तो ही विल ऑल्सो स्पीक अबाउट दैट. तो बेसिकली इन दैट केस फ्लिपकार्ट में अभी रिसेंटली एक 5-6 दिन पहले वन ऑफ माय स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड. ठीक है, many have got placed, but that one particular student had done something really good. What he did सब नॉर्मल अप्लाई कर रहे थे. ही इंक्लूडेड अ प्रोजेक्ट अलोंगसाइड दैट एप्लीकेशन. दैट विल डिस्कस इन द एप्लीकेशन वाला पार्ट. Achievements में you can show multiple achievements. Again, I'll show you the resource wala thing. If you go here for this also, we have had a resource, not this one, this one. You can show paper presentation, volunteering, participation in CASA, article published on Tax Guru, consistent LinkedIn content writing, achievements like 4th rank in MCS. 3 rank होते हैं, पर तुम्हारा MCS अभी हुआ नहीं है. Excel, Power BI, MISM, NISM, SAP, financial modeling के courses आप दिखा सकते हो, stock market के certifications दिखा सकते हो, school ranks दिखा सकते हो. Again, in academics, अब जैसे हमने थोड़े बहुत CVs देखे, we saw this CV, we saw वंशिका का CV. वंशिका is a first attempt pass out, but कहीं पे भी उसने highlight नहीं किया. And we saw one CV which was this, जहाँ पे remarks में हमने सब कुछ लिखा है कि yes, I have scored an exemption in all group 1 papers. We have scored 70 plus scores in all subjects, first class distinction, school rank 1, right? तो this way you have to prepare a CV. लास्ट में जब जो आप हो बैच में, उधर आपको एक चेकलिस्ट भी दी जाएगी, और उस चेकलिस्ट के हिसाब से भी आप एक बार चेक कर लेना. उसके बाद एक AI CV रिव्यू होगा, देन माय पर्सनल CV रिव्यू वुड बी देयर इन द बैच पॉप. तो मैं पर्सनली भी रिव्यू कर लूंगा. उसके बाद आपका एक अच्छा सा CV बन जाएगा. जस्ट मेक ए 1 page CV, डोंट गो टू 2 pages. मेक इट इन ए गुड टेम्पलेट, राइट गुड वर्क एक्सपीरियंस, frame it in a good story way. Like if you are having a work experience which is good, probably keep that on top. If you are having education that is good, probably keep that on top. If you are having extracurriculars, तो उसको top पे मत लेके जाना. It should be either edu or work experience. Extracurriculars नीचे रखो आप. जितना अच्छा हो extracurriculars, that would be good. This is one thing. My student club जो था, that is one thing that was really a determinant in even joining my industrial training, because previous to that only it was working. और उसके अलावा even in my CA fresher job hunt, it helped a lot. So if you have got time, you can do this. And mentioning keywords is really important, because when you are going for HSBC, UBS, वहाँ पे career portal अपने आप evaluate करेगा. There won't be a human who is evaluating your CV. It should be keywords देख के job description के हिसाब से it will match and it will just upload, right? Then it will be considering your CV. Extracurriculars है, awards है, skills है, position of responsibility है, interest है. These are some things you can use to fill a 1 page वाला CV. It should not look empty. खाली खाली स्पेस नहीं होना चाहिए. जैसे अगर आप इसमें जाओगे वंशिका के CV में, आपको दिखेगा यहाँ पे कितना सारा खाली स्पेस है यार. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. इट शुड बी, दिस स्पेस शुड नॉट बी एम्प्टी. लास्ट में भी ये इतना सा भी एरिया है ना, वो भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए. मतलब थोड़ी सी मार्जिन रखो, 0.5 to 1 inch, एंड यू कैन कंसिडर दैट. उसके अलावा ये वाला एरिया जो है, एक्स्ट्रा पेज नहीं आना चाहिए. इट्स वेस्ट ऑफ टाइम. काफी जनों का है ना, इधर एक स्कैन विथ ओकेन स्कैनर आता है. दैट ऑल्सो यू शुड नॉट बी हैविंग. कीप इट प्रोफेशनल अल्टीमेटली, राइट? सो डू दिस, और एक अच्छा सा CV बना दो, और उसको जितना अपने कलीग से हो एक बार रिव्यू कर सकते हो. चलो सर, अभी आपका जो वो प्रोग्राम वाला आप इतना बताए, बट यू डिड नॉट गो इनटू डीप, राइट? सो इफ यू गो टू mystudentclub.com, many आर आस्किंग दिस वन, राइट? सो यहाँ पे आपको CA इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल जाएगा. इस प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हो इफ यू आर वांटिंग टू. विदाउट दिस ऑल्सो यू कैन गेट योर व्हाट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी honestly, but you will have to, I'll be alongside in this journey. I'll see it. Time is more important for me. So yeah, this is the program. You can consider this. You can go to this page and you can enroll. What would be provided, sir? Ultimately, just
I'll take a couple of minutes, then we'll just walk it back. We'll be providing you with CV review. It's not a placement guarantee program. Ultimately, placement हो जाती है आपकी और हो भी जाएगी, and you'll be getting a better opportunity. You'll be improving your 10x chances कि yes, because I am alongside your journey. But it's not like कि आपने 2000 दिए and I'll be giving you an offer letter ultimately, right? CV review आपको मिलेगा, उसके बाद आपको applications में help मिलेगी. Basically, if you see our latest वाला WhatsApp group, immediate joinees के लिए हमने एक WhatsApp group बनाया. इस वाले WhatsApp group में if you see there are multiple vacancies. These are internal vacancies. That Sterlite, Mumbai and Pune have 3 vacancies for industrial trainees. Joining is immediate by December. Who can message? They can message only on this number. What is this number? This number is basically my number. तो these are internal vacancies जहाँ HRs मुझे directly reach out करते हैं और मैं आपके CVs forward करता हूँ. जैसे सर, जैसे फ्लिपकार्ट, ये जैसे एक है फ्लिपकार्ट में, ही इज एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. हाय भाई, वेदांग तो आ गया. वेदांग इज ऑल्सो वन ऑफ माई स्टूडेंट. अब 2 और चाहिए हमें इमीडिएट ज्वाइनिंग वाले, बढ़िया रहेंगे, जो डिच ना करे. बाद में कोई हो तो बता दो, वीकेंड पे इंटरव्यू करा देंगे. धन भाई, बिग सिक्स एनी, कोई भी चलेगा, उसको बिग सिक्स का भी क्राइटेरिया नहीं है. तो अल्टीमेटली आई विल बी सेंडिंग देम द सीवीज, और उस वे पे द प्रोसेस वुड वर्क अल्टीमेटली, राइट? सो ऐसे करके वी हेल्प आउट विद द रेफरल्स एंड स्टफ. उसके अलावा इंटरव्यूज के लिए वी कंडक्ट बेसिकली 6-day मास्टर क्लास. ओके, 6 days में हम आपको सीवी बनाना सिखाएंगे, एप्लीकेशन कराएंगे. एप्लीकेशन में अभी आपको बताता हूँ कितने अलग अलग तरीके हैं इन विच यू कैन अप्लाई एंड यू आर नॉट नोइंग एनी ऑफ देम. इंटरव्यूज में हम आपको, इंटरव्यूज के लिए हमने एक गाइड बुक बनाई हुई है. बेसिकली विल बी टीचिंग यू इन एप्लीकेशन ऑल्सो, जस्ट ए थिंग. लिंक्डइन पे यू हैव टू रीच आउट, तो उसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, विल बी टीचिंग यू दैट, हाउ टू ऑटोमेट लिंक्डइन एंड हाउ टू ऑटोमेट योर मेल ऑटोमेशन. ओके, when will all this 6-day masterclass start, sir? It would be starting on 16th, this 16th of December, every day 9 p.m. Their recordings will be provided, but it is preferred कि आप live attend करो. 15th को हमारा एक session होगा where we will explain you on how to go forward. Who can enroll? Anyone who has completed 15th November से 31st March तक their first year, they can enroll. Is it required, sir? No, it's not required. You can do it on your own also. But if you feel, always I advise one simple thing: if you feel me being along in your journey will even improve your chances by 1%, then you should enroll, because what you're looking at is an offer letter of at least 25,000 monthly stipend, or 50,000, or even 1,25,000. वो हम एप्लीकेशन में भी डिस्कस करते हैं कितनी स्टाइपेंड्स एंड ऑल है. लिंक्डइन पे आप जाके इफ यू वांट टू सी हु एम आई, यू कैन सिंपली गो हियर, यू कैन सी व्यू प्रोफाइल, और यहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल पे एवरी डे यू विल बी फाइंडिंग सम पोस्ट कि किसी ने मुझे टैग किया हुआ है. अवंतिका, Rakesh in Standard Chartered, Tata Motors. You can name the company, and I'm having students there at this moment. So ये जब replacements hire करते हैं, they also consider our students in that. उसके अलावा सर, what interview के लिए we have prepared this thing. If you are part of the group, you will be having CA resource. Where were we? If you go here, you will be having my resources. Here if you go, you will be having industrial training program. Here if you go, here all the resources will be provided to you. कैसे apply करना है, application के कितने templates है, all ways of application, recordings would be given, thank you mail, follow up mail, joining address mail, connection note के templates, cold mailing के लिए एक हमने list बनाई हुई है कि how many people you can reach out to. Like बहुत सारी email IDs हमने provide की हुई है. इन सब email IDs पे probably you can send out messages. कौन सी कंपनी कौन सी लोकेशन के लिए कौन सा स्टाइपेंड दे रही है और कौन उसके लिए हायर. सॉरी, had left the meeting. Allow to share screen. सबके मजे वाले रिएक्शन चल रहे हैं. It was disconnected just now, right? Okay. Screen is visible now. कंट्रोल W की जगह कंट्रोल Q दब दिया था और सब बंद हो गया एक साथ. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. माई स्टूडेंट क्लब, यहाँ पे जाके आपको सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे, बेसिकली ऑल विच इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अल्टीमेटली. और
या ऑब्वियसली इट वुड हेल्प। चूजिंग डोमेन के लिए एक डोमेन वाइज शीट हमने बना दी है। दिस शीट वुड हेल्प यू विथ कौन सी कंपनी म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी रिसर्च में है, हेज फंड में है, एम&ए में है, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी में है एंड ऑल। क्रैकिंग इंटरव्यूज के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड अ गाइड वेयर इन यू कैन सी कोई भी कंपनी में आपका इंटरव्यू है, लेट्स से फ्लिपकार्ट में मेरा इंटरव्यू है, तो फ्लिपकार्ट में प्रीवियसली इंडस्ट्रियल ट्रेनीज को क्या क्वेश्चन पूछे थे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ पीएनएल स्टेटमेंट, कैंडिडेट्स वर आस्क्ड टू क्रिएट अ सैंपल पीएनएल स्टेटमेंट फॉर फ्लिपकार्ट, व्हाट आर सम रेवेन्यू एंड आइटम्स, 2 पेज फ्लिपकार्ट के ऊपर। लेट्स से एचडीएफसी में मेरा इंटरव्यू है, तो एचडीएफसी में आई सर्च, तो यहाँ पे एचडीएफसी के क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, यू कैन प्रोबेबली रेफर दैट, राइट। तो दिस वे इट वुड बी वर्किंग। एक ही पेज है एचडीएफसी का, ठीक है, बट स्टिल यू गेट अ बेसिक आइडिया ऑन व्हाट द इंटरव्यू पार्ट वुड बी। और अगर इफ यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टी, ए मॉक इंटरव्यू आल्सो वुड बी कंडक्टेड। उसके अलावा एक सिलेबस क्या क्या पढ़ सकते हो वो भी हमने दिया हुआ है। एंड अल्टीमेटली गाइस देखो, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज में भी आपको चीजें है, ठीक है। इफ यू आर फीलिंग कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आई कंप्लीटली रेस्पेक्ट योर चॉइस एंड यू कैन जस्ट गो हियर। यहाँ पे भी एक इंटरव्यू सिलेबस हमने दिया हुआ है, दिस इज जस्ट अ बिट फ्री वाला है, आप समझ जाओ, ठीक है। तो एफआर है, कंपनीज एक्ट है, मिसलिनियस, जीएसटी यहाँ पे भी दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे थोड़ा एडिशनल चीजें दी हुई है हमने, ठीक है। और डे 6 में हमने एक्सेल टेस्ट, मोटिवेशन, हाउ टू डू एंड ऑल वी हैव कवर। सो कैसे 15 नवंबर से 31 मार्च विल इट हेल्प सर? ऑब्वियसली इट वुड हेल्प, इट वुड सिग्निफिकेंटली improve योर चांसेस, मैं तो यही बोलूंगा अभी। और इट हैज हेल्प, यस इट हैज हेल्प थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, आई कैन से 90% और 95% ऑफ माई स्टूडेंट्स गेट देयर अपॉर्चुनिटी अल्टीमेटली, राइट। सो और बाकी को भी मिल जाती है। इफ यू से आज अगर आप एनरोल करो, आज के आज भी मैं आपको ऑफर लेटर दे सकता हूँ, पर ऐसी छोटी मोटी कंपनी में जाने का मतलब नहीं है। देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक रत्नफेन, कार्लजीज, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आपको मिल जाएगा ऑफर लेटर, मैं अभी के अभी दिखा दूं। पर ऐसा ऑफर लेटर हमें चाहिए नहीं, हमें अच्छा ऑफर लेटर चाहिए, राइट। सो आई हैव कनेक्शंस एंड दैट ओनली वी यूज हियर। सो मल्टीपल राइट नाउ आई एम हैविंग लाइक 15 वैकेंसीज जो अभी ग्रुप में हमने पोस्ट की हुई है। इफ समवन इज पार्ट ऑफ द बैच दे कैन जस्ट सी दैट, राइट। तो वो आप देख सकते हो। बाकी ठीक है, जस्ट फॉलो द प्रोसेस गाइज। इसके बिना भी अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स डाल रहे हो, 100% एफर्ट्स डाल रहे हो, तो आपको इंडस्ट्रियल तो मिल जाएगी। अल्टीमेटली यू शुड नॉट गेट एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट नहीं होना है, और एफर्ट्स पूरे डालने पड़ेंगे, ओके। इवन आफ्टर दिस बैच I will need 100% efforts from your side. See, this is full time for me. I am just doing this industrial training wala thing and guiding CA students, freshers, articles and all. So my job is to get you placed ultimately, right? So 100% efforts डालने पड़ेंगे आपको, और मेरे साइड से भी 100% efforts रहेंगे, but you will have to be consistent and patience, राइट। कंसिस्टेंस प्लस पेशेंस इज रियली इंपॉर्टेंट, दोनों आपको रखना पड़ेगा, तभी आपकी प्लेसमेंट हो पाएगी, ठीक है सर। और कब तक एनरोल कर सकते हैं सर? 15। देखो जितना जल्दी करोगे, बिकॉज इफ यू आर एन इमीडिएट ज्वाइनर दैट इज बेटर इफ यू एनरोल नाउ, बिकॉज कल तक तो सबका सिलेबस रिव्यू सब कुछ हो गया होगा। 14 को मैंने सबको टारगेट दिया हुआ है कि बाई 14 इफ यू आर by 31st, if you're completing your articleship, then probably by 14th itself, you should complete the recorded lectures, prepare a CV, send for my review, and start applying and get an offer letter by 31st of December, right? Because जैसे फर्स्ट में कहा कि टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी जल्दी करना है, राइट। सो कंसिस्टेंट प्लस पेशेंस रखना पड़ेगा, और एफर्ट्स डालते रहोगे तो मिल जाएगा। एंड जितना जल्दी करोगे एनरोल दैट इज बेटर। एंड इफ यू आर समवन हु इज थिंकिंग कि बाद में है तुम्हारी एलिजिबिलिटी, 31 मार्च तक है, तो कल या परसों तक कर लेना। परसों अराउंड 6 o'clock तक कर लेना, बिकॉज रात को 9 बजे परसों हमारा सेशन होगा टू ऑल दोज हु आर एनरोल्ड ऑन व्हाट यू हैव टू डू इन द कमिंग पार्ट, इन द कमिंग डेज, राइट। ठीक है सर। वेयर वर वी वर ऑन द एप्लीकेशन वाला पार्ट, हाउ टू एनरोल। वन लास्ट थिंग, mystudentclub.com पे जा सकते हो, या सिंपली सर्च सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आपको वैसे भी मिल जाएगा। यहाँ पे सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। 15 November to 31st March, please look at this. If you want a review, you can reach out to any of these students. And मतलब I'm really blessed कि I have students like these who are at the top organizations, right? इसमें से काफी लोग आपको आज ही दिखेंगे, विराली आज आने वाली है, ओके okay. ठीक है सर। वेयर वर वी वर ऑन द एप्लीकेशन पार्ट, दिख रही है ना स्क्रीन इनको?
हाँ देखो 6 दिन की मास्टर क्लास नहीं है, इट इज अ मास्टर क्लास टिल योर प्लेसमेंट अल्टीमेटली। कुछ भी आपको डाउट रहेगा यू कैन व्हाट्सअप मी, और मैं व्हाट्सअप पे आपकी क्वेरीज की रिस्पॉन्ड कर दूंगा, एंड समथिंग अर्जेंट है तो ऑब्वियसली कॉल भी कर सकते हो। एंड इवन विदाउट दिस ऑल्सो यू कैन मैसेज मी, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड बैक, बट ऑब्वियसली आई विल प्रायोरिटाइज दी स्टूडेंट्स फर्स्ट। You can fake your CV, that's also completely normal. One-to-one mentorship you can consider. My articleship ends on 31st March. Yes, you can enroll. Okay, perfect. Chalo. Where were we? Application. CV एक अच्छा सा बन गया सर, एप्लीकेशन कैसे करना है? अल्टीमेटली देखो सबसे बड़ा एप्लीकेशन आपका रहेगा लिंक्डइन। ओके, लिंक्डइन पे एक अच्छी प्रोफाइल आपको बनानी पड़ेगी। यू विल हैव टू गो हियर, यू विल हैव टू गो टू linkedin.com, you will have to create a good profile, take a premium in the session I will share that 2 दिन में कुछ ऐसा आने वाला है जो 3 महीने शायद लिंक्डइन प्रीमियम फ्री है, आई एम नॉट श्योर, बट यस, तो 3 महीने आप लिंक्डइन प्रीमियम भी ले सकते हो ऐसे फॉर फ्री। यू कैन जस्ट गो हियर, यू कैन सी प्रीमियम, और वहां से आप प्रीमियम का फ्री ट्रायल ले लेना। देन बिफोर इवन डूइंग दिस, फिगर आउट द कंपनीज वेयर यू वांट टू बी इन। कैसे फिगर आउट करें सर? इफ यू आर हैविंग दिस फ्री वाला ही थिंग, आई एम नॉट सेइंग पेड वाला, पेड हो तो ज्यादा कंटेंट है उसमें, बट सॉरी माई कोर्सेस नहीं, फ्री वाले में अगर आप जाओगे रिसोर्सेस में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हायरिंग कंपनीज लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप जाके सिर्फ मुंबई अगर फिल्टर करोगे तो मुंबई की सारी कंपनीज आ जाएगी, चेन्नई फिल्टर करोगे चेन्नई की सारी कंपनीज आ जाएगी। ठीक है, तो फिल्टर आउट कि कौन सी कंपनीज में आई वांट टू सी माई सेल्फ। आई हैव ए लोकेशन कंस्ट्रेंट प्रोबेबली, इट कैन बी आइदर लोकेशन और डोमेन। या तो आपका लोकेशन कंस्ट्रेंट हो सकता है या डोमेन कंस्ट्रेंट हो सकता है। आई विल प्रेफर डोमेन कंस्ट्रेंट हो तो इट इज बेटर। लोकेशन कंस्ट्रेंट मतलब कि सर मैं सिर्फ मुंबई में करना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे अभी विराली आएगी, शी वाज सिलेक्टेड बाय डी शॉ, और उसको डी शॉ नहीं जाना था क्योंकि डी शॉ गुड़गांव या हैदराबाद में। डी शॉ पे से 1.25 लाख वाला स्टाइपेंड, एंड मुंबई से ही करना था इसके लिए। तो ऐसे भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं लोगों के, तो मुंबई से अगर आपको करना है तो सिंपली मुंबई यहाँ पे फिल्टर करो, और जितनी भी कंपनीज आ रही है मुंबई की, वहां पे स्टार्ट मेकिंग कनेक्शंस। हाउ टू मेक कनेक्शंस? लेट्स से मुझे मॉन्डेलेस जाना है। ओके, लेट्स से आई वांट टू गो टू मॉन्डेलेस। मॉन्डेलेस इज बेसिकली कैडबरी। मॉन्डेलेस इंटरनेशनल है। यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे पीपल सेक्शन में जाऊंगा मैं। पीपल सेक्शन में आई जस्ट ऐड ए फिल्टर ऑफ स्कूल, आई वांट टू कनेक्ट विद ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर देयर, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। 121 लोग हैं जो वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, राइट? सो दिस वे आई कैन कनेक्ट विद ऑल दीज पीपल हु आर सीएस, एंड आई कैन आस्क देम फॉर अ रेफरल दैट आई वांट टू डू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन मॉन्डेलेस, कैन यू प्लीज रेफर मी, राइट? सबसे पहले आपने कंपनीज फिल्टर आउट कर दी, उसके बाद आप जाओ mystudentclub.com पे, फ्री हमारा पोर्टल, यहाँ पे सारी वैकेंसीज आपको मिल जाएगी, कौन कौन सी वैकेंसीज आई है, कौन कौन सी लोकेशन के लिए, कौन कौन सा स्टाइपेंड, कौन कौन सा डोमेन। यहाँ पे आप जाके नोटिफिकेशन एनेबल कर दो। लेट्स से आई जस्ट वांट टू गो फॉर मुंबई, मुंबई में मुझे सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चाहिए, तो मुंबई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की कोई भी वैकेंसी आएगी आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा फ्री, राइट? तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ मुंबई के लिए एक वैकेंसी आई है, आप वहां पे अप्लाई कर देना। हाउ टू अप्लाई सर? यू हैव टू अप्लाई by first by simply going here, by going to this website, और लेट्स से कोई भी एक जगह अगर हम जाए, जैसे ये HR@Logibricks है, यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद आप Logibricks के लोगों को रीच आउट कर सकते हो। हाउ टू रीच आउट सर? लेट्स से आई विल राइट हियर CA finalist, best people to reach out is industrial trainees. How you search industrial trainees? I will write CA finalist, I will go to people वाला सेक्शन, करंट कंपनी में जाऊंगा, करंट कंपनी में Logibricks लिख लूंगा यहाँ पे, ये वाला Logibricks ही है, हाँ। तो सनिका इज देयर एंड केशव आर देयर, हु आर इंडस्ट्रियल ट्रेनीज, एंड बोथ ऑफ देम आर माय फर्स्ट कनेक्शंस, बोथ आर फर्स्ट कनेक्शंस जिसको मैं डायरेक्टली मैसेज कर सकता हूँ। अब सनिका को मैं बोलूंगा कि हे आई एम लुकिंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, कैन यू प्लीज रेफर मी। जैसे ये सनिका है, सनिका को मैं बोल दूंगा कि आई एम लुकिंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, कैन यू प्लीज रेफर मी। और ये केशव, केशव को भी बोल दूंगा, हाय केशव, आई एम पदम भंसाली, आई एम लुकिंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड आई एम अवेलेबल फॉर इमीडिएट जॉइनिंग, रेफरल फ्रॉम योर एंड वुड ट्रूली शेप अप माय फ्यूचर, अटैच्ड इज माय सीवी फॉर योर रेफरेंस। मैं ऐसे लोगों को मैसेज भेजता रहता हूँ, हाय होप यू आर डूइंग वेल, जस्ट वांट टू चेक इफ योर कंपनी इज हायरिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ताकि आप लोगों को रेफर कर सकूं वहां पे अल्टीमेटली, राइट? यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट इन्फो में जाके उसकी ईमेल आईडी भी रख सकते हो, उसकी ईमेल आईडी पे भी आप मैसेज कर सकते हो। इफ इज योर फर्स्ट कनेक्शन, यू कैन मैसेज, यू कैन फॉलो अप,
ओके, फॉलो अप करते रहना, दैट वुड बी रियली इंपॉर्टेंट, दैट वुड बी रियली गेम चेंजर। इफ यू गो डाउन यू विल बी फाइंडिंग एक ग्रुप्स वाला ऑप्शन। अगर आप दोनों कॉमन ग्रुप में हो ना, तो आपका कनेक्शन नहीं भी हो तो आप उसको मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा क्या करना है सर, एक माई स्टूडेंट क्लब आपको ट्रैक करना है। उसके अलावा आपको लिंक्डइन पे पोस्ट देखनी है, ठीक है। आप जैसे जैसे लाइक करने लगोगे ना पोस्ट, तो यू विल बी फाइंडिंग इट। लेट्स से क्या लिखा होगा एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हायरिंग पोस्ट पे, इट वुड बी सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड हायरिंग। ये एंड क्या होता है सर, इट्स लाइक और क्या क्या साथ में लिखा होगा, सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी लिखा होगा और हायरिंग भी लिखा होगा, राइट। और लिखा होता तो ओ आर और लिखा होता तो इट वुड बी सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लिखा हो या फिर और हायरिंग लिखा हो। दोनों में से कोई भी पोस्ट अगर हो तो शो मी दैट। सर्च, तो जुपी इज हायरिंग ए सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वी आर हायरिंग, ही इज सर्चिंग जेरा ओला के अंदर, और ये कास्ट 24 के लिए डाल रहा है इररिलेवेंट। आदर्श नगर ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल में वैकेंसी आई हुई है। संतोष कुमार यादव आदित्य बिरला ग्रुप, वहां पे एक वैकेंसी आई हुई है आदित्य बिरला में, तो इसको आप रीच आउट कर सकते हो। सिप्ला में आई हुई है, स्लाइस में आई हुई है, ऑल दीज कंपनीज जहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वैकेंसी आई है। अब जैसे स्पर्श अग्रवाल है, इसने वैकेंसी डाली है, ठीक है। और कौन रीच आउट, किसको रीच आउट करना है, स्पर्श अग्रवाल। तो इसको मैसेज करो ना कि हे कैन यू प्लीज रेफर माई सीवी, ये भी कनेक्शन ही है मेरा। इसको अगर मैं मैसेज में जाऊंगा, just wanted to check if your company is hiring for industrial trainees, can I share a CV for you। तो ऐसे आप इनको भेज सकते हो मैसेज, और फॉलो अप भी ले सकते हो। कॉन्टैक्ट इन्फो में जाके ऑब्वियसली और भी वे से रीच आउट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप, मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है वहां पे आप स्पर्श अग्रवाल लिखोगे तो आपको वहां पे उसका कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा मोस्टली। अच्छा, जैसे ये स्पर्श अग्रवाल है, तो स्पर्श अग्रवाल का मुझे कॉन्टैक्ट भी मिल गया। अरे यार, दिखाना नहीं था तुम लोगों को, सॉरी। हाँ, मतलब वो नंबर दिख गया था ना, तो दैट इज नॉट, तुम लोग बॉम्बार्ड कर दोगे। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी उसकी ईमेल आईडी मेंशन है। देयर आर मल्टीपल डिफरेंट वेज, आई विल शो यू वन मोर वे। एज, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है, कॉन्टैक्ट आउट। यहाँ से मुझे इसकी पर्सनल ईमेल आईडी मिल गई और ये वाली ईमेल आईडी मिल गई। लेट्स सी इफ इट्स करेक्ट। इट्स करेक्ट, राइट। उसका फोन नंबर ढूंढना है, आई डोंट थिंक इतना तो दे नहीं पा रहा है, काफी केस में दे देता है वो। ठीक है, एक ट्रैकर बना के रखो, जिस भी कंपनी में जाना है या जिस भी लोकेशन में जाना है उनके इंडस्ट्रियल ट्रेनीज को रीच आउट करके रखो। कैसे करना है सर, सिंपली सीए फाइनलिस्ट सर्च करो आप अपने सर्च बार पे, क्लिक ऑन पीपल, विथ मी ना, परफेक्ट। हाँ, सीए फाइनलिस्ट पीपल सर्च करो, विच एवर लोकेशन यू आर टारगेटिंग, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली मैंने लिख दिया। इंडस्ट्रियल ट्रेनी लिख लो यहाँ पे सीए फाइनलिस्ट की जगह। व्हेन यू आर सर्चिंग इन ए पर्टिकुलर कंपनी तो आप सीए फाइनलिस्ट लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनी लिख लो। अब यहाँ पे आपको दिल्ली के कोई भी कंपनी, हनीवेल है, एचडीएफसी बैंक है, वहां के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिल जाएंगे, उनको कनेक्ट करके रखो। बट इफ एनी अपॉर्चुनिटी कम्स प्लीज लेट मी नो। जैसे वेदांग, वेदांग का क्या था, ही जॉइंड इन फ्लिपकार्ट अभी अभी, जिसका सिद्धार्थ का मैसेज था ना। हम्म, अब ज्वाइन करने के बाद भी आप लोगों को बहुत आएगी। हाय वेदांत, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस इज इंडियन वास्ट एंड लर्निंग, सामने वाले ने इसको मैसेज भेजा था चिराग कवर में। हाय वेदांत, व्हेन यू आर एलिजिबल टू जॉइन एज इंडस्ट्रियल। फर्स्ट वेदांग रीच्ड आउट टू चिराग जस्ट एज अ कनेक्शन आई एम सेइंग, और उसके बाद उसने पूछा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वैकेंसी है एंड व्हाट वर योर एक्सपीरियंस। उसने कहा कि लर्निंग वाज गुड एंड इट वाज रियली गुड, बेसिकली आई लेट यू नो अबाउट अपकमिंग और वैकेंसीज। फिर वेदांग ने बोला थैंक्स अ लॉट। फिर आज उसका मैसेज आया कि हाय वेदांत, व्हेन यू आर एलिजिबल टू जॉइन एंड इंडस्ट्रियल, एक्चुअली आई गॉट इनटू फ्लिपकार्ट, डू यू वांट सम इमीडिएट जॉइनर्स, आई कैन सेंड सम रेज्यूम्स। तो वो जो ना अभी हायर कर रहा है, वन समवन इज हायरिंग, इफ आई पोस्ट अ वैकेंसी इन फ्लिपकार्ट अभी, तो आई विल बी गेटिंग अराउंड 1000 एप्लीकेशंस, और काफी कंपनीज में 1500 1800 एप्लीकेशन भी आती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। एंड हायरिंग्स कितनी होगी, दो, एक, तीन, राइट। जैसे एस टी एल है अभी, ये एस टी एल इज हायरिंग, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज ऑफ एस टी एल, तो एस टी एल में 3 वैकेंसी है अभी, ठीक है। दो मुंबई में, एक पुणे में। 1800 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 3 जनों को हायर करना है। हु विल गेट सिलेक्टेड, हु इज मेकिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ एफर्ट्स। ही रीच्ड आउट इन पर्सन, ही हैज एलिमिनेटेड ऑल द कंपटीशन, he is one in that 1800 people who knows the vacancy directly, he is the first to know, इसका ही इंटरव्यू होगा और ये सिलेक्ट हो जाएगा अल्टीमेटली, राइट। सो ऐसा होता है बेसिकली, यू हैव टू कनेक्ट विद द राइट पीपल। कोई भी कंपनी में इफ यू आर अप्लाइंग, जस्ट कनेक्ट विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल एंड
try getting a referral for that company, be it any company. Okay, HDFC Bank, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, मॉरिस गैरेजेस, HSBC, अप्रावा एनर्जी, IOCL, ये सारी जो कंपनीज है ये दिल्ली बेस्ड ही कंपनीज है सर। यहाँ पे ना थोड़े होटल वाले दिख रहे हैं, थोड़े सीए में दिख रहे हैं। यहाँ पे जाओ, ऑल फिल्टर्स में जाके स्कूल में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डाल दो, द इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट दोनों, ठीक है, अब सारे सीए ही दिखेंगे आपको। ठीक है, यहाँ से आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा कौन सी कंपनीज दिल्ली में हायर करती है। जिस कंपनी में जाना है वहां पे कनेक्शंस बना के रखो, दैट वुड सिग्निफिकेंटली हेल्प यू। ठीक है, और मोर इंपॉर्टेंट इज फॉलो अप लेते रहना उन लोगों से ताकि आपका हो जाए। इफ आई टेल माई स्टोरी, व्हेन आई वाज इन फ्लिपकार्ट से पहले व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो आई वाज कंफ्यूज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं। तो आई गॉट सिलेक्टेड इनटू बार्कलेस नोएडा में, एंड आई वाज लाइक ठीक है ज्वाइन कर लेंगे, 6 महीने एग्जाम लीव दे रहे, बैक देन एग्जाम लीव्स लिमिटेड होती थी, राइट। सो 6 महीने एग्जाम लीव दे रहे, वहां पे ज्वाइन कर लेंगे। बट 2 days बैक जब फ्लाइट टिकट्स एंड एवरीथिंग वाज बुक्ड, तो आई थॉट कि यार सॉक्स कंप्लायंस है, इंटरनल ऑडिट का रोल है, आई डोंट वांट टू गो देयर, एंड अल्टीमेटली आई डिड नॉट गो फाइनली। एंड उसके बाद फिर वापस हंट शुरू करनी है, ऑल दी ऑफर्स व्हिच आई हैड गॉट उसको रिजेक्ट कर दिए थे। तो फिर आई स्टार्टेड थिंकिंग कि कहाँ पे जा सकता है, आई वांट टू डू सम काइंड ऑफ स्टार्टअप, एंड आई थॉट कि फ्लिपकार्ट जा सकते हैं बैंगलोर में। व्हाट आई डिड, आई सर्च इंडस्ट्रियल ट्रेनी, या उस टाइम तो सीए फाइनलिस्ट आप समझ लो, ठीक है, दिल्ली वाला फिल्टर हटा देते एक बार। स्कूल में हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फिल्टर डाला हुआ है, और करंट कंपनी में मैंने फ्लिपकार्ट का फिल्टर डाल दिया। ठीक है, ये सारे जो लोग हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनी है फ्लिपकार्ट में, ऋषिका, शगुन, खुशी, विशाखा, सुहासनी, अच्छा थोड़े सेमी क्वालिफाइड लोग भी आ जाएंगे, पर मेजॉरिटी पीपल यू विल बी फाइंडिंग आर इंडस्ट्रियल ट्रेनीज। वैष्णवी, अनंत त्रिपाठी, एंड ऑल दीज पीपल आर बेसिकली इंडस्ट्रियल ट्रेनीज एट फ्लिपकार्ट, श्वेता, श्रेयांश, वरुण एंड एवरीवन, राइट। तो इन लोगों को आप कनेक्ट करके रख सकते हो। आई कनेक्टेड विद 40 पीपल बैक देन, सीए एंड सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनीज, और नेक्स्ट डे आई हैड 3 इंटरव्यू कॉल्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट, 2 में सिलेक्ट हो गया, एक में ज्वाइन कर लिया अल्टीमेटली, राइट। तो अच्छा था फ्लिपकार्ट का एक्सपीरियंस, इट चेंज्ड एंटायर थिंग। आई विल शो यू मोर, किसका दिखाऊं आपको, हर कंपनी का अपना बेनिफिट है। अब जैसे अदिति का बताता हूँ आपको को, अच्छा लगता है जब आपको वो ऑफर लेटर आएगा, फर्स्ट सैलरी आएगी ना, यू विल बी फीलिंग कि हाउ गुड इट इज। कहाँ गया वो, हम्म, हाँ, जब इसने वोडाफोन ज्वाइन किया, वोडाफोन इज पुणे, वॉइस इज बेसिकली वोडाफोन अपना, दिस इज हाउ शी वाज वेलकम। आर्टिकलशिप में यू कैन नॉट बी थिंकिंग लाइक दिस, बट इतना प्यारा वेलकम, लाइक थिंक ये मोटिवेशन होनी चाहिए, दिस यू शुड बी मैनिफेस्टिंग एंड यू शुड बी गेटिंग दैट अल्टीमेटली, राइट। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक तरीका है। फ्लिपकार्ट का अगर मैं आपको बताऊं, स्टेटस दिखते हैं यहाँ पे, आई कैन सर्च ऋषिका, राइट। इस ये भी हायर कर रही है अभी, इफ आई सी हर स्टेटस, ये फ्लिपकार्ट ऑफिस है। सो दिस इज ऑल्सो गुड, लर्निंग ऑल्सो वाइज इट्स वेरी गुड। तो अच्छा था बेसिकली, एंड यस यू कैन ट्राई फॉर दैट। बहुत मतलब बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, जस्ट एज आई एम सेइंग जस्ट अप्लाई करो, प्रोसेस फॉलो करो। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, बट यस यू कैन डू दिस। इंटरव्यूज में व्हाट यू हैव टू डू, अप्लाई द राइट वे, कीप फॉलोइंग अप any company where you're applying, try to find out references and apply. Ultimately, send out the CV. First, make a perfect CV. Figure out which companies you want to be in. Apply by making connections in that company or location, and send out the CVs ultimately. लास्ट में आपका आएगा इंटरव्यूज। इंटरव्यूज सबसे इजी टास्क है, ऑनेस्टली इट्स नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट वन। इंटरव्यूज के लिए क्या होता है ना, you know what an interview is going to be like. If the first question, you know, it is going to be tell me about yourself, write a good tell me about yourself, frame it better, okay, like it should be a really good version of yourself, and it should not look like कि मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ, it should be natural ultimately, right? It should be a good tell me about yourself. Ideally it should be around 150 seconds, हाँ मतलब 2 से 2.5 मिनट का tell me yourself is enough. उससे ज्यादा एक्सटेंड करोगे तो बहुत लंबा लगेगा उसका, ठीक है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बाद अपना यू विल बी हैविंग लास्ट क्वेश्चन, दैट इज डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, राइट। सो उस क्वेश्चन में आपको पूछेंगे वो लोग। मेनी टाइम्स आई यूज्ड टू गिव इंटरव्यू ओनली फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको उनको क्वेश्चंस पूछने हैं, ऐसा नहीं है कि स्किप ही कर रहे हो। इधर आप आइडियली फीडबैक मांग सकते हो ऑन हाउ योर इंटरव्यू वाज, काफी बार नेगेटिव भी जा सकता है, हाउ योर एक्सपीरियंस वाज भी पूछ सकते हो। जस्ट डोंट
ऐसा नहीं लगना चाहिए आप कुछ नेगेटिव क्रिएट कर रहे हो वहां पे इमेज अपनी। यू आर नॉट डाउनग्रेडिंग देम कि यार ये क्या काम कर रहे हो आप लोग, ऐसा कुछ क्वेश्चंस नहीं होता है, राइट। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, फिर वो रिजेक्ट कर देंगे आपको। उसके बाद सारे क्वेश्चंस होंगे आपके रेज्यूम और वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड। एवरी क्वेश्चन वॉट एवर यू हैव मेंशन ऑन योर रेज्यूम, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इफ आई शो यू द प्रीव्यू, अगर आपने यहाँ पे लिखा है कि आई हैव साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यार क्या लिखा है इसने, छोड़ो इसको। यहाँ पे assisted in statutory audit of a cooperative bank with over 75 branches, 10,000 crores in deposits, identifying critical areas of improvement. तो ये critical areas क्या है? That interview would be asking you that. Statutory audit किए, tax audit किए, GST audit किए for 30 plus clients, healthcare industry, construction sector. तो Flipkart में if you show like this कि मैंने construction sector का audit किया, तो they will be saying top 5 expenses बताओ कोई भी construction company के. Managed end to end, oh shit, we are extended. end-to-end accounting process for न्यूजीलैंड बेस्ड कंपनीज रिजल्टिंग इन हायर एक्यूरेसी। तो ये क्या कर रहे थे तुम लोग? जीएसटी के रिटर्न के ड्यू डेट्स क्या है? जीएसटी रिटर्न एनुअल रिटर्न का कौन सा ड्यू डेट है? व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स, व्हाट इज द मिनिमम लिमिट फॉर जीएसटी, हाउ इनकम टैक्स रिटर्न्स आपने फाइल किए तो उसमें क्या यूज किया है? एटीआईएसी आपको पता है कि नहीं? माई स्टूडेंट क्लब आप क्यों कर रहे हो? वेदर इट वुड इम्पैक्ट योर वर्क? इफ यू आर written if I have certified financial modeling and valuation analyst, then obviously they will be asking कि discounting factor क्या है and everything, right? So ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, 90% ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस ही रहता है। आई कैन से यहाँ पे ही आपका हो जाएगा मेजरली, मेजोरिटी ऑफ योर इंटरव्यू इसके अराउंड ही रहेगा। अगर टेक्निकल अगर आपको कुछ पढ़ना है ना, एंड इफ यू आर लाइक कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, डोंट वरी मच। एफआर अगर आपको पढ़ना है 115 पढ़ लो, 116 पढ़ लो, 109 पढ़ लो। क्या है सर ये? 5 स्टेप मॉडल रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, ऑपरेटिंग लीज वर्सेस फाइनेंशियल लीज 116 में, 109 में फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की क्लासिफिकेशन। एएफएम में क्या पढ़े सर? एएफएम में रेशियोज पढ़ लो आप लोग, एनपीवी पढ़ लो, आईआरआर पढ़ लो, ठीक है सर। और क्या पढ़ सकता है? कॉस्टिंग आजकल थोड़ा पूछने लगे हैं, वहां पे वेरिएंस पढ़ सकते हो आप, ठीक है। ऑडिट में आप अगर आपका इंटरनल ऑडिट इन सब डोमेन में इंटरव्यू जा रहा है तो P2P R2R प्रोसेस पढ़ लेना, ठीक है। आरसीएम क्या होता है वो पढ़ लेना। कारो भी पढ़ सकते हो आप, 2020 वर्सेस 2016। बैंक में जा रहा है तो बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्सेस रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे फर्क होता है वो देख सकते हो। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, राइट, बिकॉज बैंक्स आर मेजर हायरर्स एंड यस यू कैन गो देयर आल्सो, ठीक है। आरबीआई का गवर्नर, मॉनेटरी पॉलिसी, काफी कुछ है वैसे पढ़ने के लिए, बट यस यू कैन रीड इट लाइक दिस। और ठीक है गाइस, यार इतना डिफिकल्ट नहीं है। इफ यू डू एवरीथिंग परफेक्टली यू कैन लैंड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अल्टीमेटली अगेन आई एम सेइंग ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड, 100% आपके एफर्ट्स लगने चाहिए। आई अंडरस्टैंड आपको वर्क प्रेशर है आर्टिकलशिप में, आई अंडरस्टैंड यू आर नॉट एबल टू गिव टाइम आफ्टर स्टडीज एंड आर्टिकलशिप, बट प्रायोरिटाइज योर करियर because this would matter a lot in future. If you're getting a good opportunity, it would obviously help you out, right? So if possible, just focus a bit on this. Every day half an hour is also enough. I'll be teaching you some tricks in the classes wherein how to automate that LinkedIn। अब मैंने जैसे आपको बोला, यहाँ पे मैं आपको बोल रहा था कि लोगों को रीच आउट करो, इसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। एवरी वंस यू हैव टू सेटअप, और हर दिन अपने आप मैसेज जाते रह रहे हैं लोगों से, तो आपको बस लास्ट में देखना पड़ेगा। व्हेन यू टर्न एलिजिबल इन लास्ट, यू कैन मैसेज ऑल दीस पीपल दैट हे आई एम सो एंड सो, आई एम लुकिंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अवेलेबल फॉर इमीडिएट जॉइनिंग, रेफरल फ्रॉम योर एंड वुड ट्रूली शेप अप माय फ्यूचर, अटैच दिस माय सीवी फॉर योर रेफरेंस, राइट। सीवी के साथ कवर लेटर अटैच करोगे, ऑब्वियसली 2 अटैचमेंट्स होगी तो इट वुड बी बेटर। ओके, आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। Communication, if it's not good, you have to give as many interviews as possible. अरे हर्षा, 1 lakh stipend is not annual, 1 lakh stipend is monthly। डीशो और बीसीजी वहां पे मिलती है 1 लाख, आइडियली इतनी नहीं होती। एवरेज स्टाइपेंड फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनी इज 25,000, बट मेनी एंड एवरी कंपनी हैज इट्स ओन क्राइटेरिया। एक्चुअली डीशो में अगर आपको जाना है, रैंक इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज लाइक बिग सिक्स होनी चाहिए और कम पॉसिबिलिटी, एवरीवन वांट्स टू गो इनटू डीशो, राइट। सो ठीक है, उस हिसाब से कर सकते हो। इफ यू वांट अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ स्टाइपेंड्स, आई कैन से हाईएस्ट इज बीसीजी, देन यू हैव डीशो, देन यू हैव सिटी बैंक आल्सो, Amazon is there at 70, right? You have Misho, Navi offers 60,000 of stipend, UBS offers 60,000 of stipend, Goldman Sachs is there, Morgan Stanley is there, which offers 50,000 of stipend, HSBC is there 40,000, Flipkart is there 40,000, uh, Zepto offers 30 probably, and बीच में भी 35 बहुत सारे हैं। सो काफी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज है सिटी में यार। 2 काइंड ऑफ रोल है, इफ यू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यू विल बी गेटिंग 75 और नहीं तो 70।
सॉरी 50। और ग्रेजुएशन वाले पे आपको सी HSBC में ग्रेजुएशन है, वर्क एक्सपीरियंस जितना अच्छा होगा दैट इज बेटर। डॉर्शे बैंक ऑफर्स 50, बार्कलेस ऑफर्स 40, डिफरेंट पीडीएफ थंगशी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन वाला देखना है तो माई स्टूडेंट क्लब पे चले जाना, वहां पे बैनर है, वहां से आप देख सकते हो। ग्रेजुएशन अगर परस्यू नहीं किए इट्स कंप्लीटली फाइन, मेजोरिटी कंपनीज डोंट हैव ए ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया एंड स्टिल पीपल गेट एन अपॉर्चुनिटी। और जस्ट अ सेकेंड, अच्छा आ गया था शुभम, ओके। CFA L1 will obviously give an edge, Anshuman, because any extra degree will just make you one degree hotter, right? If you're from niche domain, that is also good. हर चीज का अपना बेनिफिट है, इट्स जस्ट लाइक हाउ यू आर फ्रेमिंग। इफ यू आर फ्रॉम नीश डोमेन यू वर वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ कि मुझे ये करना है, राइट? सो दैट इज वेरी गुड। ऑफर मिला कि नहीं मिला, आप नोटिस तो दे ही दो, बिकॉज मिल जाएगी। नेक्स्ट बैच विल बी आफ्टर 2.5 months, फरवरी मिड में अनाउंस होगी बैच एंड फेब एंड तक खत्म होगी। तो पॉसिबली if you're from March 31st and before completing your 1 year, you should enroll in this batch. If it is after, you can wait for the next batch. WhatsApp ग्रुप, अगर आपने एनरोल किया उसके बाद WhatsApp ग्रुप लिंक आपको कल तक मिल जाएगा। और देखो, अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अभी शुभम हमारे साथ है, आई विल इंट्रोड्यूस हिम। उसके साथ यस यू कैन जॉइन फ्रॉम स्मॉल फर्म स्टूडेंट्स। शुभम, इफ यू आर देयर, कैन यू अनम्यूट वंस? शुभम, शुभम सिन्हा। हाय पदम। हाय शुभम, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आप कौन से बिग 4 से थे, बिग 6 से थे शुभम, बताओ? नो। हाय। अभी देखो, या इसने इतना परफेक्ट जगह चुना है ना, मतलब I am jealous of Shubham at this moment. If you can see Shubham on the screen, I'll just pin him for everyone. वेट वेट आपको या पीछे आराम से फ्लिपकार्ट की ऑफिस दिख रही होगी, राइट? दैट इज लाइक द ड्रीम फॉर एवरीवन हियर। सो ग्रेट यार। शुभम, मतलब इफ आई वांट टू इंट्रोड्यूस हिम, ही इज द मोस्ट डिटर्मिनेंट पर्सन, मोस्ट लाइक, इसके जितना पेशेंस तो नहीं है और इसके जितना, मतलब ही हैज गिवन इट ऑल। अब इसकी जर्नी ऐसे शुरू हुई थी, ही एनरोल फॉर द बैच, और उसके बाद उसने नवी में इंटरव्यू दिया था। नवी के लिए, इफ यू ऑल नो, नवी फिजिकली इंटरव्यूज के लिए बुलाती है व्हेन इट्स द फाइनल राउंड। और शुभम वेंट ऑन टू नवी, he went for the final round and gave, and अगर कोई फिजिकली बुला रहा है इट्स मोर लाइक कि सिलेक्ट करने ही वाला है। और इंटरव्यू भी अच्छा गया था, तो पॉसिबली द थॉट वाज कि ही विल गेट सिलेक्टेड, बट देन इट वेंट अदरवाइज। एंड एकदम से, मतलब इसने भी अपना हंट रोक लिया था, एंड आई वाज आल्सो क्वाइट श्योर, ही वाज आल्सो क्वाइट श्योर कि नवी तो हो ही गया है। तो फिर सब एंड से हंट हमने रोक चुके थे, पर लास्ट में उसको नवी से रिजेक्शन आ गया फॉर सम रीजन। लेट्स लीव दैट फॉर समथिंग बेटर, दैट वाज फ्लिपकार्ट। और फिर इसने वापस शुरू किया अप्लाई करना, और एट द मोमेंट इवन आई गेव अप होप कि कैसे करेंगे अब, क्योंकि इतना लेट हो गया, इतना टाइम गैप आ गया। बट दिस पर्सन वाज लाइक, नहीं मैं तो करके ही रहूंगा और फ्लिपकार्ट ही करूंगा। इसके अलावा भी इसको ऑफर्स आए हुए थे, पर नहीं, मुझे फ्लिपकार्ट ही करना है। और इसने क्रैक भी कर लिया फ्लिपकार्ट। सो ऑब्वियसली शुभम, ग्रेट यार, तूने कर लिया। और अभी मुझे थोड़ा ऐसा जलन सी हो रही है कि मैं नहीं हूँ उधर। अरे, आपका यहाँ पे चर्चा चलते रहता है। हाँ, अभी एक और मैं इनको दिखा देता हूँ। द बेस्ट फीलिंग गाइस जो होती है ना, शुभम जैसा अभी बता रहे हैं। इफ आई शो स्क्रीन इज विजिबल? नो नो। नो नो। या नाउ इज विजिबल आई गेस। यस। मतलब शुभम, तुमसे पहले प्रथम ने ज्वाइन किया था लास्ट टाइम वाला सेशन। प्रथम इज यस। आल्सो फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड माय स्टूडेंट ओनली। और उसने मीटिंग रूम से ज्वाइन किया था। तुम लोग मुझे मतलब जलाने के लिए कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। देखो, ये शुभम है, ये मुस्कान है, दोनों सेम टीम में ज्वाइन हो गए, दोनों मेरे ही स्टूडेंट है, और दोनों इतना मस्त, मतलब इन्होंने फोटो भेजा था, दैट रियली मेड माय डे। हाय शुभम, कैसे हो, बताओ? हाँ, बढ़िया बढ़िया। अभी ये मैंने हाउ इज इट मैं गोइंग एक्चुअली फ्लिपकार्ट? मीटिंग ज्वाइन करने वाला था, बट द थिंग अच्छा। इज अभी फ्लिपकार्ट में पूरा एनुअल मेंटेनेंस चल रहा है एंड आई ओ। वाज थ्रोन आउट ऑफ ऑफिस की नहीं अभी एंट्री नहीं है। So फिर I was like, anything that happens for a reason. And this time it यस। was कि प्रथम को और जलाना है। प्रथम ने एक बार जला रखा। So ग्रेट let यार। me select a place where that is फ्लिपकार्ट visible. दिखे ऐसे, यस Yes, यस yes. यस। ग्रेट यार, हाउ इज इट गोइंग एट फ्लिपकार्ट?
वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू नो व्हाट, स्टार्टअप में ज्वाइन करने के बाद आपका जो कॉलेज लाइफ आप मिस करते हो ना एज अ सीए स्टूडेंट, दैट इज लाइक वो रिकवर हो जाता है। यू एंजॉय टू द फुलेस्ट। अभी मैं इनको एक इंटर्न का स्टेटस दिखा रहा था, दैट फ्लिपकार्ट में कुछ फंक्शन, क्या कॉन्सर्ट टाइप हुआ था ना अभी, या कल आज हुआ या था। कल ही हुआ था, कल ही, कल हाँ। हुआ था। वही वही दिखा रहा था इनको, इट वाज रियली गुड। या ट्रू ट्रू ट्रू। So it बताओ। was actually Flipkart day, and there was concert going on, and dinner ओ and all यस, everything. लास्ट टाइम, लास्ट टाइम। और बताओ कैसी थी तुम्हारी जर्नी, कैसे अप्लाई किया, व्हाट यू वांट टू से टू दिस पीपल, वेदर इट्स पॉसिबल और Everything नॉट। that you have very nicely summarized everything कि कैसा मेरा जर्नी रहा था. So for हम्म। all the guys यहाँ पे जो भी है, the thing is I started 3 months back. जब मुझे ज्वाइन करना था, मुझे अगस्त से ज्वाइन करना था, अगस्त सितंबर से मुझे ज्वाइन करना था. मैंने 3 महीने पहले से स्टार्ट करा था. एंड हम्म। इट वाज लाइक कि सबसे पहले मैंने सीवी बनाया एंड आई स्टार्टेड माय हंट. एंड हम्म। एक बार मुझे एशियन पेंट से मैंने मेरा आ गया था ये चीज विद इन फर्स्ट मंथ ओनली, मुझे एशियन पेंट से ऑफर आ चुके थे. एंड ओके। सेकंड नावी आ गया. नावी गेट इनटू पिक्चर एंड देन फिर द होल स्टोरी स्टॉप. लाइक हम्म। आई वेंट थ्रू टोटल आई गेस 6 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज. हम्म। एंड ईच राउंड ऑफ इंटरव्यू के बाद एक कॉन्फिडेंस आने लगा, नहीं अब तो हो जाएगा, अब तो ये केक वॉक है, अब तो हो जाएगा. हाँ। एंड फिफ्थ राउंड हो गया इंटरव्यू एंड आई वाज लाइक कि चलो, पदम वाज आल्सो वेरी श्योर कि अब हो जाएगा, कुछ नहीं हम्म। रखा है तो बस बचा हुआ है, बस ऑफर लेटर बचा हुआ है. एंड आउट ऑफ हम्म। नोवेयर एक लास्ट इंटरव्यू राउंड एचआर ने बोला कि आर सीएफओ वांट्स टू मीट. अब what happened I don't know, and then फिर that interview happened, and then फिर HR told that sorry, we won't be moving ahead with your candidature. You had to And travel to yeah, Bangalore na for that. yeah. Like हम्म। first round it happened, first 2 rounds it happened here only. हम्म। मतलब it was virtual. Yeah. First 3 rounds happened virtually, and then हम्म। there was two rounds which was scheduled at Navi's office at Bangalore. So हम्म। they called me and I did my interviews. It went pretty well. Even I connected with the interviewers who took my interviews at fourth and fifth round. Even they were हम्म। very sure if we all gave positive reviews. हम्म। And I don't know, there might be something internal thing. So where I couldn't get into now. And I was very disheartened. एंड हम्म। देन फिर पदम को फिर तो मैंने परेशान कर दिया कि पदम अब तो मुझे चाहिए, अब मुझे कहीं से भी आप ला के दो, मैंने हंट बंद रखा है. 1 महीने से मैं बस इंटरव्यूज दे रहा हूँ नावी का, और मैं कहीं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ. हम्म। एंड टू ऑल द गाइज हियर, यार पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो. द थिंग इज हम्म। आप, देयर विल बी टाइम कि आप लिंक्डइन पे मैसेज कर रहे हो लोगों को कि यार प्लीज हम्म। मुझे रेफरल लगा दो, रेफरल लगा दो, पीपल आर नॉट रिप्लाइंग. बस एक हम्म। मौका आएगा एंड देन फिर लाइफ इज गोइंग टू चेंज. Yes. मेरे पास में द डे आई ज्वाइंड फ्लिपकार्ट आई वाज हैविंग 4 offers in my hand. Barclays was there, Flipkart was there, HDFC was there, and one more was there. One startup company was there. The four were हम्म। there, and I got to choose one, and it was Flipkart. तुम्हारा एचडीएफसी का ही था ना, ऑलमोस्ट फाइनल उस HDFC टाइम। का. Yes, yes, yes. True. ठीक है, लाइक शुभम सेड एवरीवन, वन रेस्पॉन्स इज ऑल इट टेक्स दैट वुड कन्वर्ट टू ऑफर लेटर अल्टीमेटली। एक रेस्पॉन्स होगा जो ऑफर लेटर बन जाएगा, विच यू आर वेटिंग फॉर। सो यस, Yeah, एज शुभम करेक्ट है। शुभम एक बार अपनी स्टोरी में, वो वाली स्टोरी तो भूल ही गया कि तुम लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहे थे, रात को हर्ष की पोस्ट आती है, तुम अप्लाई करते हो, वो बता दो। yeah. तो मैं HDFC ज्वाइन करने वाला था. आई वॉज लाइक कि ठीक है, जहां मिल रहा वहां चलते हैं. मैंने HDFC क्योंकि आई वॉज इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कि मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्योंकि नहीं मिल रहा था, तो मैं कॉर्पोरेट बैंकिंग में जाने के लिए मैं रेडी था. एंड सारे कुछ प्लान थे. आउट ऑफ नो वेयर रात के 11-10 बजे के आसपास मैंने एक लिंक्डइन पे पोस्ट देखा, एंड इट वॉज पोस्टेड जस्ट फ्यू मिनट्स अगो. मैंने तुरंत, मेरे पास में प्रीमियम था, मैंने तुरंत मैसेज करा था पर्सन जो भी जिनका था. एंड तुरंत उन्होंने भी सीवी देख लिया मेरा, तुरंत उन्होंने करा एंड आई रिक्वेस्टेड प्लीज कंसिडर. एंड तुरंत में मुझे एक इंटरव्यू कॉल रात के 11 बजे, मेरे एक राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ, स्क्रीनिंग राउंड रात के 11 बजे. ओके। नेक्स्ट कपल ऑफ
फ्यू डेज में मेरे 3 और 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज हुए, एंड देन इट वाज सुपर स्पीड, बहुत ही सुपर स्पीड में हुआ। एंड देन फिर हम्म, आई गॉट सेलेक्टेड। देयर वर आई हो गेस गया। 4 people who was competing with me, and then फिर I was the one who selected. इससे पहले आपने फ्लिपकार्ट में या इंटरव्यू गिवन, हर्ष राइट? वाला जो हाँ। आप बोल रहे हो ना, हर्ष वाला मैंने पहले ही दिया था, वो दूसरे टीम में, वो ई कार्ड वाले टीम में था, बट अच्छा। वहां आई कुडेंट। देन फिर दिस वाज ओके। इनटू कैटेगरी बिस्पेट, एंड यहाँ पे आई। राइट। ग्रेट यार। और पोस्ट फ्लिपकार्ट लाइफ हाउ इज इट? बैंगलोर आने के बाद अभी भी होटल की पॉलिसी तो है ना इधर? यस यस यस, वो रीलोकेशन बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके फ्लाइट के टिकट्स मिलेंगे, एंड 15 days का स्टे रहता है। हाउ इज इट लाइक यू आर स्टेइंग इन अ पीजी? या एंड व्हाट्स द वर्क यू आर डूइंग अभी? राइट नाउ आई एम लुकिंग आफ्टर कैटेगरी। तो लाइक कैटेगरी। जस्ट अ मिनट, जस्ट जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे आप देखते हो कि देर आर, आप कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो, तो फ्लिपकार्ट में चीजों को कैटेगराइज कर दिया गया है कि मोबाइल का एक सेगमेंट है, होम्स एंड फर्नीचर का एक है। उस तरह से मैं बीजीएम टीम में हूँ, एंड यहाँ पे आई एम हैंडलिंग 2 मेजर कैटेगरीज। एंड उसके इनबाउंड से लेकर के वहाँ क्या सेलिंग, क्या सेल्स होने वाले हैं, कितने प्रॉफिट बनाने हैं, पूरे पीएनएल तक मैं देखता हूँ। तो इट इज लाइक कि ओके। हमें कितने स्टॉक चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, हमारा फ्यूचर प्लान क्या रहने वाला है, हमारा प्रॉफिट्स कैसे रहने वाले हैं, वहां से लेके इट इज लाइक मुझे फ्यूचर में ऐसा है कि आई वांट टू स्टार्ट सम बिजनेस ऑफ माय ओन। इट इज एंड गुड। दिस इज वेयर कि आप खुद एक बिजनेसमैन के शूज में हो, कि आप खुद देख रहे हो कि आप यस। कैसे बिजनेस रन कर रहे हो। आपका एक कैटेगरी इज लाइक अ बिजनेस, एंड यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग। अगर कुछ गड्ढा आ रहा है, अगर कुछ भी नेगेटिव जा रहे हैं, नंबर्स क्यों आ रहे हैं, आप उसके डीप डाउन कर रहे हो कि कहाँ वो नंबर फट रही है, आप उस सारी चीजों को देख रहे हो। आप कैटेगरी टीम के पास में जा रहे हो। आप द थिंग इज कि इट इज बिजनेस फाइनेंस, तो आपको बिजनेस का भी नॉलेज मिल रहा है, फाइनेंस का भी नॉलेज मिल रहा है, एंड दिस इज वेरी रेयर, दिस अपॉर्चुनिटी इज वेरी रेयर। ट्रू। दैट्स द बेस्ट रोल एक्चुअली, काफी अच्छा है। या और चर्चित आल्सो वाज फ्रॉम योर टीम, राइट? ही इज इन माई टीम, यस, नाउ ही इज द असिस्टेंट मैनेजर। अच्छा, हाँ, राइट, ही हैज जॉइंड द सेम। या ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बाकी और क्या कहना चाहोगे इनको? हाउ दे शुड बी अप्लाइंग, हाउ दे शुड बी प्रिपेयरिंग, इफ यू वांट टू से समथिंग व्हिच you wish your earlier self had known? ओके, तो Hmm. द थिंग इज दैट the Hmm. best thing which I was having in my hand was my CV. Like आपने लाइक मैंने आपसे ये करा था, रिव्यू करवाया था अपना सीवी। Hmm. पहला वाला तो बहुत ही गंदा था, क्योंकि मैंने आर्टिकलशिप वाला अपना पुराना वाला डाला था, एंड इवन यू Hmm. टोल्ड कि ये क्या सीवी है। एंड देन फिर देयर वाज अ होल लिस्ट ऑफ सैंपल्स दैट यू गेव। आई एम टेलिंग यू, यू ऑल गाइस व्हाटएवर यू ऑल आर वाचिंग हियर, यार एक एक कोई भी सैंपल चूज करना एंड उनपे उस पे अपना एक दिन पूरा लगाना। अपने आपने जो भी काम करे, जो भी स्किल्स आपने एक्वायर करे, एकदम आप Hmm. डीप डाइव करके, बिकॉज आप नहीं जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, पीपल इज जस्ट, recruiters are just going to see a sheet of paper, and that is your sheet, that is your CV. And you Hmm. need to be, you need to prepare, you need to present yourself in that one sheet of paper. True. So Padam's CVs are all experienced or everything. He has uh, made such CVs Mhm. that वो कहीं भी स्टैंड होगा ना, वो बस काउंट हो जाता है कि ठीक है, ये वाला सीवी ठीक है, ये अच्छा लग रहा है देखने में, चलो इसको पढ़ते हैं। इवन आई Hmm. वॉज रिक्रूटिंग जस्ट फ्यू मंथ्स बैक, आई वॉज रिसीविंग हंड्रेड्स ऑफ सीवी। देयर वर Hmm. सो मेनी सीवी जो कि देखते के साथ में हमने पढ़ा भी नहीं। एंड दिस Because इज visually लाइक, it was not good. यस Hmm. यस, Hmm. एंड दिस हैपेंस लाइक अगर हम रेफर के थ्रू अगर हम आगे बढ़ा भी देते हैं, मैनेजर्स आर नॉट गोइंग टू सी दो सीवी। True. तो यहाँ पे Hmm. हमारा एक सीवी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है, कि आप सीवी बहुत अच्छे से, एक होता है ना कि आर्टिस्ट एक क्राफ्ट करते हैं अपने आर्ट को, वैसे आपको Hmm. सीवी अपने क्राफ्ट करना है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। वहां पे लोग Yeah. रहेंगे जो कि एवरीवन इज इंटर पास, जो जो भी है सब इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं। Hmm. तो आपका सीवी कैसे स्टैंड आउट होगा? सबसे पहला चीज, आपका सीवी बहुत प्रेजेंटेबल होना चाहिए। Hmm. सेकंड होता है आपका स्किल्स। नाउ राइट नाउ मैं देख रहा हूँ पीपल पहले बोलते थे कि आपको एक्सेल स्किल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। राइट नाउ
द लाइफ इज मूविंग एहेड। अब एक्सेल के साथ में एट फ्लिपकार्ट आई विल से कि हम गूगल शीट पे भी वर्क कर रहे हैं, पावर बीआई पे भी वर्क कर रहे हैं। सो इफ यू आर Yeah. हैविंग दो स्किल्स रिटन इन द सीवी, देन फिर वो एड ऑन देगा, पक्का देगा। बिकॉज Hmm. नोबडी वांट्स कि बंदा आए एंड देन फिर मैं उसे बेसिक चीजें सिखाऊं, मैं काम कैसे करना है मैं वो सिखाऊं, लेकिन आपको वो टूल्स यूज करने नहीं आ रहे, देन दैट इज नॉट दैट। Yeah. तो दैट इज वन थिंग दैट आई विल से कि आप जितना ज्यादा स्किल्स हो सके आप उतना ज्यादा स्किल्स की मेंशन करो, जो कि डिमांडिंग स्किल्स है, जो कि एक्चुअल में यूज होंगे। आप अगर Yeah. लिखोगे नॉर्मल बेसिक की, आप बैडमिंटन खेलते हो, वो Hmm. लिस्ट फिल करेगा, नो डाउट, वो अच्छा Hmm. लगेगा, वो आपका अचीवमेंट लगेगा, लेकिन इट शुड टेक लिटिल पोजीशन, एंड आपका जो टेक्निकल स्किल्स है जो आपके एक्चुअल आप यूज करने वाली, उसे आपको टॉप पे रखना है। Right. बाकी एंड इंटरव्यूज? इंटरव्यूज, रिलेटेड टू इंटरव्यूज, कॉन्फिडेंस यार, कॉन्फिडेंस। हाँ हाँ हाँ। मैं बता रहा हूँ, मैंने नावी का इंटरव्यू, नावी वाज हम्म, लाइक कि ना, यार औकात की बाहर है, नहीं होने वाला अपना। मैं हाँ, ट्रैवल कर रहा था, आई केम एट अराउंड 1 o'clock in the afternoon. I हम्म, came back home and my interview was scheduled at 3, ओके। and बस 2 घंटे मेरे पास थे, मैं इतना टायर्ड था, मैं सो गया 1 घंटे के लिए। हम्म, मैंने अलार्म लगा के, मैं उठा हूँ, बस मैं चेहरा मैंने धोया है, एंड आई सैट फॉर द इंटरव्यू। एंड ओके। आई वाज लाइक यार औकात के बाहर है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। एंड दैट वाज द वन जो कि मुझे बैंगलोर तक मुझे लेकर के आया, दैट वाज द वन जो जिसने मुझे कॉन्फिडेंस एकदम कूट कर, ऑल्दो आई कुडंट गेट इनटू नावी बिकॉज वहाँ का स्टाइपेंड बहुत अच्छा है, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच वाज अट्रैक्टिंग मी। हम्म, बट आई विल से कि वो एक्सपीरियंस मुझे, वो जो नावी का एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। यार कभी भी इंटरव्यू है, एकदम ऐसा हो रहा था कि मुझे 1 घंटे पहले कॉल आ रहा है कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, आर यू ट्राइंग टू गिव दिस इंटरव्यू राइट नाउ और शुड बी रीशेड्यूल। आई वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस चांस। अब मेरे से पहले अगर कोई और सेलेक्ट हो गया देन, तो मैं यस। तुरंत, मैं 1 घंटे में कर रहा था। तो आई विल से या। नंबर वन कॉन्फिडेंस, सेकंड टेक्निकल स्किल्स। नो, आप हम्म, जितना भी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन आप में टेक्निकल स्किल्स कुछ तो होने आना चाहिए, चाहिए। कुछ तो यस। आना चाहिए। एंड हम्म, थर्ड स्किल आई विल से कि जो मैंने विद टाइम मैंने जिस चीज को मैंने हम्म, अक्वायर करा है, आपको इंटरव्यू को साइकोलॉजिकली आपको अपने तरीके से चलाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप, रिक्रूटर इज जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस एंड आप बस आंसर दे रहे हो। इट शुड बी हम्म, आप अपने साइड से कि आपका कौन सा कोर एरिया है, आपको या। वो ट्विस्ट करना होगा। लाइक आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, आपने टैक्स में काम करा है, बहुत ही छोटा काम करा है, या फिर आपने टीम में काम करा है जिसमें आपको नॉलेज नहीं है, आपने फर्स्ट पॉइंट आपने टैक्स का रख दिया, हम्म, नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज वो फर्स्ट पॉइंट ही पिक करेंगे। एंड देन फिर आप क्लूलेस हो जाओगे, आप नर्वस हो जाओगे, एंड देन फिर यू आर गॉन। या। आपको वो ऑर्डर में अरेंज करना है, आपको वैसे अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको अपने साइड स्मार्टली उस चीज को करना है। यू नो व्हाट, दिस वाज द एक्सपीरियंस व्हिच आई हैड इन अनदर assignment, and it was like a ओके। stock audit which I did, and you know what, here my leadership skills was enhanced. And then फिर वो सामने वाले के रिक्रूटर के माइंड में, इंटरव्यू के माइंड में आएगा कि ये लीडरशिप के बारे में क्या बात कर रहा है, चलो इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछता हूँ। एंड देन फिर यू हैव या। चेंज्ड, मतलब जो आपको जो नहीं आता था, वहां से आपने चेंज करके आप अपने अकॉर्डिंग इंटरव्यू चला रहे हो। तो दिस यस। इज, आप एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगा। ट्रू। इंटरव्यूअर अपना माइंड वो फर्स्ट 3 मिनट्स में वैसे बना देता है, बाकी सब यस, वैलिडेशन करता रहता है वो कि हाँ यस, सही है कि नहीं। यस, दिस इज वन यस, थिंग। ट्रू, ट्रू। ट्रू। चलो, आई विल शो समथिंग टू यू शुभम, योर स्टोरीज। अभी तुम्हें अपनी हर बैच में तेरी स्टोरी तो सुनाता ही हूँ कि शुभम का तो ऐसे हुआ था। तो आई शो यू समथिंग। स्क्रीन विजिबल? सो मयंक, सो मयंक अभी रिसेंट अक्टूबर में जो हमारी बैच हुई थी तब का स्टूडेंट था। तो या, माय फर्स्ट ईयर वाज ड्यू टू बी कंप्लीटेड, इट वाज ओनली आफ्टर योर जॉइन एंड टॉकिंग। ये भी अभी फ्लिपकार्ट आने वाला है, ठीक है। इन वन ऑफ ओके। द लेक्चर यू मेंशन दैट रेज्यूमे एंड कवर लेटर तो सभी भेजते हैं, सो आई हैड ऑलरेडी मेड अ प्रोजेक्ट ऑन एसक्यूएल और इसने एसक्यूएल का प्रोजेक्ट भी साथ में भेजा, दैट मेड अ डिफरेंस फॉर हिम। और so I was coming back from Gurgaon on 28th of October. I was in metro. I was just casually checking LinkedIn and came across Harsh ki post. It was only 10 minutes since the post was published. I remember that you mentioned of someone that the vacancy came at 11 p.m. उसने apply किया and he immediately reacted on and got into Flipkart. So same story repeat हुई Mind के साथ भी और he also got into Flipkart.
एंड अगेन नहीं, हर्ष ही है, मतलब हर्ष ही है ये जो सब कर रहा है अपने में। yes, 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 true. या ग्रेट यार नहीं, शुभम, एंड आई फील एवरीवन यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। एंड शुभम, आपने आर्टिकलशिप कहाँ से की थी? स्मॉल मैंने साइज, मिड साइज फॉर्म, मिड साइज मिड फर्म्स। साइज, एंड योर एक्सपोजर वाज इनटू? It was mix of all. It was audit and tax both. अच्छा, great, great. Any of you, if you are having any questions, you can send in comment section or you can raise your hand. We have 10 minutes, so we'll be talking about that. उसके अलावा हाउ इज इट एट फ्लिपकार्ट, लाइक मीटिंग पीपल? बहुत लोग हैं ना अपने इंटर्न्स वहाँ पे, तो यू Yeah, गो फॉर लंच टुगेदर अभी yeah, भी yeah, या yeah. फिर अलग? There are multiple यस। teams जो कि है, but yeah, मतलब बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत। It is like a second home, मतलब वो आपका ट्रू होम यार, सिकनेस आपको होने नहीं देते हैं यहाँ पे। ऐसा कल्चर ही बन चुका है that you बहुत just अच्छा है। enjoy. Yes, true. हम्म। हाँ, मेनी ऑफ देम आर हैविंग वन क्वेश्चन, और जो हम दोनों में सिमिलरिटी है, वी बोथ लेफ्ट बार्कलेस एंड वी जॉइंड फ्लिपकार्ट। Yeah, ओके। true, true. तो एवरीवन इज आस्किंग व्हाई डिड वी लीव बार्कलेस? Actually, the thing is कि Barclays is also good. अगर मैं स्टाइपेंड पॉइंट से बात करूँ तो दोनों 40 पे करते हैं, तो दैट इज फाइन। बट मुझे ऐसा था कि एक फ्लिपकार्ट से मुझे मेरा एक पर्सनल अटैचमेंट बन गया था कि अब फ्लिपकार्ट ही जाना है। बार्कलेस मैंने अप्लाई करा था, बार्कलेस का आ गया मुझे। मैं बता रहा हूँ, मैंने एचडीएफसी को, मैंने बार्कलेस को, मैंने एशियन पेंट्स को, मैंने शिफ्ट करा, मैंने इतना पुश करा है कि ठीक है, आई विल ज्वाइन, आई विल ज्वाइन। मैं ऑफर लेकर के, मैं बस अपने एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा था, बिकॉज आई वाज नोइंग कि समवेयर वो कुछ और बेटर मेरे पास में है। तो बार्कलेज डेफिनेटली, आई एम हैविंग फ्यू फ्रेंड्स जो कि बार्कलेज में है एंड दे आर डूइंग वंडरफुल। बट आई वाज लाइक कि नहीं, अब फ्लिपकार्ट ही जाना है। देयर वाज नथिंग एज सच की एनीथिंग नेगेटिव ऐसा नहीं था, बट मेरा पर्सनल चॉइस था कि आई वांटेड टू शिफ्ट टू फ्लिपकार्ट। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट फ्लिपकार्ट एनी डे ओवर बार्कलेस एक्चुअली। तो बार्कलेस की वैसे भी रिक्रूटमेंट जून में आएगी अभी तो। अपनी बैच से शुभम अराउंड 30 पीपल जॉइंट बार्कलेस उस ट्रू, टाइम, और सब मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन वाज गोइंग फॉर बार्कलेस ओनली। एंड स्टाइपेंड अच्छा ट्रू। है। पर तुझे कौन सी लोकेशन मिली थी? चेन्नई? मुझे चेन्नई, ये लोकेशन दिस इज वाज वन फैक्टर, मुझे वन ऑफ द चेन्नई मिल गया कंस्ट्रेंट। था। यस, यस। सही है। देयर सो विल मेनी इट बी? मैसेज। या टू मेनी मैसेजेस एक्चुअली। इंटरव्यू क्वेश्चंस आस्क्ड इन फ्लिपकार्ट, क्या पूछा आपसे? क्या पूछा? इट डिपेंड्स। आपको सबसे पहला चीज तो, अगर किसी भी, ये जस्ट फ्लिपकार्ट का बात नहीं हो रहा है, ये हम्म। मैं बोलूंगा किसी भी कंपनी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, देन हम्म। द बेसिक चीज इज कि द बेसिक थिंग इज दैट यू शुड नो एवरीथिंग इन एंड आउट अबाउट दैट कंपनी। लाइक मैं या। बता रहा हूँ, मैंने एचयूएल का मैं इंटरव्यू दे रहा था, एंड हम्म। that was the first interview which I gave, and in that the one question which came to me as a surprising element, that what are the products that you use at your home from HUL. या। I was not aware of it. I might be having so many items from HUL, but I was unaware of it. And यस that यस। gave a negative impression that you are saying that you want to join this company. You are just beating around the bush that, yeah, HUL is this, I want to pursue like this. या। Everything good you are saying, but you don't even know the basic products, and that is not a good thing. So this is one thing, that if you are interviewing at Flipkart, know everything about Flipkart, know about supply chain, know about e-cart, e-commerce, quick commerce, because it is a startup, it is a quick e-commerce company. So you should be aware of all these things. It is very fast paced here. In the first few months, I couldn't cope up. Like I was giving my extra, I was pushing myself that no, I want to get into that वो स्पीड में, जिस स्पीड से people are doing work, even I want to do it like that same speed. And now after so many months, I guess it's been 4 months, and now I'm confident enough that जब कुछ भी आए, I can handle that. तो यहाँ या। पे चीजें बहुत स्पीड में चल रही, एवरीथिंग। आपको रात की 11 बजे भी कॉल आ सकते हैं कि ये चीजें बिगड़ रही है, बिकॉज एवरीथिंग इज लाइव। यहाँ पे अगर आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा रहे हो, इट्स लाइक कि आपका चीजें, आप अगर टाइमली एक्शन नहीं लोगे तो चीजें बिगड़ेगी नहीं। यहाँ पे चीजें बिगड़ जाती है। तो यू शुड बी वहां पे उतना ज्यादा एक्टिव, अलर्ट, एंड यू शुड बी सो मच हैविंग ग्रिप ओवर योर वर्क, वॉट एवर यू आर डूइंग। गॉट इट शुभम। एक क्वेश्चन मुझे पूछना था तुम्हें, एक मिनट।
Barclays interview questions. Interview is virtual. And see, everyone, Mhm. interviews, with every interview you give, like Shubham said कि उसका first interview Unilever में था. He was not the best version of Shubham जब उसने Unilever में interview दिया होगा. With True. every interview he just bettered himself. उसने खुद retrospect किया, introspect किया actually कि boss what can be done better, what can he improve on his side. Every interview is a mock interview for you until your dream opportunity comes. So if you want to hesitate in some lower side of companies, not in the companies where you want to get into. So apply everywhere, give as many interviews as possible. अपने आप confidence आएगा. English, I will say, try learning it because it's a long journey. If you can learn, it's better. And even if you don't, it's fine. Basically, हिंदी में भी आप interview दे सकते हो, but ideally English होती तो it would have Right. always added a value. And उसके अलावा टेक्निकल क्वेश्चंस के जो आप डर रहे हो कि आपका सिलेबस नहीं होगा, इन स्टार्टअप्स लाइक फ्लिपकार्ट मेजरली आई डोंट थिंक शुभम आपको कुछ ज्यादा टेक्निकल पूछा होगा. No, हार्डली no, फाइव no. टू 10%. हाँ, लाइक सी द थिंग इज कि आपको बेसिक्स एटलीस्ट आपका क्लियर होना चाहिए. या आपको ऐसा नहीं बोल सकते, एंड देयर इज ऑलवेज अ चांस कि आप मना कर सको कि सॉरी बट मैंने अभी तक ये पढ़ा नहीं, बिकॉज एट द एंड वो आपको जॉब के लिए नहीं ले रहे, वो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को जान रहे कि आप स्टूडेंट हो, एंड हर यस स्टूडेंट का अपना पेस होता है. So you can यस politely say that ki, sorry, I'm not prepared for this. I have not prepared this in days, or else या I haven't started with this subject. Can you please ask me another question or something वैसे आप बोल सकते हो. तो वहाँ पे यस मतलब वो लोग उस चीज को पॉजिटिव साइन लेंगे. एज कम्पेयर टू अगर आप जस्ट यू आर बीटिंग अराउंड द बुश कि आप कुछ भी बोल रहे हो, आपको आंसर आता नहीं है, रेवेन्यू रिकग्निशन पूछा गया 5 स्टेप मॉडल, बट आप बस बोल रहे हो कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ नहीं चलता है. अगर टेक्निकल अगर आपको आता है देन ओनली यू आंसर, अदरवाइज रॉन्ग आप आंसर दोगे ना, दैट इज अ नेगेटिव साइन. आप पोलाइटली मना कर सकते हो एंड इट्स फाइन. Yeah, you can say always कि I'm not sure of this concept. After the interview, I'll just brush up about it. यस And उसके यस बाद इंटरव्यू के बाद आप उनको ईमेल लिख लो कि I read about this concept and these were the learnings I have got. Thank you for sharing it and yeah, या. looking forward to the results. So as देयर इज वन Shubham said, क्वेश्चन फ्रॉम, yeah, सॉरी या कंटिन्यू. no, as Shubham said कि अब मैं ही भूल गया शुभम यार भूल गया छोड़. There is You one can question continue. from Vyom कि CFA level में study helping you in industrial training. See, the thing is कि मैं जो CFA level 1 में पढ़ रहा हूँ वो हेल्प कर रहा है. उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं मुझे फ्लिपकार्ट में आने के लिए CFA level 1 जो मैंने CV पे लिखा था, इट एडेड वैल्यू. यस, अदर्स आर जस्ट फाइनलिस्ट, बट मैं फाइनलिस्ट के साथ में मेरे पास में एक और डिग्री है, मैं एक और चीज परस्यू कर रहा हूँ, एंड दैट इज वन थिंग जो कि मेरे CV में मुझे हायरिंग के टाइम पे मुझे हेल्प कर रहा था. True. पर शुभम आपने CFL1 क्लियर कर लिया था तब No, या no. I'm सिर्फ preparing. परस्यू ही कर रहे थे ना. तो Yes, yes. yes you can show also pursuing and Flipkart does not ask for graduation. Yes you can find industrial training if your preferred location is Delhi, Noida, Gurgaon. वहाँ पे भी opportunities है but you won't be getting Flipkart. And yes great यार शुभम कहाँ पे रहते हो आप अम्बेडकर सर्कल अराउंड ही या फिर. Yes, yes. अम्बेडकर सर्कल. अच्छा अभी वहीं ग्रेट. पे रह रहे मैं वहीं पे रहता था पहले स्पेक्ट्रा हैं. वहाँ पे. हाँ. ओके ओके, आसपास है. या ग्रेट. Thank you so much. So everyone, can you thank Shubham by reacting? कुछ हाथ भेज दो and something like celebration. Did you like Shubham's journey? It would obviously help you. काफी लोग तुझे शुभम फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएंगे अभी इनमें से जो फ्लिपकार्ट ज्वाइन करेंगे. दे विल बी सेइंग सर Sure, हमने sure, आपका sure. सेशन अटेंड किया था और Just ping me. I will be there to welcome you. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. थैंक यू सो मच शुभम एंड Thank you so much. यस Thank you so much. मतलब फ्लिपकार्ट देख के काफी अच्छा लगा अभी. तो फूड कोर्ट के पास बैठा है एंड पीछे फ्लिपकार्ट का बैकग्राउंड है. Yes. ग्रेट. एंड द एक्सपीरियंस यू शेयर तुझे फर्स्ट स्पीकर सेकंड स्पीकर जो है अभी देव है. देव इज फ्रॉम Mhm. फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. तो Yes. ही वाज He's लाइक from मुझे UBS, बाद I में guess. क्यों. यस देव भी अपनी बैच का था अपनी तो बैच का मेरा अपन दोनों का बात हो रहा था जब अपन दोनों ज्वाइन वही. कर रहे थे, यस यस इंटरव्यूज यस. दे रहे थे. हाँ. तो वही वो फ्रंट एंड यूबीएस में है और तो फ्लिपकार्ट से मेरा पहला प्यार है ऐसा है. तो फ्लिपकार्ट वालों को पहला रखेंगे फिर बाकी सब. Honored. I'm honored. हाँ. सो थैंक यू सो Okay, मच यार guys. शुभम. Thank you so much. मयंक Thank you so much वेदांत for. काफी लोग अभी ज्वाइन करेंगे तुम्हें वहां पे. अभी मंडे Sure. से ही है उनकी ज्वाइनिंग. Okay, चलो guys. ग्रेट. Yeah. Hi, Dave. एंड
Hi. Am I audible? Yes, Dave, you're audible. Batch Yeah, reunion हो yeah, गया yeah. एक I तरह से. या वो हाँ अपन नहीं, अपन अपन का पहले पुराना तो बैच का पहले तो रियूनियन फ्लिपकार्ट होना चाहिए. रियूनियन हुआ पहले तो। Sorry. मैं बोल रहा हूँ अपना पुराना बैच का एक रियूनियन होना चाहिए, क्योंकि वो 1 वीक जो हमारा था, दैट वाज फैबुलस. कौन Yeah, सा? yeah. जब हमने प्रोग्राम में 1 वीक जब आप हमें गाइड करने यस आते यस थे, यस यस, अच्छा अच्छा अच्छा, लेट नाइट ओके. हम बस मजे करते थे. हाँ यार, रीयूनियन काफी टाइम से हम प्लान कर रहे हैं ना ऐसे, और मुझे तो एक बैंगलोर में मीटअप रखना है, अमेजोन फ्लिपकार्ट उन सब अरे का तो बिल्कुल, स्पेशल. बिल्कुल बिल्कुल. दैट वुड बी परफेक्ट. फ्लिपकार्ट में तो बैंगलोर ही you want to go. हाँ. बायसनेस. हाँ यार, एकदम बायस हूँ मैं. देव, सुबह ही मैं बोल रहा था ना, फ्लिपकार्ट तो पहला प्यार है तो. हाँ. ग्रेट. चलो, थैंक यू सो मच शुभम, बहुत मोटिवेट थैंक यू किया सो तुमने मच. ये. और थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा ये बैकग्राउंड देख Thanks. के, लिसनिंग फ्रॉम यू एंड लिसनिंग काफी इंसाइटफुल था. एंड योर कॉन्फिडेंस, एंड यू कैन बी ए ग्रेट स्पीकर ऑनेस्टली. जिस तरह से तू बोल रहा था कि आर्टिस्ट की वो क्राफ्ट होती है, दैट वाज रियली ग्रेट. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच. या, थैंक यू. सो देव, हाउ आर यू? All good, all good. How are you? I'm fine, yeah, Dave. Really nice seeing you. So, hello everyone. Basically, Dave is doing his industrial training in the domain which you all want to go for, print and investment banking. It's like a, मतलब सबको लगता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तो करेंगे, एंड आइडियली गोल्डमैन सैक्स या यूबीएस आप जाते हो तो बैक एंड आपको मिलता है, कंट्रोलरशिप मिलती है. वेरी रेयरली, हार्डली 3 या 4 इंटर्न्स होंगे जहाँ देव काम कर रहा है. और हाउ मेनी देव, 3 or 4 प्रोबेबली, राइट? 3 actually. 3. एंड सबको वही फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. एंड देव वाज प्रोबेबली सीएफए L3 या L2. ना L1 ही है अभी तो. अच्छा, L1 ही है, सॉरी. सो सीएफए हाँ. L1 उसने क्लियर किया हुआ था, और ही हैड दैट इंटरेस्ट टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. देव, यू कैन गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ. एंड वेरी स्टार्ट से देव का तो क्लियर था, ही विल लैंड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वो विजिबल हो जाता है बाय सीइंग ए कैंडिडेट. एंड देव, यू हैड मल्टीपल ऑफर्स आल्सो, आई गेस. उसके बाद आपने यूबीएस फ्रंट एंड आईबी ज्वाइन कर लिया था. फ्रंट एंड बहुत पहले ही आ गया था वैसे आपका, राइट? इट वाज नॉट लाइक इन ए. नहीं आया था, लाइक सो आई सॉ द अपॉर्चुनिटी बहुत पहले से, बट आया तो वही काफी towards the end था. इंटरव्यूज ही चल रहे थे, एंड यू वर एमिंग कि बस ये हो जाए. हाँ, right, yeah. यस यस यस. चलो, आप बताओ, हाउ आर यू, एंड हाउ डिड यू स्टार्ट, वेयर डिड यू डू योर आर्टिकलशिप फ्रॉम, वेदर आप इधर से हो ना अपने, वेयर आर यू डूइंग योर आर्टिकल, यू आर फ्रॉम वापी प्रॉपरली? Yeah, I'm from Vapi. यस. चलो, यू कैन Right. गिव So, इंट्रोडक्शन. first of all, a big shout out to Padam and my students club for hosting these sessions. These webinars actually are one of the reasons I went for industrial training. Because starting में halfway through my articleship, I did not even know कि भाई industrial training कुछ होता है. ऐसे भी ओह. like companies hire you and they pay you good money. So I had no clue. So initially, a little background about me. Prior to UBS, I was working with TR Chadda. I was working in the statutory audit domain. तो उस टाइम मैं ऑडिट कर रहा था, और ऑडिट करते करते थोड़ा बोर होने लग गया. एंड देन आई केम टू नो कि भाई हाँ, इंडस्ट्री ट्रेनिंग भी कुछ होती है. Then I came across my student club, and one of these sessions only I joined. I remember. I think it was Kunal Chopra was there from investment banking. राइट राइट So राइट. I हाँ. was right. I was pretty impressed, and that is what excited me in the first place. So currently, like it's been 4 months, I have joined UBS. So we are not exactly put in some specific sectors. As I'm working across different sectors in different domains. Also, I'm working in mergers and acquisitions. I'm working in IPOs. Uh, as you get started in deals, but once you get the hang of it, you can like push your way around and you can do the things that you like. Like I am personally more inclined towards mergers and acquisitions, so मैं थोड़ा try करता हूँ कि उसका काम मिले. But in the end, it's all a lot of groundwork, a lot of grunt work. काफी research करवाते हैं, काफी you have to get to know people, you have to understand how funds move across investment companies and how companies are valued. Basically, how to understand the deal flows, right? So this is a little about me and what I do at UBS. बाकी तो ठीक ही है. The work hours are a little hectic, बहुत ज़्यादा.
But other than that, it has been a good experience. What are the work hours there, if I can ask? It's embarrassing at this point. It's like most of the days I'm working 15 to 16 hours every day. Oh Weekend God. भी I was working अभी आधे घंटे पहले तक भी I was working only. फिर मैंने बोला भाई सेमिनार है I have to go. तो मैंने कुछ Oh लिखा God. फिर I prepared something कि भाई कुछ बोलेंगे. पर But अभी अभी the तुम work hours सेमिनार are से आए हो ना? You had a seminar recently, right? जम्मू में भी अभी. yeah yeah yeah. Last नहीं I did not physically go there. It was Yes, online yes. itself. Online, virtual. But last week था. It was virtual. Yes, yes, तो yes. उन्होंने आपसे पहले मुझे इनवाइट कर लिया तो यस, मुझे लगा ये आएगा कि नहीं आएगा अभी. ऑलरेडी एक सेशन तो ले लिया इसने. ग्रेट यार. नहीं सो definitely I was looking forward to my students club का session because that is where my journey got started right. मैंने वहां से ही देखा and ऐसे ही एक सेशन में मैंने भी ज्वाइन किया था. ऐसे ही मैंने देख के मेरा मूड हुआ था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करेंगे. तो yeah. ग्रेट देव. तो मतलब व्हाट्स द वर्क एग्जैक्टली व्हिच यू आर डूइंग? You're deciding on which companies to invest, or you're analyzing on some industries, or what? So basically majority work यही होता है that companies come to you that they want to sell some stake. Majorly यही होता है या फिर they want to raise some funds like they sell 10% or 20% of their equity. Like I'm working on a deal जिसमें they are selling 60% of their equity. They want a good Okay. parent company. तो वो रहता है वैल्यू करना कैसे we can push valuation of this company to get the maximum value for our client. और Yeah. secondly होता है IPO का काम. So it's majorly IPOs are about how to get institutional investors on board. उनको कैसे convince करें, making pitch decks, making Okay. like information memorandums. And ये सब होता है ज़्यादातर. Great, great, great. Okay. परफेक्ट यार. रियली फैसिनेटिंग वर्क. मतलब सबको यही काम करना है अल्टीमेटली. और नहीं अच्छा नहीं नहीं, है. विल यू लाइक टू it's डू not पोस्ट fascinating. क्वालिफिकेशन दिस वर्क? I have not decided on that honestly. मतलब the ओके. thing is investment banking बोलने में जितना fancy लगता है it's not that fancy honestly. या. बहुत ज़्यादा pressure होता है. There's a lot of pressure. Some of these times मुझे एक पूरी कॉम शीट बनाने दे दी आधे घंटे के अंदर. आधे घंटे में मीटिंग है and the director is standing on me and he's like ये निपटाना है finish कर and I'm just new. मुझे तो आधा पता ही नहीं है कि भाई क्या चल रहा है. तो मैं कर रहा हूँ. ठीक है. I had good Excel skills तो हो गया. But हाँ, like it is quite. The thing is, there's like very less number of people in investment banking. हमारे floor पे ही, Padam, you won't believe, there is only 20 people, ओह गॉड. out of which are three of which are interns. अब दो उसमें से MD है, they don't even know. मतलब उनको तो कोई पता ही नहीं है कौन है क्या चल रहा है. मतलब बहुत कम लोग होते हैं. बहुत बहुत ऐसा लगता है स्मॉल फर्म फ्रंट में एंड काम कर रहे इन्वेस्टमेंट हो. बैंकिंग इज नॉट अ थिंग इन इंडिया एक्चुअली. मतलब बहुत ही कम है. Basically, front end हाँ ones take the decision, as per I understand, and the back end ones are making the P&L for these decisions. Back end वाले तुम्हारा decisions देख के वो ट्रेड पे कितना प्रॉफिट कमाया तुमने उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं एक टाइप से. दे आर मेकिंग द P&L फॉर दिस. और मिड वाले तो ठीक है डेक बना रहे हैं और अपना मॉडल्स भी बनाते हैं काफी लोग. बट यस, यू आर द वंस ब्रिंगिंग द डील्स एक्चुअली. Perfect, perfect. Work is what everyone wants to get into. Or as a CA, it's very difficult getting into front-end investment banking. As you said, 3 interns. Bhavya is also with you. Bhavya Shah. No? नहीं, was Acha, you playing some 3 are other different. role. Okay, okay. हाँ He was also. तो You're in yeah, UBS it is. Mumbai now. Yeah, I'm in UBS Mumbai. So they have only one office investment banking का तो it's in Mumbai only, Yeah. one that I go to. Wait. Um, but हाँ, it is quite difficult. मतलब after joining, I asked the person that took my interview. Of course, फिर तो हम लोग we became friends. तो फिर मैं पूछने लगा भाई क्या मतलब मेरा तो ऐसे. So like just to clarify, guys, like I had a couple of attempts in intermediate also, and I did not have a big four articleship. मेरा ना कोई रैंक वैंक था ना कुछ था. वेरी सिंपल वेरी बेसिक. ठीक है. वो CFA था that helped me and that is what initially stood out to them. But they were like कि those वहाँ पे थे यार 1200-1300 application थी. बहुत सारे आए थे. तो कुछ तो पता नहीं हो गया. So somehow that happened. Yeah. Yes. हाँ.
ठीक है, 1200-1300 में you were the one who got selected, that is big. Tia Chadda is top 15 guys, पर ultimately वो big 4 big 6 is the more important criteria for many companies, right? But And these अभी guys, मैं they बताता don't हूँ. even know top 16 क्या होता है, कुछ नहीं, उनको पता भी नहीं है। EY PwC हाँ, पता है, उसके आगे पता नहीं है उनको। अरे आई विल शेयर माय स्क्रीन और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ देव का रेज्यूमे। ठीक है, नंबर छुपा देता हूँ देव, वरना बहुत कॉल्स आएंगे। तो एक ग्रोथ ड्रिवन, मतलब आई कीप ऑन सेइंग टू एवरीवन कि देव का ऑब्जेक्टिव भी कितना पर्टिकुलर था। व्हेन आई टॉक अबाउट योर रेज्यूमे ना, आई शो इट इन ऑलमोस्ट ऑल माय बैचेस अभी, कि a growth driven individual with a strong passion for numbers and a keen interest in finance industry. Objective लिखना, I used to say it is optional, but with Dave's objective it was very clear कि he is communicating that yes, I am really interested towards finance industry, I am really liking this work, I am really passionate for numbers. So it's the way you're framing the sentences, right? उसके बाद very plain, मतलब ATS वाला इसने शायद format use किया था इसमें, ATS resume वाला, and I think flow CV से बनाया हुआ है ना ये। पता नहीं, ये तो मैंने कहाँ से लिया था, आई थिंक मैंने किसी फ्रेंड का बोरो किया, फिर मैंने उसमें एडिट कर दिया। Acha. Okay. So you can see attempts ka, as Dave has mentioned, graduation. Okay, you have done that. UBS में it is compulsory graduation अभी? नहीं 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 No idea. नहीं, it's not Nothing right. Collaborated on limited reviews. His CV is one of a kind. मतलब काफी अच्छा CV था. Cleared CFA L1 in first attempt. Well, CFA इधर नहीं दिखा के इसने achievements में दिखा दिया था. And yes, it's the work which you're writing ultimately. He has written that he has interest in technical analysis, experts of equity stocks and stuff. So it was good. How did you apply, Dave, for this? So yeah, I applied through their portal only, majorly though. Okay. But एक मैंने कोल्ड मेल डाल दिया था 4, तो आई केम टू नो कि यूपीएस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है ईमेल एड्रेस का। तो इट इज लाइक फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम @ubs.com। तो मैंने Yeah. देखा लिंक्डइन पे कौन है डायरेक्टर्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था मेल। आई थिंक दैट हेल्प मी, क्योंकि मैंने उस पे फॉलो अप डाला एंड दैट इज द डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम, तो आई थिंक दैट हेल्प मी। Something additional which you did, right? Great. और फिर interviews, what were the questions around interview? पूछा उन्होंने कारो तो क्या होता बेसिकली है? कारो वाला तो नहीं पूछा मैंने। हाँ, बोलो. तो माय इंटरव्यू मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं था, सरप्राइजिंगली था हम्म. टेक्निकल, दे डिड आस्क वैल्यूएशन, बट कुछ तो ऐसे टेक्निकल से विच ऑनेस्टली मुझे नहीं आते थे। मैंने सीधा सीधा बोल दिया that I do not know about this, even though I हम्म. was trying to do my best, because this was a dream opportunity, this is a dream opportunity, तो मैं हम्म. ट्राई तो कर रहा था। लेकिन हाँ, देयर वर सम टेक्निकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग रेशियोज एंड वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव्स, डीसीएफ, ये सब डिस्काउंटिंग फैक्टर, एनपीवी, ये सब थोड़े बहुत पूछे थे उन्होंने मेजरली, बट Okay. दे टेस्टेड माय कॉन्फिडेंस, द वे आई स्पीक, कैसे हम्म. आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, हाउ आई एम कनेक्टिंग विद द इंटरव्यूअर्स, तो दैट हेल्प। Okay. मैंने चेक किया था एक इंटरव्यूअर का, उसका ही वाज फ्रॉम आई एम अहमदाबाद, तो आई वाज परस्यूइंग माय आर्टिकलशिप फ्रॉम अहमदाबाद, तो मैंने बोला कि हम्म. आई लिव लाइक नियर योर कॉलेज ओनली, मैं वहाँ पे ही रहता था, वस्त्रापुर में ही है उधर ही। तो Okay. मैंने बोला हाँ, तो he got later I asked him, so he said like that was very funny, like no one would in an interview say कि ऐसे भाई मैं भी हाँ यार, ये like तो आई वोंट इवन सजेस्ट कि कोई बोले ऐसे कि आई एम अहमदाबाद से नहीं उसने बोलना पढ़ाई की है तो मैं उधर बाजू में ही रहता हूँ। तो दैट इज नॉट समथिंग, बट ठीक है, इट वर्क्स फॉर यू. ग्रेट. चाहिए। सो एनी वैकेंसीज देयर? इट्स अवेलेबल टिल योर नहीं प्लेसमेंट अभी, करण, यस. सॉरी सर, या यू कंटिन्यू. अभी तो there are no vacancies. Majorly they'll hire once we are done. Like एक साल ओके. बाद, मतलब we started in August, तो हाँ they'll hire again in August only. तो हार्डली 20 पीपल आर देयर, 3 इंटर्न्स ऑलरेडी है, क्या करोगे और? अरे राइट. यार, मतलब I'm telling you, the way they make us work, it's deadly. Like, and you cannot really complain. Okay, so directors खुद they themselves are sitting till 10-11 every night. कि तुम क्या कंप्लेन करोगे, तुम क्या बोलोगे? वो इतने सीनियर होके भी they're sitting and they're working, so you cannot really say anything.
और फिर बोलोगे But तो फिर मतलब बोला भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला था, बिकॉज वी नीड टाइम टू स्टडी एंड एवरीथिंग, देयर लाइक कि दिस इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड दिस इज हाउ इट गोस, लाइक यही है कल्चर, यू हैव टू मैनेज। ठीक है। but everything has its own pros and cons. तो मतलब UBS normal pays around 9.5 अगर आप बैक एंड पे जाते हो. So front end would be अच्छा, very good, right? Like they pay फ्रंट good. एंड like they do not hire CAs first of all, They do not hire majorly तो CS all. Okay. they don't have, they don't even have a role for CA in front end. So Okay. they hire सीधा MBAs, Hmm. that too from Ahmedabad and Calcutta only. Their pay is like amazing, Hmm. like 50 plus fixed, and then you have 80%, 100% variable. So Variables. for it's Exactly. easy money Pros and then. cons वही है. And you have हाँ, got into very early, और जितना जल्दी आप shift कर सकते हो, now in future you always have an edge. You're in the yeah. 3 people who have done front end investment banking there during industrial training, right? So बहुत few people होंगे जिनको ये मिला है opportunity. It would obviously pay you back, and you have 6 months of exam leaves to manage कर लेगा, you will just clear out. And if you can reveal, it's okay if it's confidential. Uh, UBS का normal stipend is 60, and for front end investment banking also the stipend is same. Yeah. Same Yeah, itself. the 16. Okay, okay, perfect. हाँ, Baki, any word of about advice for these people? a word of advice is seriously, it's a long journey, okay, guys. I know you guys must be at the initial point of it कि अभी देख रहे हैं industry में क्या होता है, how to wrap your head around it. Like Yeah. मेरे लिए it was a long journey because my partner was not letting me go. If you remember, Padam, we had a Yes, call yes. एकदम starting में, इस पे तो तब बहुत मैंने हुआ बोला था. था कि यार हाँ. मेरा पार्टनर मुझे जाने नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूँ. So yeah, Yeah. I took a transfer. Yeah, I did dummy also. So मतलब Hmm. हाँ, it was some journey. Initially फिर I faced rejections also, ऐसा नहीं है, like I had a couple of rejections and Hmm. replies नहीं आते थे, so all of Hmm. those things. But in the end, the best word of advice would be to believe in yourself, make a good CV, believe in yourself, Hmm. and like you just have to know what you want basically. अगर Hmm. if it's clear in your head कि भाई ये करना है, तो फिर मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा मिल जाता है. मतलब Hmm. when I saw the opening for investment banking, मैंने तो सोचा कि भाई चांस ही नहीं है, because of course they'll go for rankers and वो Hmm. क्या ही मतलब है. Obviously. But Yeah. yeah, it happened. And surprisingly, none of us three, we are not rankers. None of us are rankers, and two of us are from mid-sized firms only. Hmm. So, so it does not matter. Like you can get exactly what you want. You just have to believe in It more yourself. That's depends on it. your CV, and more importantly on the application part. क्या आपका CV हाँ, ultimately वो hiring manager खोल के देख रहा है कि नहीं? The way you हाँ. predicted the mail ID of that person and mailed him and followed up, that probably changed it for you, right? I still मतलब remember. it's I think it's more Yeah. about I'm sorry. It's I think it's more No, about no, the no. experience Yeah. you put in. क्योंकि Yeah. वो एक साल तुमने काम कर रखा होता है ना, that gives you an edge actually. Yeah. Because lot of people they hire interns के भाई उनको कुछ नहीं आता है. Hmm. और अगर तुमने एक साल ऑलरेडी काम कर रखा है, if you can explain what you did और अच्छे से Hmm. अगर तुम बता सकते हो कि भाई इम्पैक्ट लाया था कुछ, तो that's the best Hmm. thing that you can do. Yes, yes. Work experience is the most important section of a CV. Work experience, extracurriculars, then education. Attempts hardly हाँ, matters unless they have a criteria कि हाँ इतने attempts चाहिए. और yeah, great. I still remember your conversation with अपने ग्रुप में पेन करके एक ग्रुप होता था मेंबर इंडस्ट्रियल एस्पिरेंट्स वाले ग्रुप में. पेन समवन एंड यू ऑलवेज दे तुम रिवील नहीं कर रहे थे कि मेरा फ्रंट एंड हो चुका है, और वो लोग छेड़ते रहते हाँ. कि भाई ये CFA L1 and L2. Great. You are planning, and many of these people are having this confusion on how you are managing stuff right now. CA फाइनल की स्टडीज हो रही है या बंद है अभी? Final studies तो very minimum, honestly speaking. पढ़ाई मुश्किल Hmm. है. This is one trade-off that you have to have. मतलब Yeah. काफी कंपनीज अच्छी भी होती हैं in terms of work hours, but काफी कुछ खराब भी होती है. Like you're gonna have to manage वो तो, कि भाई Yeah. पढ़ाई थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है. बट मेजरली आई थिंक Hmm. वीकेंड्स पे हो जाता है. मेरा मेरा वीकेंड्स पे भी कम होता है, बट आई एम ट्राइंग Hmm. कि हो जाए.
क्योंकि थोड़ा पुश बैक भी करने लग गए हम लोग कि भाई थोड़ी पढ़ाई करनी है. हो जाएगा यार But हाँ, अल्टीमेटली. यू हैड योर प्रीवियस इंटर्न्स एट यूबीएस फ्रंट एंड? इनसे पहले no, सीनियर्स हुआ no. करते होंगे? नो, यू आर द फर्स्ट बैच इटसेल्फ. Yeah, no, इसके पहले वो लोग ने हायर किया था, but that was in Credit Suisse. So that was like 4 years back. उसके बाद they did या not या hire. They hired परफेक्ट. engineering interns actually. And that was very ओके. surprising to me. इंजीनियरिंग इंटर्न्स इन फ्रंट एंड आएगी. हाँ, बिट्स के इंटर्न्स आ रहे हैं. हम फाइनेंस वाले हम नहीं कर रहे, वो सब मैकेनिकल इंजीनियर बैठा है मेरे साथ. मैं बोला क्या भाई. Great, yeah. Chalo, good. And okay, thank you, Dave, for joining and guiding everyone. So everyone, you found something insightful. Like this is the profile you are waiting for, right? तो आप देव को भेज दो अपना CV. वो कर देगा रेफर तुम्हें. हाँ, नहीं नहीं, किसी को मत करना. हाँ, अभी तो नहीं है. और कभी वापी आओ तो मिलना देव. आई एम आल्सो इन वापी इटसेल्फ. When you were in Vapi, I was in Ahmedabad. When I was in Ahmedabad, you were in Mumbai. Yeah. And now I came back to Vapi and you're in. But Great. one advice that I want to give to everyone, that I personally believe in a lot. If you try to make some common grounds between the person you are reaching out to, right? Like I initially True. reached out to Padam. I think तब मैंने तभी बोल दिया था कि भाई मैं भी वापी का हूँ. We are from almost the same city. True. So Yeah. it becomes थोड़ा ऐसे homely लगने लगता है. If they have a different level of warmth with you, कि भाई एक normal stranger नहीं है. Maybe they share something with you. So try to True. find something कि common ground मिल जाए. So that's the best thing. Name, place, animal, thing. कुछ भी एक कॉमन हाँ, निकाल दो exactly. और यू कुछ कैन. भी common हो जाए. वही, दैट वुड रियली हेल्प. तो देव का स्टिल आई रिमेम्बर दैट सेम थिंग कि हाँ ये वापिस से था और उसके लिए वी हैड दैट कनेक्शन की यस. सो Yeah. ग्रेट यार देव, दैट वाज अ गुड एडवाइस. और बिकॉज रैंडमली तो सबके लिंक्डइन भरे हुए हैं. आई कैन बेट कि देव के लिंक्डइन पे अभी 100 मैसेजेस 100 पड़े ही होंगे कि हाँ सबको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है, उधर आना है. नहीं है देव? यू डोंट नहीं हैव है. एनी? कितनी कनेक्शन रिक्वेस्ट, कितने ही मैसेजेस होंगे अभी. बिकॉज व्हेन यू पोस्ट एंड व्हेन पीपल नो कि हाँ यूबीएस यू आर दी, मतलब हमारा जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम वाला पेज है वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है देव मुंड्रा यूबीएस फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. तो हाँ. आपको अच्छा ग्रेट. मिल गया पर मार्केटिंग बढ़िया है. ग्रेट यार देव, वेल डन. But it's थैंक like यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. anyone, या. yeah, definitely. यस Anyone यस. that can join Padam's workshop, that would be great. मतलब I came in very clueless और फिर मुझे he gave me a lot of different paths और काफी helpful है. It's like someone who knows where you are sailing, where you're doing. और as a CA student तुमको ज्यादा पता नहीं होता है कैसे अप्लाई करना है, कैसे करना है. So that was very helpful. And it's like बाद में भी helpful रहता है क्योंकि बाद में भी you search for jobs and everything. So yeah, it's pretty helpful. Thank you so much, Dev. Thank you so much for after having all those assignments, वो जो भी बनाना था तुम्हें और तुम सेमिनार पे आ गए. So thank you so much for taking out time. Thanks to your team for letting you go. And yeah, everyone, if you like the session for Dev, you can just say him thanks and we can move to the next one. Great, Dev. You can see the reactions. Yeah, Thanks everyone. great. Thank you so much. Thank you, Dev. Yes. चलो, एवरी वन ऑफ यू वर हैविंग ए क्वेश्चन कि बार्कलेस क्यों छोड़ा, मैंने छोड़ा, शुभम ने छोड़ा. शुभम इज नॉट इवन लीविंग अभी. शुभम इज स्टिल देयर, ही इज हियरिंग आउट देव. सो अभी किसी स्पीकर को बुलाते हैं जिसने बार्कलेस चुना अल्टीमेटली, एंड शी इज आयुषी. Ayushi joined Barclays and probably same batch. Again, Dave, Shubham, and Ayushi were from the same batch itself. So Ayushi Thakur, she has around 20,000 plus followers on LinkedIn. Barclays has what three locations. Barclays is in Noida, basically. It's in Pune and it's in Chennai, right? In 3 locations में hire करती है. Ideally, Barclays की vacancy every year it would come around June, मई या जून में. They will hire through ICI SSP portal only. और वहां पे ही वैकेंसी आएगी. यूबीएस में वेल्थ मैनेजमेंट डोमेन है. So Ayushi is the go-to person. If you have like, she's a great mentor. She is having a lot of knowledge. If you follow her on LinkedIn, you will be finding a lot much of content shared by her on industrial training and around the corners also, right? Ayushi, if you're there, let's see.
till 31st March, you can, anyone who is getting eligible by 31st of March can enroll for this one. Wait. लास्ट में अपने क्वेरी सॉल्विंग रख लेंगे और आयुषी ठाकुर, I'll just share my screen. Yeah. So if you see, Aayushi Thakur, she is in Barclays, and she also was part of one of the batch. और Barclays का ऐसा है कि काफी बहुत वेरी टाइप ऑफ हायरिंग थी, बहुत डिफिकल्टी आई थी सबको, समवन कंफ्यूज कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, बट आयुषी का फर्स्ट गो में हो गया था सिलेक्शन. She is basically Aayushi. She is doing her industrial training from Barclays, and I'll just drop her a call if she can join. Okay, she's there. I'm here, Padam. Yeah. Okay. I first asked कि Aayushi आप हो, तो probably you join now. No worries. Thank you so much, Yeah. Aayushi, for joining. Everyone was waiting for you. And how is it? How is it everything? I said कि today LinkedIn influencer is joining us. Yeah, congratulations Firstly, on is my voice 20K. audible to you? Yes, it's audible. It's Yeah. been amazing. I believe everything is going well now. I've been settled here, so going Yeah. well. How was Yeah. your industrial training hunt? It was tough at the start because I was doing multiple interviews all at one day, and then I got the offers. I was very happy. It was a I bit still tough, remember. but I I was still remember constantly जब तुझे thinking, Barclays. what to do now. I still remember जब Barclays आया था, तेरा मैसेज आया था कि फाइनली हो गया ये. हाँ, मतलब Yeah, you had I multiple was offers. I had from Airtel, HSBC, and Barclays, like final offer. I got one or two offer after I got Barclays also, but I selected Barclays. I thought I have to go for it. ठीक है, Yeah. Aayushi. You were from where did you do your articleship from? I was from a mid-sized firm in Connaught Place, Delhi. Delhi itself. And you had that constraint in mind कि मुझे दिल्ली में ही करनी है industrial training. Yeah, because my family lives here actually. I was not able to relocate. My mom was not allowing me. I wanted to relocate to Bangalore, but she was like, no, थोड़े पैसे कम कमा लो, but कहीं नहीं जाना. True. So many of people here are having this constraint कि मुझे दिल्ली ही चाहिए, Delhi NCR ultimately, right? Delhi, Noida या अपने गुड़गांव, any three places. So they are feeling कि opportunities are lesser here, and all the companies which you named, जहाँ से भी आपको offers आए, all of them were from Delhi NCR itself. Yeah. And you did your articleship from mid-sized firm. Yes. I mean, at Barclays also I've seen अभी जितनी hiring हुई ना, majority of the selected candidates are from the mid-sized firm only. Yes. Yeah, because मेरे साथ बहुत सारे Big 4, Big 6 वालों ने भी दिया था, but उनका interview ही conduct नहीं हुआ. Okay. That was the case, and some people were also reaching out to me कि हो गया क्या. My interview was at day 3. Like मेरा interview की story थोड़ी funny है. Day 1 पे schedule हुआ नहीं हुआ, day 2 पे schedule हुआ फिर नहीं हुआ, third day पे हुआ at lunch time. अचानक से मीटिंग रूम में मैं एक्सेप्ट हो गई एंड इंटरव्यू got started. I fumbled also, but it was good actually. Yeah. Okay, so if you are having any word of advice for these people on what they can do, how should they apply? How did you start your journey? First, let's come to that. How did you start applying? I basically did not wanted to go for industrial training. I attended one of these sessions and ended up completely changing my mind that I have to go for it. And I searched for companies, and 2 companies were in my mind that I have to go to. Barclays and HSBC. I've told you this also. Yes. And I was reaching out to every employee in Barclays and HSBC that I have to, I want to apply in this company and I want to go for it. But I was not aware of this thing that Barclays hire once a year. I came to know about this very later, even after giving of the interview. So
I was reaching out to people, like endless people on LinkedIn. I was emailing, cold emailing, and seeing multiple vacancies on group. These are all the things, and the code list that you gave, I was constantly reaching out to person that I need a referral and all. So to all the people out there, I think you should just reach out to all the people as much as you can, because यही time है. If you can like get even one response, one good response, it can completely change your life. One of the incident I remember, I messaged, like DM'd one VP of HSBC on LinkedIn, and he circulated my CV on other branches. And on second day, I got a mail from other branch, and my interview was scheduled in Connaught Place branch, which was nearby my past office also. So LinkedIn, it's a lot. I mean, Barclays में नहीं करता है LinkedIn help, because I had a strong referral. Like my friend is there. He's a qualified CA now for 3 years. But उधर referral का कुछ काम नहीं है. वहाँ पे proper आपका structure करना पड़ता है यार. So if you are selected, then put in well. नहीं हुआ तो we can't complain anyone. How is life at Barclays? Like, how was it at articleship, and how changes have happened at Barclays? For my articleship, I was mainly into bank audits and financial modeling and valuation work, which was related to bank. But at Barclays, I am in control finance domain, which is we are basically testing the controls, and we prepare a report, annual report. For example, there are multiple processes: loan, mortgage, consumer application, all of them. And for each process, there is a risk and there's a control existing for that. So far as now, I have tested some of the controls, and it's completely different because we can say it as internal audit. Yeah, kind of that. Got it. And how many days? I feel 3 days you have work from office and 2 days work from home. And that is too at stretch. That every month you can go for 12 days to office and 8 days for work from home, and remaining days as holidays. No. जब हमने ज्वाइन करा था ना, it was 2 days working. एंड जिस दिन से हमारा ज्वाइनिंग हुआ 24th of August से, उस दिन से पॉलिसीज चेंज हो गई. 3 days. अरे यार. एंड एंकर डे वाला पॉलिसी खत्म हो गया. We had to come into the anchor day. Yeah. And they are having a question, what are the work timings at Barclays? It depends. For example, one of my friend is in treasury, so उनका काम ही 1 बजे से start होता है, and it can go up to 10 o'clock in the night. It varies upon team to team. Like in my team, we have fixed time hours, 11 to 7 in control finance, all over the CCO bar. For other teams, it varies. Stipend is 40 without TDS. Stipend is 40. Previously it was 25. उसको बढ़ा के अभी 40 कर लिया है. So it changed last year. He changed. वही. अभी actually में एक meeting काफी लोग होंगे ना अपने तो. Yeah. What was the meeting? मीटिंग थी, उसमें लोग फिर कह रहे थे कि स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए, एंड ही वाज लाइक अभी तो बड़ा इतना हाइक हो गया. This is the very common thing. मतलब हर इंटर्न इसके लिए लगता है. They come up to HR and they say कि देखो Amazon 70 दे रहा है, UBS 60 दे रहा है, आप 40 दे रहे हो, increase it. Yeah. I mean, Barclays is giving good as to all other companies in Delhi or Noida, NCR region. Delhi, it's one of the top. Barclays plus because HSBC. I have interviewed with Samara Capital and Airtel and all. They were giving maximum to 25. And 20 to 25 is the average. Yes. Yeah, that is average. Yeah. If someone is going for Delhi NCR, probably the targets would be City, HSBC, Barclays, but May, June में hiring है, तो ideally they should not make connections there, as Aayushi said, कि referrals are not going to help here, right? उसके अलावा HT मीडिया में जा सकते हैं, लेंसकार्ट में जा सकते हैं, अप्रावा एनर्जी, फिर वो सब छोटी छोटी कंपनीज तो है ही बहुत सारी, SRF and all. Yeah, I gave interview in SRF also, but वहाँ पे मेरा रिजेक्शन हो गया था कि आपके पास प्रायर इंटरनल ऑडिट पे एक्सपीरियंस नहीं है.
and they selected someone who was entirely from internal audit domain. SRF was my first interview, and this where rejection अच्छा आया था, तो I was really disheartened that होगा कि नहीं होगा. Then and suddenly after I did this, I received like 1 month before my eligibility, I received many offers. I mean interview offers, and I got the selection mails also. So last month पे थोड़ा ठीक लगता है, but before that it's very scary that हमने notice तो दे दिया, but आगे से क्या आने वाला है, we don't know. You had how many months of notice? I had 1 month. Like on paper it was 3, but I had that repo with my manager, so he Arrangement. gave me 1 month. Yeah. इस पे भी अपनी शायद कॉन्वर्सेशन हुई थी कि नोटिस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए शायद. Yeah, exactly. Because I had no offer at that time. Barclays का भी कुछ sure नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, and I was really scared कि यार दे फिर यहाँ से भी खत्म हो जाए. Because one of my friend who is in the same firm, उन्होंने क्या किया, 1 month पहले notice दे दिया, and he tried he started very late for finding industrial, and he got offer अभी मिला. He was eligible in October, so 2 months he was sitting at home only. अरे बाप रे. By God ऐसा नहीं हुआ. मतलब मतलब वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो कॉन्स्टेंटली मेरे को मैसेज करता था कि आयुषी क्या करूं, and whenever I saw any vacancies I was just texting him, go for it. ग्रेट यार, सही है आयुषी. वापस से सेम तो काफी अच्छा था ये तो. तेरी हेल्प पूरी नहीं हो रही. You are still helping out your friends and all. Great. Yeah, one of my friend is going to eligible in Jan also. उधर भी जाएगा तो. उसको बोल देना प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन पर ओपी. Yeah. और ठीक है आयुषी, ग्रेट यार. बट व्हेन यू सेड मी ना, जब तेरा एक क्वेश्चन आया, जैसे तू थी, देव था, एंड एवरीवन जो होते हैं, वंस शुभम एंड ऑल, लाइक आप जब बोल रहे थे कि आपको डाउट है वेदर इंडस्ट्रियल होगा कि नहीं, ऑन माय साइड आई यूज्ड टू थिंक इसका नहीं होगा तो किसका होगा अल्टीमेटली. तो so because you were having good communication skills back then, and LinkedIn भी आप you know very well to use, so it helped was me a quite lot. Like Barclays के इंटरव्यू में I mentioned my LinkedIn numbers, and the interview panel instantly checked my profile, and they were very impressed that you are active there. At least I think one social media पे we have to be active so that we can build up presence. 100% true. मतलब LinkedIn is a game changer. It's a lifesaver actually. And when you were saying कि यार हो जाएगा, I was thinking कि यार ये इंसान क्या सोच के बोल रहा है कि मेरा हो जाएगा, ऑफर कहीं से आ नहीं रहा, नोटिस में देके बैठी हुई. तभी दिमाग नहीं चलता पदम, सीरियसली. जब तक ऑफर मिल नहीं जाता ना, I know. we are not, I mean. True यार. पर उसके बाद तुझे मिल गया, HSBC मिल गया, Barclays मिल गया, और multiple other companies which you have said, and that too within Delhi NCR. So that is great. Yeah. So you had that skill, and मेरा intuition right था. ठीक है. Great. Okay. ठीक है. Thank you so much, Aayushi. If you have any last line for these people, I believe it would be patience. Patience रखना ultimately. Yeah. You can say. Confidence. Answer गलत भी दो, थोड़ा confidence के साथ दो. Because I झूठ remember भी सही Barclays लगेगा. के interview में, yeah, 1 or 2 question I gave wrong answer, and I was giving it too constantly. मतलब confidence के साथ दिया एकदम, तो उन्होंने भी कुछ सामने से नहीं बोला. And other thing is interview के time पे भी ना, you have to make a connection with the interviewers. Like at the end of the interview I was asking them some personal professional question which might sound गलत है, इतना नहीं पूछना चाहिए, but I was asking them their personal experiences, how it is helping them to grow personal and professional level. So after that also when I joined there, they instantly recognized me, and now we are good friends. We have something to talk about. Okay, great. ये same चीज देव ने भी बोली कि find something, name, place, animal thing, something in common that you are there, right? So उससे connection बन जाता है, and when someone is connected with you, they will be obviously helping you. Try finding references. Ultimately reference से ही होगा,
Other than Barclays, I Hmm. feel Aayushi, तुम्हारे जितने भी offers आए होंगे, that would have been through referrals itself. Yeah, kind of. Majority would be, and LinkedIn was the major source of it. Yes, correct. Okay, ठीक है आयुषी, thank you so much for joining late night and for such short notice. Yeah. कल ही बोला था और आज आप आ गए, तो thank you so Don't much, worry. and it was really insightful. I wish I could have said कि you will find these people in Barclays really soon. Some of them you will be finding, as some of them are eligible in June, July also. So, but rest of them, they'll be in some good organization. They will be texting you कि yes, we have cracked it, just like you. Definitely. Okay. I mean, one of these So- session, I was sitting here 5 months ago on one of these session, and now yeah, I'm here and now as a you're on. speaker. So overwhelming. That should be the goal, everyone. Yes, that should be the goal, everyone. कि Yeah. बस speaker बन के आना है. Next time you should be the one who is guiding the other person, right? And you must have seen the reactions right now. Screen पे अगर आपने reactions देखे हो, everyone is, yeah. So Everyone great. just blindly follow what Padam says. Like, he's your god right now. अरे, I mean, he can help you all. You have helped me a thank you lot, so Padam. much. I can really thank you my entire life. Thank you so much. You're having Jia, Khushi, everyone there. अपने Barclays में और भी interns होंगे See, ना? I'm not sure. Yeah, Gia is there. Jia is there, Gia, right? Yeah. Karan, Sanju, yeah, all of them are there. Karan is also there. Great, great, great. Chalo. Cool. Thank you so much. Thank you, Aayushi. Okay, Padam. Thank you so much Really for nice having meeting. me. Yeah. Thank you. Thank you. Bye. Okay. Bye. Good night. Okay. Next up, we are having a speaker. Like every one of you, many of you would be from Mumbai or will be aiming for Mumbai. And one of the best organization to be in Mumbai is Deutsche Bank, right? DB. Stipend is 50,000, and we are having the best speaker from there, Virali. Okay, Virali was also a student of mine. The batch previous to Shubham, Aayushi, and Dev, there Virali was there, and like every one of you will be manifesting your offer letter, right? और सबने अभी एक बोला कि सीवी सबसे इंपॉर्टेंट होता है. विराली के सीवी पे ऐसा हुआ था कि HDFC बैंक ने उसको बोल दिया था कि बस सीवी देख के पता चल रहा है कैलिबर क्या है कैंडिडेट का, एंड डायरेक्टली ऑफर लेटर दे दिया विदाउट इवन इंटरव्यू. ठीक है. देन उसके अलावा शी हैड ऑफर्स फ्रॉम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस. HDFC बैंक से था, मोतीलाल ओसवाल से था, डॉशे बैंक में भी हो गया था उसका. मल्टीपल ऑफर लेटर्स, एंड विद इन मुंबई वाला. अभी आपको बताया भी था, डी शॉ भी रिजेक्ट किया था इसने, राइट? तो ऐसा था. और उसके बाद अल्टीमेट एम क्या है आप सबका? यू विल बी, कुछ मोटिवेशन होना चाहिए ना आपके लिए. तो विराली की एक स्टोरी है वेर इन उसका जब हो गया डॉशे बैंक में सिलेक्शन हुआ था, और शी ज्वाइन डॉशे बैंक, और उसको जो फर्स्ट सैलरी आई थी, फर्स्ट स्टाइपेंड आई थी, दैट वाज अराउंड 80,000 रुपीज. ओके, 50,000 था, तो 1.5 मंथ की एक साथ आ गई थी. सो शी टेक्सटेड मी देन कि क्या करना चाहिए स्टाइपेंड का. एंड जो फर्स्ट स्टाइपेंड आता है, ऑफर लेटर आता है, दैट इज अ मोमेंट रियली बिग, राइट? जब after freshers also, when you'll be receiving your job and the first salary, that is also something big. And the industrial training wala is a pre to that, right? So wo jo salary आई, stipend आई, तो she obviously, when you will be gifting your loved ones out of that stipend, that would be something really good, right? So Virali also gifted her loved ones, basically her parents, and she took her to a trip to Matheran, right? And that way मतलब it's so wholesome that आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर रहे हो on their anniversary, and you're taking them on a trip from your own money. आर्टिकलशिप के मनी से तो हो नहीं सकता ये सब, but yes, industrial की stipend. And rest Virali will be telling how Deutsche Bank is, what the culture is. 3 days work from office, 2 days work from home, less work pressure as compared to articleship, and yes, how to crack it. Deutsche Bank में अभी भी openings है, विराली खुद हायर कर रही है, आप रीच आउट कर सकते हो विराली को. या यस विराली. पहली बात ओपनिंग है, ये बात गलत है. हो गई, क्लोज हो गई ओपनिंग. अच्छा, हाँ, Opening सलोनी थी. हायर हो गई. हाँ, सलोनी हायर हो गई. ओके ओके. So, good evening, everyone. I am Virali Doshi. You have done my articleship from RSM in taxation domain, and फिर इंडस्ट्रियल की जर्नी मेरी फेब 2025 से स्टार्ट हुई थी आफ्टर माय CFA L1. मीन्स मेरा 12 महीना आउट हो गया था, एंड देन आई वाज स्टिल कंफ्यूज्ड कि अभी तो 12 महीने हो गए,
So whether, because everyone's used to start 3 months before, like in ninth or 10th month of their articleship. So I was सेल्फ डाउट्स वहाँ भी थे कि मुझे इंडस्ट्रियल मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिकॉज अब मैं कर पाऊंगी तो भी वो 9 months या 10 months का होगा, तो नेट वॉज कंफ्यूजन ही था. फिर my one of the seniors told me कि my student club used to post the vacancies. So I just visited their website कि भाई अभी करना है या नहीं करना है, I was not sure. I just visited their website. I was going through the vacancies. फिर LinkedIn पे पदम की post पढ़ी कि they conduct such sessions of regarding industrial training, guarantee batch ऐसा था. Like भाई कुछ तो पता नहीं है मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, कर लेते हैं यार एक बार. यही फ्री वाला सेशन ही था जो मैंने भी उस टाइम अटेंड किया, और वो मैं श्योर नहीं थी कि मुझे परस्यू करना है कि नहीं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. तो मैंने सोचा सिर्फ सेशन अटेंड करते बाद में देखेंगे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है नहीं करना है, आई एम नॉट श्योर. फिर सेशन के बाद आई एम लाइक नहीं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो करना है, बिकॉज मेरी तरह ही लोग स्पीकर्स वहाँ पे आए हुए थे और मुझे नहीं पता था एक बार मैं स्पीकर बन पाऊंगी. तो फिर तभी डिसाइड किया कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो करना है, पर अभी कैसे करना है आई एम क्लूलेस, बिकॉज आरएसएम में आई हैड अ गुड बॉन्ड विद पीपल. बहुत काफी अच्छे दोस्त थे, तो उनको छोड़ के कहीं और जाना, और वो ग्रुप इतना अच्छा था ना कि आई एम लाइक कि ऐसे लोग कहीं और नहीं मिलेंगे. तो और काम नया, एवरीथिंग वाज न्यू, तो सेल्फ डाउट था कि पहली बार तो मिलेगी या नहीं, कैसे मिलेगी, क्या करना है, टोटली क्लूलेस थी. कुछ कहाँ कौन सी कंपनीज होते हैं, इतने सारे डोमेन्स होते हैं, ये सब मुझे इनके सेशंस के थ्रू ही पता चला. तो आई वाज नॉट नोइंग एनी ऑफ द थिंग्स बिफोर ज्वाइनिंग हिज बैच. तो फिर Great, yeah. बैच ज्वाइन करने से काफी क्लैरिटी बढ़ी. Great. I was going to say something on this कि कुछ कह रहा था मैं, डॉशे बैंक का. Okay, you can continue first. I will just recall मैं क्या बोलना रहा था. अच्छा. So Yes, I got it. This marketing thing is good. सारे 4 स्पीकर्स अभी आए, सबके सब पहले ये सेशन अटेंड करके ही आए थे. So सेशन तो रखने पड़ेंगे अभी लगता है. Guys, you also should have the same. विराली तो अभी तीसरी या चौथी बार स्पीकर बन के आई है actually, because her journey is really motivational one. And yes, you should be having the aim कि आज तुम उधर बैठे हो on the crowd, and next time you should be on the other side. You should be the speaker, I should be the host, and I should be asking you question. Yeah. तो जर्नी फिर ऐसी स्टार्ट हुई. सबसे पहले मेरा सीवी भी बहुत ऐसे गंदा नहीं बोल सकते, बट जो इनके टेम्पलेट्स थे एंड माय सीवी, आई एम लाइक भाई क्या टेम्पलेट्स भेजे इन्होंने. फिर उनके टेम्पलेट्स के हिसाब से सीवी को रीड्राफ्ट किया, एंड वो इतना अच्छे से ड्राफ्ट था जैसे उन्होंने बोला. इट वाज नॉट एचडीएफसी, इट वाज मोतीलाल ओसवाल, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लेने से पहले ही बोल दिया कि सीवी देख के. इट वाज नॉर्मली ऑन कॉल कि आप इमीडिएटली अवेलेबल हो या नहीं ज्वाइनिंग के लिए, हमें इतना बता दो. सिर्फ 40,000 स्टाइपेंड थी, फाइनेंस रोल था. इज लाइक आप सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए अवेलेबल हो या नहीं ये बता दो हमको, वी आर रेडी टू हैव यू. तो यस, सीवी बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करना. सभी स्पीकर्स ने स्टार्ट में भी यही बोला था. एंड पदम विल आल्सो गाइड यू कि सीवी के लिए जो उनका एक बहुत बड़ा फीडबैक आता है. आप जब सीवी भेजोगे उसके बाद वो ऐसे डीप डाउन एनालिसिस करके आपको एकदम सब्जेक्टिव फीडबैक देते हैं. तो इट्स गुड. यस, सीवी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, बिकॉज आप खुद इंटरव्यू में बोलते हो उसके पहले आपका सीवी बोल देता है आपके बारे में. वेरी ट्रू. पहले तो विराली ऑब्वियसली वो हम चैट जीपीटी में डालते, एक एआई का फीडबैक भेजते ऐसे व्हाट्सएप मैसेज में. अभी तो हमने टूल बना दिया कि सीवी रिव्यूअर यू कैन अपलोड डायरेक्टली, आप फीडबैक वहां से देख लो, ताकि क्या आप बेसिकली एवरी टाइम आई शुड नॉट पेस्ट द सेम कंटेंट. बाकी मेरा पर्सनल रिव्यू इज देयर ऑब्वियसली. सो यस, हाउ इज इट एट डॉशे बैंक? Yeah, it's very good, better than RSM. मतलब वर्क कल्चर भी बेटर है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, एंड काम वाइज भी रोल भी अच्छा है, एंड आई गेट फ्री टाइम फॉर माय स्टडीज एंड ऑल. इनको ये नहीं पता है ना एचडीएफसी मैंने ड्रॉप आउट किया था. वो स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विराली इज लाइक सीए सीएस सीएफए तीनों. तो या मतलब फाइनलिस्ट फॉर नाउ.
and नहीं, CFA HDFC. फाइनलिस्ट नहीं हूँ कुछ भी, just given level 2 Yeah. like results are waiting. Yes. HDFC की स्टोरी प्लीज. मतलब HDFC में मेरा सिलेक्शन हो गया था, IB डोमेन में था, और मतलब सिलेक्शन होके भी मैंने उधर 1 महीना काम किया. I had joined the company. I worked there for around 1 month, but उनका जैसे देव ने बोला not 15 to 16 hours, but मेरा भी 11 to 12 hours रोज का हो जाता था. एंड मेरी जो लोग मुंबई में रहते हैं उनको लोकल्स की जर्नी पता है, तो मेरे को 1 hour रोज ट्रैवलिंग में 1 to 1.5 hour लगता था. तो वो बहुत, और स्टडीज तो 0 मेरा हो ही नहीं पाता था, कुछ भी हो नहीं पाता था. एंड एज टोल्ड बाय हिम, अभी 3 डिग्रीज परस्यू करना इसके साथ आई फेल्ट इट इज इम्पॉसिबल. सो फिर जस्ट ड्यू टू वर्क प्रेशर मैंने छोड़ा. बाकी वो डोमेन बहुत काफी अच्छा था, वर्क भी डॉइचे बैंक से काफी अच्छा था. तो पर एट दैट टाइम आई थॉट टू स्टडीज प्रायोरिटाइज करनी चाहिए, तो आई वर्क फॉर 1 month एंड 104 वगैरह कुछ नहीं हुआ था, इसलिए फिर मैंने वो बैकआउट कर लिया ऑफर. आई लेफ्ट आफ्टर वर्किंग देयर 1 month. वो बस एक दिन ऑफिस गई, लैपटॉप रख के नेक्स्ट डे से ऑफिस नहीं आई, बस सिंपली लाइक दैट. और मतलब इट वाज वेरी हार्श ऑन द मैनेजर, बट yeah, you keep on teasing me on that point. yeah, so good यार विराली. पर कैसे किया, मतलब how did you start, how did you apply? I'll just take a minute to show her CV once. Yeah, so this was her CV, and L1 CS executive, CS foundation, basically intermediate foundation, BCom, HSC, SSC. Update कम required है. है CV में. Right, L2 CS finalist, BCom also done. हाँ, BCom done. Great, you're managing all the degrees, and यहाँ पे we are not able to do CA. Oh shit. Okay. Work experience was okay. Just 6 points on work experience, or it was in direct taxation. अच्छा. So did you ask your manager क्यों select किया था? Basically, it was due to CFA, it was due to your work ex, or it was due to your communication skills? CFA ऐड तो किया था because he himself is a CFA. My manager is अच्छा. only a CFA. अच्छा, तो okay. इसके लिए उनको CFA थोड़ा ऐसे लगा था कि बिकॉज मेरे साथ 5-6 जन और थे डॉइचे बैंक में ही, और IB में तो काफी था, वो तो कंपटीशन ही अलग है. Yeah. पर हाँ, तो उनको CFA अच्छा लगा था. और इंटरव्यू में भी 2 राउंड्स हुए थे मेरे, विच वेंट स्मूथ. फर्स्ट एक मैनेजर के साथ हुआ था और एक उनके अबव वाले मैनेजर के साथ, बेसिकली डायरेक्ट वैकेंसी. तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी उन्हें अच्छे लगे थे, टू बी ऑनेस्ट, और CFA रियली हेल्प्ड मी. Deutsche Bank has 2 locations, Mumbai and Pune. दोनों के लिए हायर करती है, दोनों में स्टाइपेंड इज 50K. और अभी तक तो शायद ऑलमोस्ट ऑल द इंटर्न्स आर फ्रॉम आवर बैच इटसेल्फ. ध्वनि और तुम दोनों साथ में थे ना, सेम बैच? हाँ, ध्वनि, ध्वनि, फिर श्रेया, फिर मेनी पीपल एक्चुअली. या अभी सलोनी आएगी. अरे हाँ, अभी सलोनी. So this was the thing I was saying कि Virali was my student and now Virali was hiring for their own replacement. So she hired Saloni from the batch. So this is really good. ये भी तुम्हारा गोल होना चाहिए ultimately. चलो, good, great. What is your work profile, Virali ji, and also technical questions? टेक्निकल मुझे तो काफी कम पूछे थे जेन्युइनली. मतलब मेरे वर्क प्रोफाइल के रिलेटेड मैं रिस्क में हूँ, मतलब मेरा काम है ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. तो वर्क प्रोफाइल के अंदर अगर जाए तो इट इज जो डॉइचे बैंक लोन्स देती है अपने क्लाइंट्स को, जो इंडस्ट्री और मतलब कॉर्पोरेट्स और FIs दोनों आ जाते हैं, तो वो जो लोन्स देती है उनके लिए एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ होता है कि अभी मिलियंस में काउंटिंग होती है यहाँ पे. तो दे टेल की अभी सपोज मुझे वी कैन से ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लो एक, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर डॉइचे बैंक को 400 मिलियन, बहुत कम है पर ठीक है, 400, अभी एक एग्जांपल, 400 मिलियन का क्राइटेरिया कि इससे ज्यादा इस सेक्टर में नहीं जाना चाहिए जो लोगों को लोन्स दिए हुए. तो वी हैव टू प्रिपेयर अ मंथली रिपोर्ट जो बोलता है कि इस मंथ में इस सेक्टर में कितने कितने अमाउंट के लोन्स गए, क्या थ्रेशोल्ड ब्रीच हुआ है तो उनको कैसे रेमेडी करना है, अभी ज्यादा आगे लोन्स नहीं देना है या और क्या रेमेडी हो सकती है, उस बेसिकली रिपोर्टिंग है
बट स्टिल आई फेल्ट कि फर्स्ट कि रिपोर्टिंग वर्क है यार, मजा नहीं आएगा, पर स्टिल रिपोर्टिंग में भी इतना कुछ सीखने मिल सकता है, वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ. इट्स नॉट जस्ट merely preparing reports, we get to know a lot about the terminologies, the working of how bank works, basically. तो अच्छा है, not bad. God. Yeah. Like RSM and Deutsche Bank. Yeah. Which one will you choose? Bond मत लाना बीच में. Sorry. RSM and Deutsche Bank, like what are the difference particularly? Articleship and your industrial training. Yeah, anytime industrial training, because you get an एज. मतलब पहली बात तो ब्रांड, अगर कंपनी अच्छी है तो ब्रांड नेम ऐड हो जाएगा सबसे पहले. अगर आप सीए आफ्टर क्वालिफाइंग सीए व्हेन यू गो टू गिव इंटरव्यू, वहाँ पे एक इम्प्रेशन पड़ेगी कि ऑलरेडी बड़ी कंपनी से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की हुई है, वहाँ पे काम किया हुआ है, तो वो एज देता है. आप तो सीए का भी लेते हो, मतलब सीए के भी वर्कशॉप्स लेते हो, सो यू माइट बी नोइंग कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टैंड आउट करता है हमेशा इन इंटरव्यूज, प्लेसमेंट प्रोग्राम्स में भी. तो पहला है ब्रांड नेम. सेकेंड इज जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए इंडस्ट्रियल इज बेस्ट. लाइक यू आर अर्निंग 50K यहाँ पे, बाकी और जगह तो बड़े कंपनीज में और भी ज्यादा 1.25 लाख डी श्योर जैसे कंपनीज देते हैं. तो financial constraints, then again industrial training will add up to your money in entire family. फिर थर्ड वन की पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं कि लाइक दे हैव नो आइडिया कि सीए बनने से पहले भी कोई इतना अर्न कर सकता है. दे रियली हैव नो आइडिया. मतलब वो लोग इतना प्राउडली बोलते ना कि यार हमारी बेटी तो अभी से 50 कमा रही है. और सही में रिलेटिव्स वगैरह को भी दे आर इन भाई आर्टिकल में तो 10-15 स्टाइपेंड होती है, 50 कहाँ से कमा रही है. वो होता है, पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं. मतलब अगर वर्किंग आवर्स आपके मैनेजेबल है, और ट्रस्ट में कोई भी कंपनी में जाओ कल्चर अच्छा ही होगा, दे विल अंडरस्टैंड योर स्टडीज का जो आर्टिकलशिप में इग्नोर ही हो जाता है. वहाँ पे you don't get enough time for your personal life studies. So yes. And how many offers did you have? Like Motilal, HDFC और यही Deutsche या और भी थे? मॉर्गन स्टैनली था एक. ये 3 बड़े थे, बाकी तो छोटे छोटे थे, बट दिस 3 वर मेजर. 3 to 4, दिस 3 to 4 आर मेजर. ओके. मोतीलाल में 40 था, मॉर्गन में 50 एंड HDFC में 30. हाँ. परफेक्ट. ठीक है, ग्रेट यार विराली. और आर यू हैविंग एनी वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर दीस पीपल? व्हाट यू कैन. मॉर्गन आपने क्यों नहीं चूज किया? एक्चुअली मॉर्गन का मुझे कंफर्मेशन काफी लेट आया. इट वाज आफ्टर आई जॉइनिंग डॉइचे बैंक. आई एम लाइक अभी मैं कोई स्विच नहीं कर रही, ऑलरेडी मैं एचडीएफसी स्विच कर चुकी हूँ. लाइक उनका भी रोल फाइनेंस था और वहाँ पे भी रिपोर्टिंग ही था. आई एम लाइक ठीक है, यहाँ गए, मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था. मेरी लोकेशन भी गोरेगांव ही थी दोनों, मॉर्गन स्टैनली बोलो या डॉइचे बैंक बोलो, दोनों भी सेम जगह थी, दोनों का काम रिपोर्टिंग था. आई एम लाइक ठीक है, अब फर्क नहीं पड़ता, आई विल स्टे वेयर आई एम नाउ. बिकॉज अगर मैं वापस स्विच करती तो वापस जितने दिन डॉइचे बैंक में मैंने काम किया वो वेस्ट हो जाता. ऑलरेडी मेरा 1 मंथ वेस्ट हो चुका है. एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक मुझे लगा कि मेरा फाइनल का अटेम्प्ट डिफर हो गया. वो आप लोग ट्राई करना कि ना हो, बिकॉज मेरा सितंबर 27 होता, बट नाउ इट्स सितंबर 26 होता, बट नाउ इट्स Jan 27. तो वो एक मुझे लगा कि इंडस्ट्रियल की वजह से मेरा एक लॉस हो गया, बट बाकी सब ठीक है. कोई नहीं, 1-2 डिग्री और कर है. और छुट्टियां मिल जाती है आपको? हाँ, वैसे तो सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है, बाकी तो आईसीआई की पॉलिसी के हिसाब से 12 देते हैं, तो होनी चाहिए. यू स्टडी इन सैटरडेज एंड संडेज फॉर मैनेजिंग? या हाँ, मतलब सैटरडे संडे, और मुझे वीक में भी टाइम मिल जाता है, बिकॉज हमारा वर्किंग आवर्स 10 to 6. वर्क फ्रॉम होम क्या है? वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड रहता है. मुझे वेडनेसडे और फ्राइडेज वर्क फ्रॉम होम रहता है, बाकी 3 दिन ऑफिस जाना पड़ता है. It's fixed Wednesday or Friday for everyone या नहीं, टीम टू टीम डिफर करता है. पर ऐसा है कि डॉइचे बैंक में 2:3 का है. 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा ही, कोई भी 2 दिन वो टीम पर डिपेंड करेगा.
And like, can you do like this कि इस week मैं चली गई पूरा हफ्ता, next week नहीं जाऊंगी work from home? वो अभी Depends on मैनेजर you. के साथ बना के रखो तो होता है लाइक इफ दे परमिट कि तो हो सकता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट. Perfect, perfect. ठीक है विराली, तो बाकी anything which you want to add to these people? CV, application, interview, what helped you other than me? CV मुझे लिंक्डइन LinkedIn. काफी हाँ. हाँ मतलब ये बात सही है कि 100 में से 5 लोग रिप्लाई करते हैं, बट मेरे जो तीनों ऑफर्स थे बड़े वाले, HDFC, मॉर्गन स्टैनली में तो नहीं चलता, HDFC और मोतीलाल ओसवाल और डॉयशे बैंक, तीनों जगह मुझे रेफरेंस ने ही काम करवाया है. इट ऑल द 3 ऑफर्स वर थ्रू लिंक्डइन ओनली, कि मेरा सीवी उन्होंने किसी ने, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही था कोई जिसने लिया मेरा सीवी और वो आगे फॉरवर्ड हुआ. इट वाज नॉट कि कोई बड़े लेवल का रेफरेंस मुझे मिल गया और मेरा सीवी आगे फॉरवर्ड हो गया. तीनों बार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही था कोई और उन्होंने फॉरवर्ड किया, और तीनों बार मेरी इंटरनल वैकेंसी के थ्रू ही हुआ था जो पब्लिक नहीं थी. तो पब्लिक वाली वैकेंसी पे हजारों एप्लीकेशन आ जाते हैं. हाँ डॉशे कोई भी रिलीज करेगी, हजारों एप्लीकेशन आ जाएंगे. इंटरनल वैकेंसीज में क्या है, तुम्हारा कंपटीशन ही 10 जनों से, तो इट इज वेरी लाइकली कि तुम सिलेक्ट हो सकते हो. तो ट्राई फाइंडिंग आउट सच इंटरनल वैकेंसीज बाय कनेक्टिंग विद द राइट पीपल ओवर लिंक्डइन, या राइट? और anyone, if you are having any questions, you can drop in comments. Rest Virali, okay, how do we get to know you? By just connecting with people over LinkedIn. कोल्ड मेलिंग में How भी long help was your किया था. industrial hunt? 75 days तो प्रिसाइजली मुझे 75 याद है, days. मेरा 75 डेज एग्जैक्ट था. फेब Hmm. से लेके एक्चुअली अप्रैल तक चला था, अप्रैल मई तक, तो इट वाज 75 डेज ओनली. 3 महीना Virali की ग्राइंड vacancy करना पड़ेगा, बट ठीक है, आफ्टर यू गेट द ऑफर इन हैंड ना, वो सारे एफर्ट्स वर्थ लगेंगे. feel worth it. Yes. Great. Wow. Okay. Virtual interview होता है, yes. And by connecting with Virali अभी कुछ नहीं होगा. Don't connect with Virali अभी. You can because vacancy तो close हो चुकी है. Can we get such good opportunities in Delhi NCR? Yes, yes, you can get in Delhi NCR. अभी जैसे इसकी आयुषी का था विराली से पहले, उससे पहले वो भी बार्कलेस में ही कर रही है, राइट? सो दैट इज आल्सो अ गुड कंपनी टू गेट इनटू. HSBC इज देयर, सिटी बैंक इज देयर. बहुत है अपॉर्चुनिटीज. जस्ट फाइंड आउट द राइट कंपनी, ट्राई अप्लाइंग, एंड एटलीस्ट फॉर नाउ अप्लाई एवरीवेयर. करण, वो हम डोमेन वाइज सेशन में देखेंगे ही वैसे, कि कैसे कौन सी कंपनी पे अप्लाई करना है, कौन कहाँ कर सकते हो. वी हैव मेड अ लिस्ट की अहमदाबाद में ये कंपनीज है, बैंगलोर में ये कंपनीज है, मुंबई में ये कंपनीज है, स्टाइपेंड वाइज. वो वी कैन सी. ओके विराली, एंड कल तो ओके इट्स संडे probably. Rudra, but that is only for any idea on Virali on Deutsche Bank vacancies अभी आने वाली है, या like you hired your replacement, Dwani also must be hiring ना अभी तो. मैं मतलब वैसे डॉयशे बैंक में रेफरेंस नहीं चलता, बहुत पर रेयरली. हमारी टीम में कैसे चल रहा है आई डोंट नो, बिकॉज हमारी टीम की वैकेंसी भी शायद पब्लिक नहीं थी, इट उन्होंने वाज नहीं नॉट. पोस्ट की थी. पोस्ट तो बहुत की थी पर सबको रिजेक्ट ही कर रहे थे. हाँ, डॉशे बैंक की तो बहुत पोस्ट हुई थी. हायरिंग अगस्त के बाद कब ओपन होती है अप्रोक्स? अभी ओपन ही है, बहुत सारी वैकेंसी है. डेली अराउंड 10-15 वैकेंसीज आर कमिंग. Chalo, great. Thank you so much, Virali, for coming. Everyone, if you liked Virali's input, and if you are having any questions, obviously you can write it here. Yeah. Thank you so much, Virali, for motivating everyone. मतलब डॉशे में तो नहीं आ पाएंगे अभी के लिए until a new vacancy comes up, but surely whichever organization they get into, they will message you over LinkedIn that yes, we got it from your end. Okay. So thank you so much. Thank you, Virali, for joining. Yeah, thank you for inviting. Thank you. One question they are having is, what did your resume said extra? I will answer this. She was a CA, CS, CFA. मतलब she was having 3 degrees, right? So that was one thing additional. उसके resume का जो formatting था, if you see, there wouldn't be any alignment mistakes and stuff.
It was very good, very well arranged. And work experience जो था RSM का था. RSM is also a good company to be into. Extracurriculars में आप देखोगे there were lot many extracurriculars also. So skills, extracurriculars, and work experience, and obviously her education. All the check boxes were ticked. When you go into any big organization, there is a concept of spikes. कि या तो आपको 3 में से 2 स्पाइक्स होने चाहिए. आइदर इट कैन बी एकेडमिक्स, इट कैन बी वर्क एक्सपीरियंस, इट कैन बी एक्स्ट्रा करिकुलर्स. किसी में आपके पास एक्सेप्शनल चीज होनी चाहिए. एंड शी हैड इट इन मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स, सो हर सीवी वाज गुड. या ठीक है. एनीथिंग विराली? मैं ये लास्ट में कहना चाहूंगी, अभी आपके मास्टर क्लासेस दोज आर देयर इन द बैच, तो वो 6 दिन के मास्टर क्लास होंगे. उसके बाद उसमें तो मोटिवेशन काफी रहती है बिकॉज ही इज देयर टू टेक द लाइव लेक्चर्स 2 to 3 hours आफ्टर योर आर्टिकलशिप. बट उसके बाद मैंने देखा है लोगों को डीमोटिवेट होते हो बिकॉज दे फील लाइक यार इतने दिन से मेहनत ही करे जा रहे, कुछ नहीं हो रहा है, ऑफर नहीं आ रहे, कॉल नहीं आ रहे. बट ट्रस्ट मी, वो बोलते हैं कि लास्ट 1 मंथ में आएगा, वो लास्ट 1 मंथ में ही आएगा जो कॉल्स और ऑफर्स रहते हैं. और जो वो बोलते हैं ना अपने सेशंस में, वो थरली मैं तो नोट डाउन करती थी. आई यूज्ड टू सिट विद अ नोटपैड कि यार एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग आई हैव. बिकॉज मुझे इंडस्ट्रियल की कुछ नॉलेज नहीं थी. मैं सिर्फ इस मास्टर क्लास पर रिलाई कर रही थी कि ये जो बोल रहे हैं वो मैं फॉलो करूँ. तो बस मैं लास्ट एडवाइस ये है कि इफ यू आर ज्वाइनिंग इस सेशन, तो व्हाटएवर ही स्पीक्स प्लीज नोट डाउन एंड फॉलो इट thoroughly. Thank you so much, Virali, for this. And I am forgetting some things actually. हाँ, the thing which you said कि बीच में अब motivation नहीं रहता. This I also felt कि हाँ बीच बीच में you guys move off the track. तो अभी हमने ना weekly ऐसे doubt solving sessions रखने लग गए. कि every week we are having doubt solving session ताकि ये लोग demotivate ना हो. You should not be feeling demotivated at any point. तो ultimately you can crack it. मिल जाती है सबको. You can see big four, mid size, small size, छोटी लोकेशन, बड़ी लोकेशन, सब जा जाके इंडस्ट्रियल तो मिल रही है. बट इट्स ऑल ऑन योर एफर्ट्स डालोगे तो मिलेगी, नहीं डालोगे तो नहीं मिलेगी ऑब्वियसली. पर यस, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. या रेस्ट नथिंग वुड मैटर. अटेम्प्ट्स, आर्टिकलशिप, नथिंग वुड मैटर. Exactly. या चलो, थैंक यू सो मच विराली फॉर जॉइनिंग. Yeah, thank you. Have a nice day. थैंक यू. Yeah. Chalo. Everyone, any questions you are having, you can put in comment section. Else we'll move to the next speaker, final speaker for the day. Rudra also have their offices, but no, they don't take in Gift City. Gift City में अगर आपको जाना है तो IOC Gift City का एक सेंटर है इंडियन ऑयल का, वहां पे आप जा सकते हो. इक्विडक्स की एक ऑफिस है, वहां पे जा सकते हो. You have Nestle, Marico and Indian Oil, HDFC Bank, Axis Bank in Ahmedabad, वहां पे भी जा सकते हो. Resources will be accessible till your placement. Placement के बाद थोड़े टाइम बाद वो हम रिवोक कर देंगे. मतलब अभी से लेके आप समझ लो 4-5 महीने तक तो है वो रिसोर्सेस तुम्हारे पास. कभी और भी चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, वापस रीस्टार्ट कर दूंगा मैं. आई एम जस्ट अ सीनियर एल्डर ब्रदर टू यू, नथिंग मोर. राइट, सो यू कैन टेक दैट. एंड March, every time there are vacancies, my 1 year will complete. No, you should only take it only if your eligibility is till 31st March. उसके बाद नहीं, उससे पहले नहीं. Sorry. Already ठीक है, जितना जल्दी हो स्टार्ट कर लेना if you are already eligible. And नहीं तो फिर ठीक है, चलता है. बाद में eligible हो तो ठीक है, it's fine. But 31st March तक ideally you can manage because these people were well before in time other than Virali. Notice period, see guys, have confidence on yourself और notice दे दो if you are having that confidence. मुझे पहले बैच एनरोल कर लो, मुझसे बात कर लो, नोटिस देना है कि नहीं कर लो डिसाइड, और उसके बाद नोटिस दे दो. राइट, और मोस्टली दे ही देना चाहिए. कॉन्फिडेंस रखो, सबको मिल सकता है, बट यू शुड बी स्टेइंग कॉन्फिडेंट फॉर दैट. नॉट नाउ डे. एप्लीकेशन फॉर्म में जितनी चीजें बोल रहे हैं वो सब चीजें भर दो. अहमदाबाद से हो तो वैकेंसी मेजरली बाहर की होती है, बट एज मेनी कंपनीज आई सेड वहां पे आप कर सकते हो. रुद्रा आफ्टर अगस्त हो तो अभी मत एनरोल करो, बाद में करना. Okay, so next up we have a speaker who is a guide himself. He has been guiding many people. He has been conducting sessions also now for industrial trainees. So Harsh is with us, Harsh Kotari. He is doing his industrial training from DBS Bank.
जहाँ पे right now also they are hiring for interns. So multiple people have a aim. Or DBS is one such company in Mumbai where सब कुछ करने का मन है. मुंबई और गुड़गांव दोनों जगह उनकी ऑफिस है. और DBS में Harsh is one such intern, the go-to person for me. If I have any query related to DBS, I can just ask him. And he has been, once he got selected, he has been into helping out students particularly. Because अगर आप देखोगे तो अभी हर्ष की पोस्ट आपको लिंक्डइन पे दिख जाती होगी कि yes we are conducting a session, yes this is the list of mail IDs which I had which worked for me, this is the way you have to apply for industrial training, and it feels good जब हम उसकी पोस्ट देखते हैं और उसमें हम कमेंट करते हैं कि भाई मैं भी अपना आई ऑल्सो कमेंट ऑन माई स्टूडेंट्स पोस्ट आईडी, मेरी मेल आईडी पोस्ट कमेंट कर लेता हूँ कि मुझे भी वो रिसोर्सेस मिल जाए which they are preparing, because obviously it would just be value addition. I even attended the Harshka session on industrial training, that was also helpful. So hi Harsh, how are you? Oh, hi Padam, I'm good. How are you? Fine. Already जानते हैं सब लोग आपको इधर तो. हाँ, कैसे चल रही है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी? Yeah, एकदम all great, एकदम मस्त. आप ऐसा ही समझो आप गाइडेंस सेशन ले रहे हो. I am just a student here and you can just continue. नहीं, just for everyone, even I had attended his session only before joining DBS. So अरे वाह. he is the ultimate guru if you. This was the 5 in 5 actually. 5 speakers आए. I did not know that all 5 of you have attended this session only. That was really surprising. Great, Harsh. Yeah. Just a backstory. Basically, I had attended the session because one of my friend had earlier recommended there is one guy named as Padam Bhansali and all, so you should join this session. So I was like, okay, let's join and see. So and then it was actually worth it. So coming on to the basic things like how I approached DBS and if it could be helpful for you all. So the first step and the most important step I would say is drafting a perfect CV. So for that also there were 2 or 3 sessions I think dedicated for just drafting of your entire CV, and plus at the end there is the review of it. So that I would say was the most important and the crucial step. Secondly, I would say the list that is circulated for the mail IDs of the companies, that is also an important way in which it is actually helpful, because when you just cold mail, you never know which one turns out to be grateful for you. Yeah. Yeah, and also luck is also a most important factor actually, because for me also landing a role in DBS, major part was luck only. Great. तो आपका DBS में कैसा हुआ था? How did you apply? I actually there was the vacancy post released by one of the colleague at the DBS. So I saw it and I just called him. His number was mentioned actually, and then the interview was scheduled within 2 hours, and then it happened. Okay. Great. मतलब you saw a post and वहाँ पे आपने apply कर लिया था and उससे हो गया था. Yeah, the post pe he had mentioned his number as well. I think they were looking for some urgent hiring or something was there. So and then it was a Sunday actually. Acha. So if you have any tips for all of these people, if you can say. The thing that I would say is to main thing is CV only actually. If you see CV, and secondly the cold mailing and as well as follow-ups that are there, because if you don't follow up, then there are many higher chances that your mail goes down. And the last I would say is there are some LinkedIn hacks which are also available. Like for example, if you open semicolon and just write CA industrial training and close those semicolon on LinkedIn, so you will, and then there is also an option of filter where you can filter out from the most recent post to the earlier post. So if you filter out, so you can also get to know कि industrial training के ऊपर कौन से recent में post है. For example, if DBS has posted a vacancy
then they would have also mentioned CA industrial training in anywhere in the post. So LinkedIn will search for any post which has CA industrial training mentioned and will show you those posts hierarchical wise as from the most recent. So you can just comment on those, and you can get to know kafe Nikki, and that is actually a very important hack, I would say. True. LinkedIn is the most important tool on this. Yeah. Great, Yash. Any vacancies in DBS? No, stipend is 25 or 30. 35. 35 for first 30. attempt, 25 for second attempt. This Yeah. is one, only DBS has this policy, or Harsh, you have to change this. आपको HR को बोलना पड़ेगा ये कि attempts के हिसाब से you are giving out. But unofficially, I think they are changing it to 50 from 2026 onwards. Not sure. It's just Oh, wow. speculation. That's a really good info. But that would not be for us, actually. That would be for new joiners. But yes, they would be new joiners. Yeah. Many of them are turning eligible in 2026. So yes, Okay. great. I actually, there is one vacancy for which I had posted. So there would be more vacancies. So I'll just post it and I'll just let you know. No, don't post it. Just message me. Done. Great. This time also I messaged you earlier and then. Yes. Yeah. Thank you so much as for that. And or what they can prepare and what they can do if they want an opportunity in DBS Mumbai or Gurgaon. Preparation wise, I think they just see the CV. Like there are people, even if they have attempts, they can get into any industrial training, I would say, not just DBS. Like attempts do not matter much, I would say. At the end, what would matter is your confidence and in interview, and secondly, the things. It would be repetition, but the most important would be that only, the way you draft the template of your CV, because that is also very important step. And also being active on LinkedIn helps actually. Great. Okay, Harsh. Any questions if you all have for Harsh? You can just, from where did you do your articleship? And what do you do at DBS actually? I forgot to mention. Just a minute. So, no worries. Am I audible or is there some noise coming? Yes, you are completely audible. Okay, so basically my work profile in DBS is credit analysis. So what we do is, where there are various institutions where we have given our loans. So DBS has given us their loans. So what we check is as to whether the company is financially stable by checking their financials, doing peer analysis and all that. And also there is an aspect of financial modeling in it where we prepare future projections by seeing the historical financials. So that is basically my work profile. So we work on memos, credit memos. Okay. Yeah. You work on. How is the work and where did you do your articleship from? I did my articleship from Kalyani Wala Industry. It's a mid-sized firm at Fort. Mid-sized firms are GT, and you had multiple offers? Yeah, I had multiple offers. I had got offers from DBS, one from Reliance, and I also had from Misho? Yeah, but that was based in Kolkata, so I it was not feasible for me. Misho जो अभी IPO आया था उसका आपको था? No, that's in Bangalore, right? Disha, yeah. Yeah, okay. Kolkata, Bangalore. So it was not feasible for me. Got it. You had this constraint in Mumbai wala. Yeah, that was. Okay. Any work from home policy? It's yeah, so they don't if in other, not in our department, but in other departments, like for example, if you get into finance and cash and treasury, there you can take work from home each week once. Acha. Yeah, but overall the work environment is quite chill out here, so it's not pressurizing much. You have your fixed
hours, but sometimes you have to work extra, not much. Got it. Perfect, Harsh. Thank you so much for sharing this. DE Shaw hires frequently, but the possibility of getting DE Shaw is like 0.5%. Every batch में एक student होता है जो DE Shaw जाता है. It's not like ranker, non-ranker. I had non-ranker and ranker both students. Big six होना चाहिए उनका. Without big six, you cannot go. Without it should be either big six or rank. दोनों में से एक है तो you can land up DE Shaw. Right? How you prepared for the interview? So for this thing, what I did is I didn't have much time for the interview, so I just had to ask. I saw what's the role. To be honest, I didn't prepare. Actually, I didn't prepare. I just have went through the ratios once. I just read through it for 2 to 5 minutes. What are the various ratios? Because I had done my CFA level 1, so I thought ठीक है देख लेंगे क्या होगा. Like, chill. ठीक है हर्ष. बाकी any word of advice for them? What they should be focusing upon? If any word, to start the earliest possible. That is the most important thing. Because the earlier you start, ठीक है, भले if they want later joining or something. But if you start early, then you get an upper hand. कि भाई, चलो, I have, for example, if you can have a plate of offers, and then you can decide that which one suits your role the best. So, that is the thing that I would say. And apart from just CA, since you all guys are CA finalists, I would say apart from just CA finalists, if you can, get an add-on, like suppose, for example, if you do NISM certifications. You can also go, if you guys are interested in core finance, then CFA is also a wonderful, I would say it's a very good course. So L1 I think is a basic, even if you don't want to enter into investment banking or so. And then also L1 would give you a proper guidance regarding what are the core investments and how can you frame your investments as well. That is a very realistic and modern course, I would say. So so you get an upper hand as well. You're done with L1? You have cleared L1? Yeah, I have cleared L1 and I have given L2 awaiting results. Acha, you have given L2. Okay. This was one thing common in the speakers actually. 5 speakers, 4 of them were from CFA. Like Dave has cleared L1, Shubham has cleared L1, Virali has given L2 just like you. And you have given L2. Okay. Yeah, because there, even for example, if I would take my case, though, even if I post something on LinkedIn regarding a vacancy, then we get hundreds of emails. Ki bhai, we want reference. So just by sending also CV is the basic thing that they would look is कि अगर CV में apart from CA कुछ और course है, so they would definitely get a preference over other candidates. So getting in getting industrial training, this helps. True. Right. Great, yeah, Dev. Sorry, Harsh. Great. Seems like all the speakers has done CFA. That gave an edge. Nothing like that. Like CFA के बिना भी obviously हो जाता है, but yes, you can CFA हो तो it's better. Okay. Thank you so much, Harsh, for joining for today's session. And वो भी early joining actually because 10 o'clock का अपना schedule time था. Ideally we run late during sessions. आज थोड़ा जल्दी हो गया. And thank you so much, yaar. And people, if you really found something insightful, you can just thank the speaker. You can react and you can see the reactions. And thank you so much, yaar, Harsh. It was really a great session. You will find some of these people in DBS someday saying to you, Harsh, we attended your session. So thank you again. Yeah, no problem. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Okay, everyone. चलो अब सारे स्पीकर्स डन. अब आपका स्पीकर सिर्फ मैं हूँ, मुझे ही सुनना है आप लोगों को. तो डी शॉ ऑफर्स 1.25 लाख. सीए को वो 37 लाख का पैकेज देते हैं सीटीसी. सो या 1.25 लाख मंथली इंटर्न्स को स्टाइपेंड देते हैं. बट डी शॉ पे इतना अट्रैक्ट मत हो जाओ कि सिर्फ डी शॉ पे अप्लाई करो, बिकॉज
it's very difficult. Hardly 1 or 2 interns get hired every cycle, मतलब every 3-4 months. तो possibly बहुत डिफिकल्ट है. और मतलब इन माय बैच वी आर हैविंग हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें से 1 person गेट सिलेक्टेड और 2 people गेट सिलेक्टेड. लास्ट बैच में एक जना सिलेक्ट हुआ, ही वाज अ नॉन रैंकर एंड ही वाज फ्रॉम जीटी. ओके, उससे पहले वाली बैच में 2 जने सिलेक्ट हुए थे, जो एक रैंकर थी और फ्रॉम बिग फोर, और एक नॉन रैंकर बट फ्रॉम बीडीओ. राइट, सो आइडियल पैटर्न उनका यही है, बिग 6 होना चाहिए और रैंक होना चाहिए, और दोनों कंबाइंड नहीं, ओआर और. राइट, बीसीजी हायर्स, पर बीसीजी का स्ट्रेट है रैंक चाहिए. विदाउट रैंक इट्स नॉट पॉसिबल. फर्स्ट वीक ऑफ आर्टिकलशिप. अरे वैभव इतना जल्दी आ गया. चलो, डोमेन्स में मल्टीपल डोमेन्स होते हैं. फिनेंस डोमेन है अपने पास, मतलब फिनेंस के अंदर भी बहुत सारे हैं. यू हैव एफपीएनए फर्स्ट, यू हैव फिनेंस के अंदर मल्टीपल अदर डोमेन्स. यू हैव अकाउंटिंग का, यू हैव अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, और अपना टैक्सेशन, ट्रेजरी. टैक्सेशन के अंदर डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन. डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर यू हैव कंप्लायंस एडवाइजरी लिटिगेशन. इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर यू हैव द सेम अगेन 3. सब्सिडीज का भी एक डोमेन है. तो देयर आर लॉट मेनी डोमेन्स एक्चुअली. एकदम डीप पे तो जा नहीं सकते. एफपीएनए, बिजनेस फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फ्रंट एंड वाली स्ट्रैटेजी और कंसल्टिंग, दीज आर द क्रीमी डोमेन्स. इस पे अगर मिलता हो तो बहुत अच्छा, बाकी भी अच्छे ही है ऑब्वियसली. या Desri different from DShaw? No, same ही है. DShaw renewable investments is Desri, right? और DShaw is DShaw, तो सेम ही है दोनों. नो, कोल्ड मेलिंग आपको लास्ट मंथ पे करना चाहिए. डी इफ यू आर एलिजिबल फ्रॉम अप्रैल, देन वेट फॉर द February बैच. अदर कंपनीज लाइक गोल्डमैन, अभी हायरिंग गोल्डमैन में चालू है. जेपी मॉर्गन हैज स्टॉप्ड हायरिंग, तो उधर तो फोकस करना ही मत. जेपी मॉर्गन इज नेवर गोइंग टू हायर अगेन. Sir, if you don't wanna go, yes, you can apply just for the sake of interview experience. You can apply and you can back out later. My 1 year of articleship completes on 9th. Yes, you can. Chances of revert कम रहेंगे प्रेरणा at this very moment, but you should be like Goldman, HSBC. अगर आपको ट्राई करना है तो अभी से एनरोल करना शुरू कर लो, अभी से अप्लाई करना शुरू कर लो. जेपी मॉर्गन स्टॉप बिकॉज प्रीवियसली 18 मंथ्स के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती थी, अभी 12 महीने कर दिया ना, तो दैट्स द प्रॉब्लम, और उसके लिए उन्होंने रोक लिया. आई हैव एक्सपीरियंस, विल इट बी? यस यस, विल बी कंसीडर्ड अभी. सो पीपल फ्रॉम मिक्स डोमेन्स, यस यस यस. तपन स्मॉल साइज वाले मिक्स डोमेन से ही होते हैं, कोई पर्टिकुलर डोमेन नहीं होता है. जिया, व्हाट्स द हायरिंग साइकिल? यस, द हायरिंग साइकिल आइडियली देखो, दिसंबर वैसे थोड़ा लीन पीरियड होता है, ब्लॉक लीव होती है सबकी, बट स्टिल वैकेंसीज आर देयर. आज मैंने जब आई ट्राइड टू रीच आउट टू सम रिक्रूटर्स, आई फाउंड वेरियस वैकेंसी. बीपीसीएल में, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में 3 वैकेंसी, फ्लिपकार्ट में 2 वैकेंसी. अपने देयर वर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली. इफ आई सी स्टरलाइट, इफ यू वांट टू सी स्टरलाइट, बीपीसीएल, और पेयू में 4 वैकेंसी, टाटा ऑटोकॉम पुणे में वैकेंसी, सिमिलर मुंबई में वैकेंसी, टाटा कैपिटल में वैकेंसी, प्रोटिविटी ग्लोबल में वैकेंसी, आदित्य बिरला कैपिटल में वैकेंसी. लाइक ऑल दीज इंटरनल इटसेल्फ, स्टारबक्स में वैकेंसी. सो बहुत सारी वैकेंसीज थी. और सिप्ला में वैकेंसी, फ्लिपकार्ट में वैकेंसी, अगेन लाइक टू मेनी एक्चुअली. अरविंद लिमिटेड में वैकेंसी. सो अरविंद इज इन अहमदाबाद, समवन वाज आस्किंग फॉर अहमदाबाद ना, तो उनका इंटरनल ऑडिट होना चाहिए ना. Yes, if you can pursue, just fill out the scholarship वाला ऐसे, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा स्कॉलरशिप का ऐसे, फिर तुम स्कॉलरशिप भर दो. इतना जल्दी जल्दी जरूरत नहीं. इट्स ओके, इट्स फाइन. नीश डोमेन है तो और अच्छा. Amazon में यार, नाउ दे हैव स्टार्टेड प्रेफरिंग टू बिग 6 पीपल. प्रीवियसली हमारे बैच से ऑलमोस्ट क्या हुआ था, कोल मेलिंग शीट में एक एचआर की ईमेल आईडी थी, मोनिका की. तो मोनिका प्रीति को सबने मेल कर दिया. एक जनी ने मेल किया फ्रॉम बैच, शी गॉट सिलेक्टेड. उसने बाकी को बताया कि हाँ कोल मेल करो, इससे सिलेक्शन हो जाएगा. तो बाकी 30-40 लोगों ने किया, 30-40 लोगों का सिलेक्शन हो गया उस टाइम. दिस वाज लाइक 4-5 मंथ्स बैक. पर अभी बिग 6 ही हायर कर रहे हो, और वैकेंसी बहुत लिमिटेड हो गई है. जनवरी में शायद उनकी वैकेंसी आएगी. अभी एक वैकेंसी अभी आई हुई है वैसे. After industrial, yes, you can switch, but वैसी प्रोफाइल बनाओ, get into strategy, get into consulting, but consulting is quite difficult. कोर्स करना पड़ेगा यार. पावर बीआई वो जो तुम कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ी सी ग्रिप लेनी पड़ेगी. व्हाट आर डेटा टेबल्स, व्हाट आर डैशबोर्ड्स, एटलीस्ट बेसिक्स तो पता होना चाहिए. मिल जाएगी अपॉर्चुनिटीज.
हैदराबाद में है, हैदराबाद में सूफिया थोड़ी सी कमी है, बट वैकेंसी है. आई ऑलवेज से वन सिंपल थिंग, इफ समवन एल्स इज गेटिंग सिलेक्टेड देन व्हाई नॉट यू. सिंपल थिंग इज दैट कि हैदराबाद में देर आर वैकेंसीज इन रेड हेल्थ. देर इज ए कंपनी विच वी हैव ऑनबोर्डेड, एक्सेस लाइवलीहुड. इतनी छोटी छोटी कंपनीज में जाने का मतलब नहीं है. रेड हेल्थ तो भी ठीक है, 25 स्टाइपेंड है. एक्सेस लाइवलीहुड इज देयर, बट अकाउंटिंग रिलेटेड रोल है. महिंद्रा इज देयर, UBS is there, HDFC Bank is there, ITC is there. तो छोटी कम कंपनीज नहीं पर है. Faisal, yes, you can take 15 November से 31st March you can take. To move into consulting, MBA is more recommended. MBA करना भी चाहिए आपको after CA, because CA की इतनी कोई वैल्यू है नहीं honestly. I'm eligible from 16 Jan. Shall I go for NISM certification or it's too late? आराम से मिल जाएगा यार. NISM is CA intermediate का basic FM. You can just go apply for exam. Yes, IFCO also hires without Big Six. Yes, you can land, but not in consulting. कंसल्टिंग एकदम इतना क्रीमी टारगेट रखोगे तो शायद बुटीक कंसल्टिंग फॉर्म पे आपको टारगेट करना पड़ेगा. BCG अभी सून हायरिंग इज गोइंग टू स्टार्ट प्रोबेबली. आर्टिकलशिप फ्रॉम GT इन फोरेंसिक, बट वो रैंकर चाहिए ना, जैसा ऐसे ऐसे होगा नहीं. आर्टिकलशिप फ्रॉम GT इन फोरेंसिक ऑडिट. सो विच टाइप ऑफ रोल? फिनेंस, FP&A ऐसे रोल्स पे जाओ. बिजनेस फिनेंस, एज शुभम हैज सेड. सब पे फोकस करो श्रुति, सब पे फोकस करो शर्मिला, बिकॉज एक बार सारे ऑफर्स आने दो, फिर वो क्वेश्चन लेके आओ, सर मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ऑफर है, मेरे पास फिनेंस का ऑफर है, FP&A का ऑफर है, कौन से ऑफर में मैं जाऊं? दैट वुड बी अ गुड क्वेश्चन. For getting into investment banking, which skills should I have? You should be having financial modeling skills. You should be having valuation skills. You should be having CFA. You should be having equity research. Equity research cohort देख लो. Pitch deck अच्छा होना चाहिए. Communication skills अच्छी होनी चाहिए. Done. Muskan, you have raised your hand. You can unmute. Yeah, hi Padam. Hi, Muskan. हम लोग लास्ट 6 मंथ से बात कर रहे हैं. फर्स्टली आई सो योर सेशन, जब गुरुकुल वाला सेशन हुआ था ना, विकासा सिकासा वाला. अच्छा, वो वाली मुस्कान तू. ओके ओके. आई वाज इन दैट सेशन. तो तब से आई वाज इवन टेक्सटिंग यू इन व्हाट्सएप आल्सो. कॉल पे बात हुई थी, फिर रिमेम्बर. तो क्या था, द थिंग इज दैट लास्ट टाइम जब आपका बैच आया था, आई आस्क्ड यू कि मैं ज्वाइन करूं बिकॉज मेरी एलिजिबिलिटी 20 जैन को है. So you said next batch. और अब मुझे लग रहा है कि I am just having 1 month, so late. तेरे वाले में लेट हुआ है, तो ठीक है. 1 मंथ पे भी अपने अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रैक कर लेंगे. डोंट वरी मुस्कान. आई थिंक कॉल पे भी ये डिस्कस तो हुआ था शायद, कॉल या टेक्स्ट पे. इट्स नॉट एट ऑल दैट डिफिकल्ट. फ्लिपकार्ट है, Amazon है, वो तो अभी भी ले सकती हो. तू तो शायद बिग फोर से है ना? यू आर फ्रॉम बिग फोर मुस्कान? I'm audible, everyone? Yes, okay. Muskan has gone. कोई नहीं. Yes, Mihir, you should go. देख, तूने वीडियो क्रैक कर ली है तो you will crack industrial also. Just अच्छे से अप्लाई करना तो मिल जाएगा. अप्लाई फेजर हर जगह कर, फिनेंस और FP&A पे फोकस कर. हायरिंग वो देखना पड़ेगा. Yes, Virali, I'm not sure on that. अंश? Yes, hi Padam. I just want one suggestion from you. See, my case is quite different. Actually, at the starting of my articleship, I had offers from mostly all the big fours, but I chose another. I did 6 months dummy articleship at a small firm. Okay. But later on, I realized and बहुत मुश्किल से, like after 3 months, I got SS Kothari Mehta and Company. Okay. There, my domain is stat audit. Exposure ठीक ठाक, exposure अच्छा है, no doubt. But personally, मेरा उसमें interest नहीं है. And I have been searching for industrial training, and मुझे अभी रेंटो मोजो का ऑफर मेरे पास है. And the joining date is 24th of December. And मेरे प्रिंसिपल से मैंने नेगोशिएट कर लिया है, उन्होंने मुझे अप्रूवल दे दिया है एग्जिट का. अभी आई एम थिंकिंग कि आई विल जॉइन रेंटो मोजो वंस, क्योंकि 30 to 40 30 days, I mean, लगता है to get registered on the portal.
So even that window, should I keep looking for better offers? Because I'm currently based out in Delhi, like SSKM Delhi office. But मेरी location जो है वो Obviously, Rento Mojo is not that great company. You should be hunting for better offers, and even join करने के बाद भी you don't file your form 109. एक दो हफ्ता और हंट करते रहना, ताकि अगर रेंटो मोजो से भी बेटर ऑफर मिल जाए तो व्हाई नॉट. एक्चुअली द थिंग वाज कि मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था स्टैट में, तो आई वाज लाइक कि मुझे एनी हाउ यहाँ से निकलना है एचएसकेएम से, स्टैट से निकलना, मुझे इंडस्ट्रियल में जाना ही जाना है एनीवेयर. बट Okay. इधर क्या है, रोल मुझे एफपीए मिल रहा है. Like first 2 months I will be in the finance team serving as a auditee, but later on 2 to 3 months I will join the FPA department working, and in the IPO भी upcoming है. So exposure तो मुझे अच्छा मिलेगा. I mean the तो stipend is फिर around. it's good. तो Sorry. फिर it's good. तो it's good. You should go and join them. I mean is it advisable कि within like January तक भी मैं अपनी hunt को on रखूं? देख, FPN and domain is the domain like everyone is wishing for, right? तो ideally I would suggest कि join कर लो because अच्छा offer है, and मतलब कर लेना चाहिए actually तो. अच्छा, what if I get like a better offer around the end of Jan? So Better as in, tell me what's better. like in case of brand names, say HSBC and anything like that. And my preferred location was Mumbai actually, not Bangalore. अच्छा, तुझे Mumbai, मुंबई में चाहिए था. तो Mumbai or ऑब्वियसली फिर हम चालू रख, पर रेंटो मोजो को थोड़ा डिले कर सकता है. से देम कि मैं जैन फर्स्ट वीक में ज्वाइन कर लूंगा न्यू ईयर. I have already asked them many times, but मेरे को 24th की ही joining अभी मिल रही है. After that, they are saying कि we won't take any joinings. अच्छा, हाँ. चेंज ज्वाइनिंग डेट का मेल टेम्पलेट मैं तुम्हें भेज देता हूँ. मुझे व्हाट्सएप पे एक बार हाई कर दो. Sure, sure. ओके. Okay, thanks, Padam. श्योर. डी शो कीप्स ऑन हायरिंग यार एवरीवन, बट डी शो पे इतना फोकस मत करो. बहुत बहुत डिफिकल्ट है. लाइक यस इट्स पॉसिबल, बट एकदम उसके ऊपर ध्यान मत लगाओ. UBS is abhi bhi hiring. Barclays will be hiring in June. UBS front end IB will hire in June again. Deloitte में हो, Bangalore, तो you should be looking for Flipkart, Amazon, Goldman, HSBC, Morgan Stanley. जनवरी में Morgan की भी hiring आएगी. और any good domain roles. किसी का IPO आ रहा हो something. Yes, you can apply any number of times. Just change your email ID. Matsyendra Joshi. Yeah, hi Padam. Am I audible? Yes, Matsyendra. Padam, actually, I'll just explain you my case in short. My year of my articleship would be completing on 31st of March 2026. That is coming 31st. And I am pursuing my articleship from a mid-sized firm from Pune. Now the thing is, yeah, I am pretty much interested into the industrials from the core finance, and that would include banking, investment banking, and all the domains as well. Now my thing is, I would be appearing for my CFA L1 in the coming February. So now, as you told, कि up to 31st of March, जो eligible है वो join करो. So now I am like currently into peak into my studies. पूरा schedule ही चल रहा है. तो मतलब what would you suggest कि still अभी से ही सब कुछ शुरुआत कर दूं preparation की, या फिर even after completing my February 7th को मेरा attempt है L1 का. So after completing तब join करूं या फिर तब start करूं मेरी तेरी eligibility कब है? 31st of March को end हो रहा है सर. कर सकता है, बाद में भी start कर सकता है. See, L1 is not that difficult honestly. मैंने भी दिया था तो it was ठीक है. मतलब it's on you Matsendra. You can delay joining it. You can start in Feb. Okay, मतलब बिग कंपनीज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर ठीक है. एवरी नाउ एंड देन अगर कोई वैकेंसी तुझे दिख रही हो गोल्डमैन एंड ऑल की, तो प्रोबेबली तू उसको क्या बोलते हैं अप्लाई कर देना. एक फिल्टर. दिस इज अ गुड सजेशन यू गिव मी. कुछ ऐसा डाल सकते हैं.
Okay, sir. Goldman, the top IBs का notification we can enable. Okay. And just another thing, Padam, that I wanted to ask is कि I'm pretty much interested into finance, not core accounting wala part as well. Now my point is कि finance में it's not like कि मुझे banking and all में interest नहीं है. I keep on reading about things. I keep on reading about the banking sector, the credit part as well. Pretty much interested. तो अभी what would you suggest कि typical IB के role के लिए ही apply करूँ या फिर I should even reach out for the DBS, Deutsche and all as well. क्योंकि एक बार currently not apply yet तो करना decided कि CA complete करने के बाद मुझे मतलब what would be my very niche. I'm not pretty Just much sure imagine about that. yourself in a worse situation. Ki I am on the date of my joining. Basically, my 1 year is completed. I have given notice in my firm, and Okay. I have two options: either to revoke my notice and continue in the same firm, or I can join a company for industrial training. If you feel कि मैं in any case, in the worst to worst case, I'll prefer this company over my current articleship, then उस company पे तो apply करो. If I made Okay. sense. Basically, Okay. if you feel कि I'm doing from a small size firm and I got an offer from Rento Mojo for accounting role, and you feel कि मुझे Rento Mojo का accounting role ज़्यादा पसंद है as compared to my small size articleship because it is doing zero value addition, then probably you even apply for Rento Mojo, right? Okay. Until you get a Okay. backup offer letter. Once you get a backup offer letter, only apply for the offer letters that are better than your backup, right? Okay. Yeah. And even as I told you, my 7th of Feb would be I would be finished appearing for my L1. उसके बाद भी even if I want the recordings मिलेगी आपके इस कोर्स की? हाँ मिल जाएगी, पर तब तो तुम नई बैच ही एनरोल कर देना. फेब 14th या 15th के अराउंड एक बैच आएगी. यू कैन एनरोल इन Okay. दैट. Okay, so okay, and that would be It good. won't be a big problem. It's okay. It's fine. Okay, thanks a lot, Padam. गुड़गांव में भी वैकेंसी है ना, पेयू में वैकेंसी है. तपन 4 इंटर्न्स दे आर हायरिंग, 2 FP&A में, एक फाइनेंस में, एक ट्रेजरी में. I want to do IT in corporate and my notice periods ends on the second week of January. I have almost, so I want to take your course. Yes, it would work, Professor. You can take it. Let's try to crack it. Again, I'm saying it's not a placement guarantee thing. I'll be explaining you the process, and this process has helped out everyone. But ऐसा नहीं है कि तुम you'll enroll, I'll give you offer letter. You'll have to put in the efforts. PayU is open still. मैं कल तो CV भेज रहा था उनके हायरिंग मैनेजर को. अप्रावा एनर्जी में है, यू कैन ट्राई देयर. HDFC गुड़गांव में है. HSBC में काफी लोगों के इंटरव्यू चल रहे हैं. मुस्कान बताओ, आपका नेट ब्रेक हो गया था. आई वाज सेइंग कि आप बिग फोर से हो ना. राइट. तो यार देख, तू बिग फोर से है, तुझे ऑफर मिल जाएगा अल्टीमेटली. चिंता मत कर, 1 महीना है अपने पास, तो इट्स नॉट लाइक कि नहीं मिलेगा. अभी टाइम कम है, अभी से स्टार्ट करते हैं. वी हैव गॉट इनफ टाइम. थोड़ा कब है तेरी एलिजिबिलिटी? यू सेड जैन, राइट? या 20th जैन को मेरा मतलब 19th जैन को ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट हो जाएगा पूरा. Yeah, you still have got time. जल्दी से ज्वाइन कर ले. If you want, you can watch out the recordings or you can attend the live sections. और उसके अलावा we will start off. ओके, तो हमारे यहाँ पे 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है, तो आई वाज जस्ट वंडरिंग दूं या नहीं दूं. दे आराम से दे दे. अगर मुझे नहीं मिला तो आपने मुझे कॉल पे बोला तो गोल्डमैन तो मत सोचना. गोल्डमैन मत सोचना. Amazon में जैसे वैकेंसी आई हुई है, Amazon सोच सकती है, राइट? फ्लिपकार्ट सोच सकती है, फ्लिपकार्ट में भी काफी है. तो यू कैन गिव Amazon, फ्लिपकार्ट, एवरी डेनिसन, कुछ तो मिल ही जाएगा यार. बिग फोर से है. हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ. वी विल क्रैक इट एंड वी विल क्रैक सम गुड अपॉर्चुनिटी. बिकॉज यहाँ तक आने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था एंड आई जस्ट डोंट वांट टू गो लाइक एकदम ऐसे ही. अगर मुझे अच्छी जगह नहीं मिल रहा है तो दिस इज फॉर श्योर. ट्रू. गोल्डमैन मैंने इसके लिए मना किया था बिकॉज सी, गोल्डमैन का प्रोसेस टेक्स अराउंड 2 months. इसके लिए मैं जो 31st मार्च वाले एलिजिबल है उनको बोल रहा हूँ कि अभी ज्वाइन कर लो. क्योंकि नॉट मुस्कान, तुम्हें नहीं, ये कमेंट में जो पूछ रहे हैं उनके लिए. क्योंकि
2 महीने लग जाते हैं आइडियली। तो इवन मुस्कान, अगर तुम आर्टिकलशिप छोड़ देती हो तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डे तुम्हें ज्वाइन करना है, ठीक है। फॉर सेविंग योर अटेम्प्ट यू कैन ज्वाइन एनी टाइम टिल February 28 February इज द लास्ट डेट, राइट? तो तब तक तुम ज्वाइन कर सकते हो, और तब तक वेट कर रही हो तो पॉसिबली गोल्डमैन भी हो जाएगा, राइट? अगर ऐसे करना है कि मेरे ही फॉर्म से ईवाई से मेरी एक फ्रेंड गोल्डमैन सैक्स गई है अक्टूबर में, उसकी 13 महीने कंप्लीट करके गई है वो यहाँ से। अच्छा, ही सेड कि जब तक मुझे ऑफर नहीं आया, मैंने ईवाई को नोटिस नहीं दिया, तो मुझे गवर्नमेंट से मिला। इट्स ऑन यू। सी Amazon, फ्लिपकार्ट और बाकी जितनी भी कंपनीज है उन सबको इमीडिएट ज्वाइन ही चाहिए, ठीक है। तो 1 महीने का नोटिस उनके लिए प्रॉब्लम होगा, गोल्डमैन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तेरे दिमाग में है कि आइदर गोल्डमैन या फिर मैं ईवाई में खुश हूँ, तो प्रॉब्ली डोंट गिव आउट नोटिस कि गोल्डमैन मिलेगा तो ही मैं नोटिस दूंगी, तो इट्स फाइन, दैट इज द राइट अप्रोच। बट इफ यू आर थिंकिंग कि मुझे Amazon भी चाहिए, फ्लिपकार्ट भी चाहिए, तो वो तो आपको नोटिस देने के बाद ही मिलेगा। ओके। इवन मॉर्गन स्टैनली की भी 2 वैकेंसीज आई हुई थी, एक कंट्रोलरशिप। मॉर्गन, हाँ मतलब उसका वो हो गया है कि अभी क्लोज हो गई है वो वैकेंसी, हायरिंग्स डन हो गई है। लास्ट इंटरव्यू अभी 9 दिसंबर, 4 दिन पहले हुए थे, और अभी नेक्स्ट वैकेंसी जनवरी में होगी, हायरिंग होगी जनवरी में। अगर तुझे मॉर्गन और गोल्डमैन दोनों चलेगा तो प्रॉब्ली यू कैन वेट, इट्स ओके। ओके। इवन HSBC का भी आई वाज थिंकिंग, बट कॉल तो कहीं से नहीं आया मुझे, अभी मैंने अप्लाई किया था जहाँ। HSBC बैंगलोर तो एनी टाइम आ सकता है यार कॉल, मतलब कभी HSBC भी। गुड़गांव। गुड़गांव, अच्छा तू कहाँ से है, बैंगलोर से है गुड़गांव से? गुड़गांव से हूँ मैं, गुड़गांव में ईवाई गुड़गांव चल रही है। आई एम फ्रॉम दिल्ली। एंड यू आर ओके रिलोकेटिंग एनीवेयर? फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑब्वियसली दिल्ली NCR, बट आफ्टर दैट अगर कहीं अच्छी जगह मिल रहा है तो आई विल रीलोकेट। दिल्ली में तो HSBC ओके, बस और कुछ नहीं है ना। पहले बार्कलेज और सिटी का लग रहा था, बट अब बार्कलेज भी नहीं मिल रहा है ना? बार्कलेस तो हायरिंग नहीं होगी, सिटी प्रोबेबली कैन हायर। ठीक है, नोटिस मत दे तू अभी के लिए तो। ओके। तो कौन सी कंपनीज को हमें टारगेट करके चलना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? Amazon कर सकती है, दैट इज अ गुड कंपनी टू ऐड ऑन योर CV। कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी, कोई भी FMCG कंपनी इज अ गुड ऐड, ओके। उसके अलावा यू कैन टारगेट एनी IB, गोल्डमैन, मॉर्गन, बार्कलेस तो मत कर अभी, HSBC, UBS, यू कैन टारगेट देम। और इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड फॉर बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स तो वहां पे भी जा सकती है, छोटे छोटे है, स्पार्क कैपिटल एंड ऑल। ओके। UBS तो हमको हायर नहीं करता बिकॉज ईवाई इज ऑडिटर। अरे हाँ, तुम UBS से भी बाहर हो। हाँ, ऐसी बहुत सारी फर्म्स से क्रॉस हो रहा है, तो दैट्स व्हाई आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड, क्या करना क्या चाहिए। नोटिस मत दे तू, अप्लाई करना शुरू कर ले, नोटिस मत दे बस, बड़ी कंपनीज में अप्लाई कर। इवन मॉर्गन स्टैनली के 2026 वाली वैकेंसी आई थी ना, वो भी क्लोज हो गई क्या? हाँ, जितनी अभी तक आई थी सब क्लोज हो गई। मेरी बात हुई गुंजीत से, उन्होंने कहा कि अभी नेक्स्ट वैकेंसी जैन में आएगी। ओके। एंड गोल्डमैन सैक्स की दो दिन पहले आई थी। आई कैन सिंपली से तुझे रिजेक्ट क्यों किया मॉर्गन स्टैनली ने, तूने करंट लोकेशन में गुड़गांव डाला होगा। हाँ। तो बस वो फिर उसके आगे देखते ही नहीं है, उनको बैंगलोर लोकल कैंडिडेट्स चाहिए। अच्छा, मैंने वेबसाइट से अप्लाई किया था, करियर पोर्टल पे, गोल्डमैन, मॉर्गन स्टैनली। यस यस यस, मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऐसा बोला हुआ था कि आप लोग, बिकॉज मॉर्गन का मुझे पता है वो लोकल के अलावा देखेंगे नहीं, मुंबई की वैकेंसी है मुंबई लोकल देखेंगे, बैंगलोर है तो बैंगलोर लोकल देखेंगे। तो जिन्होंने करंट लोकेशन बैंगलोर डाला उनको इंटरव्यू इनवाइट्स आ गए कि फिजिकली इंटरव्यू है, आप देने आ जाओ। उनका वर्चुअल नहीं होता है, रेयरली होता है वर्चुअल, बहुत एक दो कैंडिडेट्स का ही वर्चुअल रहते हैं, वो भी उन्होंने बैंगलोर ही डाला होता है। वो बोलते हैं कि हाँ मैं अभी घर पे हूँ तो अभी नहीं दे पाऊंगा, ऐसा। अच्छा। हाँ, तो तो आप नेक्स्ट मुझे टाइम जनवरी में जब तू अप्लाई करे तो अपनी करंट लोकेशन बैंगलोर डाल के करना। ओके, आप मुझे रोड मैप बता सकते हो कि लाइक ये जो मेरे पास 35 डेज है, हाउ टू मेक बेस्ट ऑफ इट, बिकॉज LR है जनवरी में मेरा, तो तब थोड़ा बिजी हो जाएगा। Just connect with all the vice presidents and senior people at Goldman, at UBS to रहने दे, Goldman and at HSBC primarily, and at Citi probably, and connect with those people, ask them for references for an industrial training vacancy, make a perfect CV first of all, then you can send it out at all these companies through references.
बिकॉज वो लोग रेफर करेंगे तो ही कॉल आएगा मेजरली, और उनके Okay. रेफरल वर्क्स गोल्डमैन HSBC में आप सीनियर पोजीशन वाले लोगों से करा रहे हो तो शायद चल जाएगा, और इंटर्न से भी कनेक्ट कर सकते हो। तुम्हारे हम्म, सीनियर्स को देख ले, EY में कोई तो सीनियर्स, ज्यादातर सीनियर्स होंगे जिन्होंने इंडस्ट्रियल गए होंगे हाँ, बट तुम्हारे। देयर सिप्ला सिप्ला चलेगी EY से? ईवाई से नहीं गए, मेरा सीनियर तो एचएसबीसी गया, अभी एक इंटर्न था। बस तो उनको, उनसे टच लेते रख, हम्म। और बस इतना फॉलो कर, हो जाएगा। अप्लाई करती रहे, फॉलो अप लेती रहे उधर से। गोल्डमैन में भी वो जो गई है ना, बट शी वाज सेइंग कि उसने भी वेबसाइट से अप्लाई किया था, करियर पोर्टल से, तो दोनों उसको। वे होता है, मेजरली तो वेबसाइट के थ्रू ही होता है उनका, पर हम्म, कैरियर पोर्टल के अलावा जिस टीम में वैकेंसी है वहां पे भी हम्म, अगर इफ यू रीच आउट टू द राइट पर्सन, जो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, बट यस इफ यू रीच आउट टू द राइट मैनेजर जिसके अंदर ही वैकेंसी है, तो वो आपको सीधा इंटरव्यू लेके सिलेक्ट ही कर देगा। ओके। या आपका जो भी बैच आ रहा है, उसके लिए इफ आई वांट टू एनरोल, तो उसके लिए लाइव लूं या रिकॉर्डिंग्स लूं, व्हाट विल बी सजेस्टेबल? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दोनों, हम तो दोनों प्रोवाइड करेंगे। हम्म। ऑब्वियसली तेरे केस में अगर तेरे पास टाइम नहीं है तो रिकॉर्डिंग्स देख सकती है। ओके। और या द थिंग इज दैट मैंने बाकी जगह भी अप्लाई किया, बियॉन्ड लाइक छोटी मोटी फर्म में भी, और इंडस्ट्रियल, आपकी माई स्टूडेंट क्लब वाली वेबसाइट से, बट कहीं से कॉल नहीं आया, तो आई जस्ट गॉट लाइक कि पता नहीं कॉल क्यों नहीं आ रहा है। आर्टिकलशिप के टाइम पे तो ऐसे नहीं हुआ था। तेरा CV ब्लैक एंड व्हाइट वाला फॉर्मेट है ना वो? हाँ, राइट। वो टेम्पलेट एक बार चेंज करना है, उस टाइम भी बोलना था तुझे। उसके हम्म, अलावा थोड़े बहुत चेंजेस होंगे CV पे। उसके बाद एप्लीकेशन जब करे तो लिखा कर कि यस आई एम अवेलेबल फॉर इमीडिएट ज्वाइनिंग, तो ही आएंगे कॉल्स। और 30 डेज का नोटिस है, बस वो एक है। या फिर इमीडिएट ज्वाइनिंग नहीं तो अपने सब्जेक्ट लाइन पे लिख बिग 4, राइट, ओके। या EY, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम्म, कुछ एप्लीकेशन टेम्पलेट लिंक्डइन पे रीच आउट कर लोगों को। आई थिंक तू नॉर्मल मेल करेगी ना तो इतना स्टैंड आउट नहीं होगा। तो हम्म, ऑब्वियसली रेफरल्स लेनी पड़ेंगे। मेक ए रूल की विच एवर कंपनी आई एम अप्लाइंग आई रीच आउट टू 10 people इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, या Padam, just one गॉट इट। little थैंक query. यू। लाइक मेरा भी आर्टिकलशिप एसएस के या टीम से है दिल्ली, तो मेरा कोई चांस है फ्लिपकार्ट अमेजोन में लैंड करना? आराम से। अमेजोन तो नहीं है, अमेजोन मुश्किल है, नहीं है तो नहीं बोलूंगा। फ्लिपकार्ट तो एनी टाइम, मतलब दे डोंट हैव ए क्राइटेरिया कि बिग 6 होना चाहिए, बिग 10 होना चाहिए। ऑलराइट, एंड यू नो एनी कमिंग मंथ में कोई वैकेंसी अपकमिंग है? अभी चल ही रही है, अभी 2 वैकेंसी चल रही है फ्लिपकार्ट में, वेयर बिग 6 इज नॉट रिक्वायर्ड। बिग 6 वाली तो काफी है, और 2 वैकेंसी, 2 इंटर्न्स दे आर हायरिंग राइट नाउ, जिनको विदाउट एनी क्राइटेरिया। या अभिषेक। Hi, Padam. हाय I have a अभिषेक। question regarding that. I have took multiple transfers from articleship, and currently I am doing articleship from small sized firm. And I also had multiple attempts in C intermediate, and my 1 year got completed till 15th of January 2026. हम्म, Then, what you will suggest me about industrial training, that I got a chance or not? यू विल गेट अ चांस, मतलब एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अभिषेक। यू विल हैव टू पुट इन 100% एफर्ट्स, कॉन्स्टेंटली अप्लाई करना पड़ेगा, हर लोग को रीच आउट करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि आज अप्लाई करोगे कल से रेस्पॉन्सेज आ जाएंगे, नेवर लाइक दैट। 1 महीना लगेगा टू सेटल डाउन थिंग्स। जितना जल्दी ट्राई करोगे, काफी बार 2-3 दिन में भी ऑफर आ सकता है, काफी बार 30 दिन भी लग जाएंगे, 40 डेज भी लग जाएंगे। तो ट्राई कि यू कैन अप्लाई एज मच एज पॉसिबल फॉर नाउ। Because I have multiple transfers, and currently I'm doing from a small size firm, so it will hamper me in industrial training, getting an industrial training. Yes, yes, it would surely hamper, but it's not like कि नहीं मिलेगी. You can always hide your transfers, 1 or 2 transfers, and you can show that together in one box कि हाँ 2 articleship form में किया है. So there are ways around, but it's never like don't get. It's never a constraint. 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो transfers. It's all on how you phase out your story. Okay, Yeah. it will be correctly to hide one transfer.
इट्स कंप्लीटली फाइन। कोई वेरीफाई नहीं करते बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इतना, बट हाँ बड़ी कंपनीज में अगर आप सोच रहे हो करने का तो यस वो थोड़ा सा इशू आएगा वहां पे। ओके। या हर्षद। Hi Padam, am I audible? यस हर्षद बोलो। पदम, मैं स्मॉल साइज फर्म में काम कर रहा हूँ। मुझे 5 महीने हो चुके हैं उधर। मैं अगस्त में ज्वाइन किया था और मेरा फाइनल का टाइम मई 28 है। हम्म और मुझे वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ मतलब ओवरऑल एक्सपोजर के लिए ज्वाइन किया था, पर इतना ज़्यादा कुछ सीखने नहीं मिल रहा है। मतलब फुल एंड टू स्टार्टिंग से एंड तक प्रोसेस कुछ सीखने नहीं मिल रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इनकम टैक्स सीजन में जैसे इंडिविजुअल्स का रिटर्न भरना है, तो विंगमैन में कंप्यूटेशन वगैरह सब कराते हैं, बट लास्ट में वो अपलोड करना वगैरह वो नहीं होता है। वो किसी और से मतलब उनके एम्प्लॉय से कराते हो ऐसा। तो ऐसा पूरा प्रोसेस सीखने नहीं मिल रहा है और डिले होता है मतलब सीखने में। कभी कभार काम नहीं रहेगा तो फॉर एग्जांपल वो लोग अकाउंटिंग एंट्री डेटा एंट्री वगैरह करने देते हैं। तो शुड आई ऑप्ट फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कि उसमें ही रह जाओ? तू ही बोल रहा है काम अच्छा नहीं है, फिर ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हम्म। ऑप्ट करनी पड़ेगी ना। यस। या एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मतलब सीखने के लिए कौन सा डोमेन सबसे अच्छा रहेगा? फिनेंस, बिजनेस फिनेंस, एफपीएनए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंसल्टिंग, स्ट्रेटेजी। अभी इतना मत ओके। सोच, अभी फोकस ऑन योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस फर्स्ट। ओके। या ओके, थैंक यू। और ये अपना जैसे कि सिकासा वगैरह है, उनमें कुछ वॉलेंटियरिंग, उनमें कुछ प्रोग्राम में पार्ट लेंगे तो बेनिफिशियल है ऑब्वियसली उन सब में? जितना यस यस as many extracurriculars you can add on your CV, that is only beneficial. ओके ओके, थैंक यू वेरी Yeah. मच पदम। Manisha. Hi, Padam sir. Good evening. Hi Manisha, good evening. Sir, it is somewhat a similar issue regarding Abhishek. You heard him, right? What was Attempts this and issue? all. Attempts, yeah. And I will complete my first year of articleship on 31st of March. So I'll be Okay. eligible on 1st of April. Yes. And I want to pursue my my IT in IB basically from HSBC or Deutsche Bank or kind of. Is it any way possible? Yeah, it's completely possible. There's nothing like it's not possible. You can pursue. Matlab, you'll have to make those extra efforts. You are one step back. You have attempts, but it's not like कि बस block हो गया where you cannot pursue. You should be applying the right way and you will be getting an opportunity. Sir, I wish to pursue your course. But February, because you're in 1st of April. Yeah. Okay, so is it something like that कि I'm starting early or I have to start from February or something? The thing is कि many of the students get exhausted. बाकी तो अभी भी ले सकते थे, पर exhaust नहीं होना है ultimately. Like 3 महीने की जर्नी is only exhausting. अब 3 से फिर तुम 4 महीने अप्लाई करोगे तो possibly जल्दी exhaust हो गए, because ultimate calls कब आने वाले हैं? लास्ट मंथ में आने वाले हैं. Last month, right? Other than the top companies आपको जल्दी कॉल कर लेगी, but other than that almost all your calls are going to come in the last month. And what happens many times is students start applying full fledged first 2 months, पर first 2 months उनको response नहीं आते और third month वो ढीले पड़ जाते हैं. और उस केस में you will be what, as Mikhail has saying कि yes you will be panicking कि यार 2 महीने से कर रही हूँ, ऑफर नहीं आ रहा है, नोटिस रिवोक कर लेती हूँ, नहीं करना मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, शायद आई डोंट डिजर्व दिस. बट इट्स नथिंग लाइक दैट. इट्स मोर ऑन लाइक you you reduced your efforts in the time when it was more required. Sir, are attempts actually an issue to get into big banks like Citibank or HSBC? Citibank probably yes, HSBC no. Yeah, And for Deutsche? Deutsche no. Okay, मतलब Deutsche के लिए attempts are not relevant. Not much matters. Obviously Because if first attempt होता तो it would have been beneficial, कुछ एडवांटेज ही ऐड करता, पर नहीं है तो भी अब कुछ कर नहीं सकते उसका, उसको माइंड पे मत लो.
Actually, sir, I had an issue. I got an opportunity from one of the big six Hmm. 5 months back, but my principal was strict enough. He was like, I'll not let you go anyway, do whatever you want to do. अच्छा. And he didn't allow me. And it's Okay. still a regret that I was not तभी able to इंडस्ट्रियल continue अलाउड कर देगा वो. that. हाँ, इंडस्ट्रियल के लिए he was like, I'll allow you, but for any other form, never, no, not an option. अरे बाप रे. ठीक है. It was so disheartening when he asked me, कि I'll not let you go. Yeah, For that principals are such a bad. big opportunity. I really want to do something in this wherein 109 should be one-ended. Like if student is wanting a transfer, it should be a transfer. How can a principal can stop him? Right? Sir, his clear words were कि you came with your will, you'll go with my will. It So was bad, so exactly. terrible. I have many students who got very good opportunities, but ultimately due to their principal constraint, they could not have gone. So Yes, I leaving hate that. BDO just for this form, it was so disheartening. Yeah. We will do something about this very soon. I also wanna enhance my resume, sir. Yeah, but probably consider enrolling for some additional degrees, maybe CFA, maybe NISM, maybe some certification course on Power BI, Excel, SAP, SQL. Yeah. And I think I have a time for that because Yeah, it's a you have 4 got month. sufficient time. Yes, yes, yes. सर एक्चुअली आई ट्रूली फील कि थोड़ा टैलेंट तो है और यहाँ पे ना वेस्ट हो रहा है काफी इस फॉर्म में तो बहुत ही वेस्ट हो रहा है लिटरली कोई नहीं है मनीषा. It will all, मतलब everything happens for a reason. It would all make sense at the end. So possibly if you were in some other firm, you were not allowed to go for industrial, and somewhere if you could have landed some good industrial opportunity, maybe, or this experience would help you एक्चुअली in वीडियो fresher. वाज आल्सो इट वाज लाइक कि दे वर हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट डीड रिगार्डिंग कि विल नॉट अलाउ यू फॉर आईटी Exactly. So सो इट्स ओके आई विल ट्राई माय बेस्ट sure, Manisha. Okay, all the best. थैंक यू सो Shruti, मच गुड इवनिंग सर. good evening. सर एक्चुअली ना मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मैंने ना 7th मंथ में अपनी फर्स्ट फॉर्म से ट्रांसफर लिया था क्योंकि वहाँ पे मुझे एक्सपोजर अच्छा नहीं लग रहा था. Yeah. और हाँ मेरा एक्सपोजर बैंक्स का था. तो मैंने अभी 7th मंथ में अपना ट्रांसफर लिया तो मैंने इंटरनल ऑडिट डोमेन में एक मिड साइज फर्म ज्वाइन की. अब दिक्कत यह है यहाँ पे भी 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड है. अगर मैं इंडस्ट्रियल के लिए ट्राई करती हूँ और अगर मुझे मिल जाता है तो वो इमीडिएट ज्वाइनिंग मानेंगे. और नोटिस पहले डाल देती हूँ और मुझे नहीं मिलता तो मेरे मैनेजर के साथ मेरे रिलेशंस खराब हो जाएंगे जिस वजह से मेरे को आगे का 1 साल में बहुत दिक्कत होगी. तो फिर तो दूसरी फॉर्म में चली जाना. तो बट मैं एक बार ऑलरेडी ट्रांसफर ले चुकी हूँ फिर फर्स्ट ईयर के बाद दोबारा ट्रांसफर. फर्स्ट ईयर के बाद क्यों, फर्स्ट ईयर के अंदर ही ले लेना. बट वो फिर दिक्कत नहीं देगा. मतलब मुझे ये फर्म तो अच्छी लग रही है अब जिसमें मैं हूँ. अब इस मतलब मेरे माइंड में हमेशा से था मुझे इंडस्ट्रियल करनी है तो कोई अच्छी सी करनी है जिसमें जो मेरा रोल हो वो बैकएंड पे अकाउंटिंग का ना हो. बट मुझे जेन्युइनली आइडिया नहीं था कि या तो आपको उसके लिए बिग 6 में होना चाहिए या फिर रैंक होनी चाहिए. बिकॉज तब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था इंटर और मैंने ट्राई ही नहीं करा था बिग 4 के लिए. उस टाइम मुझे मिड साइज में जाना था. डोमेन में नहीं जाना था उस टाइम पे. तो शुड आई जॉइन योर बैच की मतलब कोई पॉसिबिलिटी है क्योंकि मुझे बैंकिंग में ज्वाइन नहीं करना. कंसल्टिंग मिल सकती है किसी चांस से. कंसल्टिंग तो बहुत डिफिकल्ट है. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोबेबली गोल्डमैन सैक्स उन सब में ट्राई कर सकती है बिना नोटिस दिए. मिल सकती है वो मतलब बिग 6 नहीं है रैंक नहीं है तो. गोल्डमैन और उधर तो बिग 6 का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है. विच एवर कंपनी और टारगेटिंग ना, वहां पे जाके एक बार इंडस्ट्रियल ट्रेनीज की प्रोफाइल देखना. यू विल बी फाइंडिंग कि दे आर नॉट फ्रॉम बिग 4, दे आर नॉट रैंक होल्डर्स. रैंक का तो कहीं क्राइटेरिया नहीं होता अदर देन डी शॉ एंड बीसीजी. डी शॉ में भी ऑप्शनल है, बिग 6 इज द क्राइटेरिया. और बीसीजी में एक रैंक का क्राइटेरिया है. बाकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे रैंक का क्राइटेरिया नहीं है. इट्स ऑलवेज on your work experience itself, and काफी बार जो criteria होता है it can be bridged if you are reaching out to the right person. तो possibly I will suggest कि notice मत दे तू और तेरे केस में simply to apply कर if you are having a good articleship का experience already.
थैंक यू सर। और सर आपका सेशन बहुत अच्छा है, मतलब मुझे पहली बार कोई ऐसा सेशन लेके बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू। अरे थैंक यू। श्रीवली, you're not audible. Hello. Yes, Virali, बोलो. Hi, Padam. I would like to give a quick background of myself. I am working in a Big Four in Bangalore location, and I have cleared my both foundation and intermediate in the very first attempt with good marks. My first question is कि I have heard that IB companies like Goldman Sachs and every other good firms give back-end roles to industrial trainees. So is it a good advice for me to risk my Big Four experience at the cost? Means, is it a good advice to go for Goldman Sachs or JP Morgan or Morgan Stanley by leaving your Big Four experience? Yes. Like, where do you see yourself after qualifying as a CA? Do you see yourself joining a Big Four again, or do you want to go into a corporate or investment bank? Actually, as of now, I'm not sure of whether I want to pursue in my audit in Big Four or I want to continue in industry. So I'm very confused about that. But I want to try industry. But You want at a to good try role. out industry. So, if you're saying good role, possibly in business finance or finance, possibly. But yes, if you go into Goldman, like I have a friend, she like a student only. Again, she was in Big Four, ठीक है, और वहां से she moved to Goldman Sachs back end वाला role. Then she scored the CA final में all India rank. Okay, and CA final all India rank लाने के बाद भी she tried out all the options available in the market, and ultimately she joined Goldman only for her industry in the same back end role because they were paying 20 lakhs of money, right? Okay. So two things come. One is your packages, like pay, and if you are feeling ki you're in future you want to go into industry only and not into Big Four, if you get that clarity, because most of them have ki हाँ Big Four तो नहीं जाना है because of the work pressure and stuff. So if you get that clarity, it would be a easier decision for you. Else, if you're feeling कि हाँ मुझे चलेगा Big Four चलेगा और only for good role if I have to go, then possibly try out for industrial, but only for the creamy roles, good roles which you find out for industrial training without even giving the notice. अगर मिल जाता है तो फिर नोटिस दे देना. Actually, the thing is कि मेरा आर्टिकलशिप जो है वो अप्रैल में खत्म हो रहा है, एंड आई डोंट नो कि जो अच्छे अच्छे कंपनीज है उनका कितने मंथ्स का हायरिंग प्रोसेस चलता है, तो विच इज द आइडियल टाइम फॉर अप्लाई, बिकॉज बहुत सारे कंपनीज अभी से शुरू कर चुके हैं हायरिंग एंड आई डोंट नो कि वो कौन से अटेम्प्ट के लिए हैं. तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए नहीं है अभी हार्डली मतलब फेब और मार्च की आई है. फेब मोस्टली, नॉट इवन मार्च की भी जैन से आएगी. तो योर्स विल स्टार्ट समवेयर अराउंड फेब ओनली. तुम अप्रैल में हो ना, तो जैन और फेब में तुम्हारा स्टार्ट होगा. तो जैन और फेब से गुड कंपनीज लाइक यूबीएस, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, मॉर्गन स्टैनली, दिस इज व्हेन यू कैन अप्लाई देयर. और नॉर्मल कंपनीज जहाँ पे गुड रोल्स यू आर टारगेटिंग, लाइक छोटी कंपनीज में भी होते हैं, बिरला पिवट जैसे है, आदित्य बिरला ग्रुप की है, दे हैव स्ट्रेटेजी का रोल इन बैंगलोर, तो पॉसिबली यू कैन ट्राई देयर ऑल्सो. सो just whichever domain you're searching for, LinkedIn पे जाओ. Like if you want to get into consulting, right, CA finalist and consulting, and see and location में Bangalore डाल के देख लो which people are doing industrial training in consulting domain in which company. Connect with those people, ask for their experience and get a basic idea whether this is what I want to do. एंड एक और क्वेश्चन था कि अगर हम लोग कोई भी फॉर्म में अप्लाई कर रहे, कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं एंड हम लोग को रिजेक्शन आ चुका है, तो क्या हम लोग वापस उसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं जब सेकंड वैकेंसी ओपन होता है? Like in Big Four, if you apply on a vacancy and if you get rejected, can you apply again? No. No. Right? But if you apply using a different email ID and mobile number, will that work? Yeah, that I have heard from people that works. Same thing in industry also. And usually कंपनीज लाइक डीशो इन सब में हायरिंग साइकिल कितना रहता है? मतलब मैंने सुना है बहुत सारे इंटरव्यू राउंड्स रहते हैं उसमें. 6 rounds of interviews रहते हैं for a CA fresher actually. Normally तो 2-3 राउंड में कर लेते हैं वो. ओके. एंड अभी रिसेंटली डीशो का ऑलरेडी एक वैकेंसी खुला हुआ है, तो क्या वापस वो मैं तो अप्रैल में ज्वाइन करने वाली, तो वापस क्या उसका वैकेंसी खुलेगा जैन या फेब में?
तो अभी से अप्लाई कर सकती है वैसे डीशो वाले में, जैन और फेब में भी आएगी वैकेंसी, पॉसिबली जैन फेब ही कर, दैट वुड बी बेटर फॉर यू, बिकॉज अभी वैसे तो कंसिडर नहीं करेंगे अप्रैल की ज्वाइनिंग अब से। या तो एज ऑफ नाउ ऐसे कोई कंपनीज नहीं है जहाँ पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ? आई शुड स्टार्ट एज ऑफ लुकिंग नाउ फॉर तो इट इट शुड नॉट लुक, जैन मिड या समवेयर अराउंड जैन यू कैन स्टार्ट ऑफ। ओके। एंड डीशो का ऐसा कुछ पर्टिकुलर क्या प्री रिक्विजिट्स कुछ होना चाहिए डीशो अमेजोन ऐसे कंपनीज में कि उस सीवी में ये तो होने चाहिए? व्हाट डू दे लुक फॉर मेजरली? रैंक या बिग सिक्स, इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा अगर आपका रैंक या बिग सिक्स है मोस्टली आइडियली, और उसके बाद फिर इंटरव्यूज इज ऑल अबाउट इट कि देयर इज समथिंग दैट मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्राउड। बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स, कुछ लोग बहुत डीशा में उनका मतलब शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, वो राउंड्स क्लियर कर लेते हैं, लेकिन लास्ट वाला राउंड उनका क्लियर नहीं हो रहा होता है। तो आई डोंट नो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ पे वो पहले से ही वो रिजेक्ट करना था उनको, वो नहीं कर रहे, या कौन से पॉइंट पे उनको लग रहा है कि उनको वो कैंडिडेट फिट नहीं है उस रोल के लिए? आई एम नॉट गेटिंग दैट। they hardly have one candidate, two candidates, right? So बहुत मतलब उनका क्राइटेरिया इज समथिंग लाइक सबको शॉर्टलिस्टिंग का मैसेज भेज दो, उसके बाद थोड़े लोगों का इंटरव्यू लो, उसके बाद एक दो जनों को सिलेक्ट करो। व्हाट इज द क्राइटेरिया? द बेस्ट इन द इंटरव्यू पॉसिबली, राइट? और जैसे डायरेक्ट टैक्सेशन का रोल था, वन ऑफ द पर्सन हैड एक्सपीरियंस इन जीटी इन डायरेक्ट टैक्सेशन इटसेल्फ, सो ही गॉट अ प्रेफरेंस टू गेट सिलेक्टेड एज कंपेयर्ड टू अदर कैंडिडेट्स। ओके Yeah. Okay, got it. Sure, Srivali. Okay, thank you, Padam. Why is there in your name 12H57? Actually, that was my school ID, so I joined it from my school ID. That's why I didn't change. Great. Vakar? हेलो पदम। Hi, Vakar. मैं बेसिकली हैदराबाद से हूँ और आर्टिकलशिप बीडीओ में कर रहा हूँ। तो Okay. माय क्वेश्चन टू यू इज कि जब मैं आर्टिकलशिप ज्वाइन करा था तो माय मैनेजर इन इंटरव्यू ही सेड कि वी डोंट एक्सपेक्ट लाइक आर्टिकल्स टू नो ऑलरेडी हाउ टू परफॉर्म ऑडिट। बेसिक नॉलेज अगर आपको है, टर्म्स की नॉलेज है आपको, तो ओके है। तो मेरा डाउट ये है कि जब हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो हम लोग को वो प्रोसेस, वो रोल का डीप डाउन नॉलेज होना जरूरी है या फिर बस Not ऊपर ऊपर required. नॉट रिक्वायर्ड? ऊपर is enough. ओके, तो हैदराबाद में मैं ऑडिट में हूँ, इंटरनल ऑडिट में बेसिकली। तो हैदराबाद में कौन से लाइक कौन सा रोल बेटर रहेगा हैदराबाद में जो ऑफर होते, ऐसा कुछ सजेशन? ITC possibly you can try. ITC, HDFC Bank you can try. HDFC Bank, if you know Akshay Jain, All India Rank 1, उधर से ही उन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी। तो HDFC में कुछ तो क्रीमी रोल होगा। और ITC, HDFC बैंक, महिंद्रा यू में ट्राई, UBS you may try in Hyderabad, or Amazon does not hire there now. We will be circulating a list of companies actually जो हैदराबाद में है, तो वो लिस्ट रेफर करोगे तो एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। कितने महीने हुए तुम्हारी आर्टिकलशिप को? तो लाइक दिस इज माय 7th मंथ रनिंग। मेरा अच्छा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा अप्रैल में, अप्रैल के एंड वीक में पहला ईयर कंप्लीट होगा आर्टिकलशिप का। अभी इतना जल्दी स्टार्ट मत करो हंट। हाँ नहीं, बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। और एक और डाउट था मेरा कि अगर हम लोग जब हम लोग सीए बन जाते, जो एक्सपोजर हमको आर्टिकलशिप में मिल रहा और जो एक्सपोजर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मिल रहा, तो इस दोनों के एक्सपीरियंस में डिफरेंस क्या होगा जो इम्पैक्ट करेगा हमारे करियर को? आई मीन आर्टिकलशिप में देखो, यू आर गेटिंग एक्सपोजर इनटू ट्रेडिशनल डोमेन्स। व्हेन आई टॉक अबाउट वर्क पर्सपेक्टिव, आपका आर्टिकलशिप में ज्यादा काम है, अच्छा काम है, बिकॉज यू आर गेटिंग टू लेट्स से इंटरनल ऑडिट, तो अलग अलग क्लाइंट्स के इंटरनल ऑडिट कर रहे हो तुम, राइट? तो अलग अलग प्रोसेसेस संभल रहे हो, समझ रहे हो। और व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्टैट ऑडिट, तो यू आर रिव्यूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अलग अलग क्लाइंट्स इफ यू आर नॉट इन बिग फोर, right? So you get a broader perspective and you become very good at Excel. But when you talk about going into an industry, you will be getting something different. वो हो गया, आप you are on the other side basically. काफी बार आप accountant बन जाओगे, काफी बार you are handling the finance of that company, finance का constraint. तो if you talk about as a CA fresher when you will be going for interviews, and कंपनी को क्या लगेगा कि हाँ, इस बंदे ने कॉर्पोरेट कल्चर में ऑलरेडी काम किया हुआ है,
इस बंदे के पास ऑलरेडी वीडियो का तो टैग था ही, उसके साथ भी फ्लिपकार्ट अमेजोन का टैग हो गया। फ्लिपकार्ट में भी इसने काम किया, कॉर्पोरेट कल्चर इसको पता है, तो पॉसिबली ही विल बी वेल अकस्टम्ड एंड ही हैज ऑलरेडी ए ट्रेनिंग। और इफ यू आर इन द सेम इंडस्ट्री जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हो, जैसे अगर मैं मीशो में इंटरव्यू दे रहा हूँ और मैंने फ्लिपकार्ट में काम किया हुआ है, यू विल ऑलवेज हैव एन एज। वो एज आपको वीडियो नहीं दे सकती अनलेस यू हैव ऑडिटेड एन ई कॉमर्स क्लाइंट, राइट? सो दैट वुड बी सम एजेस यू कैन हैव। ओके, ठीक है, बस यही सवाल था। थैंक यू। ओके, अन्वेश। Yeah, hello sir. Good evening. गुड And इवनिंग। I'm currently doing my articleship in EY Bangalore, and मेरा क्वेश्चन था कि like my 1 year will be done in July August, and during that period of time, which our company like open करते हैं उनका hiring. So ideally I should be applying 3 months before that, but Yeah. which all company I'll be getting when my 1 year will be done in July and August? Possibly Barclays. एंड सी इट्स नॉट लाइक एक साल में एक बार ही हायरिंग होती है, ऐसी बहुत कम कंपनीज हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट राउंड द ईयर हायरिंग्स चालू ही रहती है। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज, आई कैन से 70 to 80% ऑफ द कंपनीज हायरिंग्स जस्ट गो ऑन, राइट? सो यू डोंट कीप इन माइंड कि मैं सिर्फ इन कंपनीज में अप्लाई करूंगा। इट वुड बी मोर लाइक कि यूबीएस में भी आप अप्लाई करोगे, गोल्डमैन में भी करोगे, एचएसबीसी में करोगे, हर कंपनी, एवरी टॉप कंपनी यू विल बी अप्लाइंग। Also, since I'm in stat audit, like हमको Power BI and all such thing rarely we use them. And any certificate course you would like to suggest me? I'm like specifically targeting finance role. So basically, I want to shift from stat audit to finance. Any course from Udemy can work. Any course, मतलब any course would work. Just use its practical implementation. Udemy से कर सकते हो तो, और उसके बाद उसकी practical implementation पे ध्यान दो. Make some Power BI पे project after following that course. Got it. Thanks, sir. Sure, Anvesh. Avi. गुड इवनिंग सर। Good evening. सर मेरा केस ये है ना, मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप विल बी completed on 1st January 2026. I have a good referral in ITC, HUL and Jackson company, Jackson Group जो है. But I got a call from ITC. I had an interview with finance manager. But basically I am currently doing my articles in direct tax litigation only. Okay. So जब मेरा इंटरव्यू हुआ ना, तो उन्होंने जितना भी सारा क्वेश्चन था 90% ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम मेनली ऑडिट, ओके, केस बेस्ड सिनेरियो, तो मैं उतना अच्छे से आंसर नहीं कर पाया। मतलब जैसे मुझे 10 मार्क्स का आंसर करना था, तो मैं हर क्वेश्चन पे 2, 3 या 4 मार्क्स का आंसर कर पा रहा था। एंड जो मेरे रेफरल, मेरा उनसे बात हुआ, तो उन्होंने रिव्यू दिया कि वो मेरा सीवी आगे भेजे हैं, जो फाइनेंस मैनेजर थे अपने ऊपर जो हेड है उनको भेजे हैं, लेकिन उनका ये फीडबैक था कि इसका कम्युनिकेशन स्किल्स उतना अच्छा नहीं है। तो मुझे अब ये लग रहा है ना कि अब जो आगे बॉस के पास गया होगा, उसमें मेरा जो भी रेटिंग वगैरह गया होगा, तो उस वजह से मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ अब मुझे मेरे करंट फर्म में दिक्कत ये है ना कि अब मुझे एक्सपोजर जो सीए वगैरह थे अच्छे वो लेफ्ट कर रहे हैं, फर्म से जा रहे हैं। तो मुझे डाउट है कि मेरा जो आने वाला 1 साल है वो उतना अच्छा नहीं होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा इंडस्ट्रियल हो जाए, और क्योंकि दूसरे फर्म्स में वो लोग कंसिडर नहीं करते हैं ट्रांसफर केसेज, बहुत रेयरली फर्म्स है जो कंसिडर कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा बच्चा वो 1 साल है वो मैं अपने अच्छे जगह पे लगाऊं। और ठीक है, जैसे मेरा डोमेन है, जो मेरा डोमेन है सर अभी डायरेक्ट टैक्स लिटिगेशन का, वो भी कांस्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि वो लोग कंसिडर नहीं करते हैं। वो लोग मेनली कंसिडर करते हैं जो भी ऑडिट वाले बंदे होते हैं, उन लोग को ज़्यादा कंसिडर करते हैं। तो मुझे डाउट्स हो रहा है कि मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा।
मिल जाएगा देख. नो वन परफॉर्म्स द बेस्ट इन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इंटरव्यू. इट्स मोर लाइक प्रोसेस है. अप्लाई करते रहो, इंटरव्यूज देते रहो. विद एवरी इंटरव्यू यू जस्ट गेट बेटर. Right, so keep on giving interviews. That would improve your communication skills. चाहिए तो जब you will enroll in batch तो you will be having a mock interview. तो वो mock interview में एक आपको feedback भी मिल Yes, जाएगा कि क्या improve कर सकते हो. Try Duolingo, try communication के लिए थिंक स्कूल की मास्टर क्लास जो है, कम्युनिकेशन मास्टर क्लास, इट्स अवेलेबल ऑन फ्री ऑल्सो ऑनलाइन. वो भी आप ट्राई कर सकते हो पॉसिबली. तो उन सब से इम्प्रूव हो जाएगी आपकी कम्युनिकेशन. ट्राई इनकॉपरेटिंग इंग्लिश इन योर डे टू डे टॉक्स. तो उससे भी काफी हेल्प मिलेगी. एंड सर एंड डायरेक्ट मुझे भी टैक्स इज ये नॉट डाउट अ हो रहा था ना, कंस्ट्रेंट. जैसे यू कैन. आपका अच्छा या बोल. अभी आपका ये कोर्स 16 से शुरू होने वाला है, 20 तक जाएगा. तो मेरे पास टाइम बहुत कम हाँ. बच रहा है. तो ऐसा हो सकता है कि मैं कितना टाइम है? ट्रांसफर ये जैसे मेरा 1 जनवरी 2026 पे ये एंड हो रहा फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप. अगर मुझे तब तक नहीं मिल पाया किसी का? तो मैं ये एक 109 फाइल करके उसके बाद इंडस्ट्रियल ज्वाइन कर सकता हूँ. हाँ. अगर 109 बाद में फाइल कर देना. बैक डेटेड फाइल कर सकते हैं 109. सपोज यू लीव ऑन 31st of December और टू 31st of Jan तक भी अपना इन द 109 फाइल कर सकता है. ओके. यस सर, विद द क्योंकि डेट एज अभी थर्टी फर्स्ट जितने भी ऑफ कंपनी से डिसम्बर मेरी बात हुई है तो उन्होंने बोला कि 12 मंथ्स रहने चाहिए. यस, 12 मंथ्स तो चाहिए सबको. तो ठीक है अभी. ये सर ठीक है. ओके सर, थैंक यू सो मच ओके. सर. प्रशांत. Hello, Padam. हाँ शशांक बोलो. Actually, I am from Hyderabad. Okay, I'm my firm is very small and I don't have exposure towards stat audit also. So majorly I deal with the concurrent audits of the banks. So how far can I land into industrial training? Yeah, you will land up industrial training if you are okay with all the locations. If you are not okay, still I can give you offer right now. Access Livelihood Hyderabad. But the thing is, let's try to get a good organization. Okay, so Yeah, industrial actually training I'm open for any location also. तो मिल जाएगी. Don't worry. Just put in the efforts. Be ready to put in the efforts. बाकी तो मिल जाएगी. Also one more thing, I have heard of there are various teams within an organization, right? So how can we end up into the best team of the same organization? Like coming to Flipkart, there are many teams. So how can we decide at the stage of interview itself, like we are going into the good team itself? At the interview, it would be wrong to decide. First, get the offer letter, then come to me, ki, sir, I'm going to join this team. I will ask my colleagues, my students on how this team is, and then you can get an idea ki, these are the offer letters, these are the teams I'm going to get into, these are the work profiles I'm going to handle, and then possibly you can get into the right organization. Okay. Yeah. Thank you, Padam. Sure. Faisal? Hi, Padam. Hello. Hello. I'm audible, maybe? हाँ. Yes, बोलो. या तो वो तो मेरा क्या है कि मैं वीडियो से कर रहा हूँ आर्टिफिशियल पुणे से, वीडियो पुणे से. और एक्चुअली हुआ सर मेरे साथ क्या हुआ कि मैं लास्ट डे वीडियो में कहा 3 मंथ का नोटिस होता है कंपलसरी. तो मेरा एक्चुअली मैंने गलती क्या कर दी, नोटिस लेट डाला कि मैंने एक महीने लेट हूँ मैं. और मेरा अभी जो 16 जनवरी खत्म हो रहा है नोटिस पीरियड. बट मेरे साथ गलती क्या हुई कि मैं ढूंढना तो लेट चालू किया, नवंबर में ढूंढना चालू किया मैंने कंपनी. और तो मेरा फिक्स है, मेरे को बिजनेस फाइनेंस में या एफपीए कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाना है. और एक्चुअली 2-3 जगह इंटरव्यू दिया है, 2-3 जगह इंटरव्यू दिया है मैंने. एक यूबीएस में दिया था, हैंकल कैटरपिलर करके कंपनी बेंगलोर में. बट अभी लग नहीं रहा कि हाँ मतलब इतना अच्छा नहीं गया इंटरव्यू, मतलब मेरा इस पे. और तो अभी मैंने फ्लिपकार्ट में ट्राई कर रहा हूँ, मैं 2-3 जगह लगाया था, वहाँ पर 2-3 लोग इंटरव्यू मेरी कंपनी से ना वीडियो से गए वहाँ पर. बट कुछ रिस्पॉन्स आ नहीं रहा फ्लिपकार्ट से कि मतलब वहाँ अब वैकेंसी निकली थी फ्लिपकार्ट में जनवरी से, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी कुछ दिया था इन्होंने. तो बहुत मतलब सारी है मुझे वैकेंसीज. एक्चुअली मेरा
एक डोमेन फिक्स है कि मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में आना है या फिर नहीं आना है, ये क्लियर है। मैं स्टेट और में हो गया वीडियो में, हम्म, तो उसी से मतलब करना था। अभी क्या इससे करूँगा, अभी तो एक होना चाहिए 16 चैन तक मतलब टाइम। मिल जाएगा, ट्राई करते रहे, एफर्ट्स डालते रहे, इंटरव्यूज देते रहे, अप्लाई करते रहे कॉन्स्टेंटली। फ्लिपकार्ट में इंटर्न्स, सीए उनसे कनेक्ट करते रहे। इंटरव्यूज हाँ मतलब अपॉर्चुनिटीज है, टू बी बिग सिक्स है, मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। हाँ। और मैंने सोचा कि आपका जो बैच है अभी जो कल चालू हो रहा है, 15 चालू हो रहा है ना, सॉरी। आपका जो बैच आ रहा है वो 15 से आ रहा है, 16 तारीख से, तो वही ले लूँ, चलेगा 16 ना से अभी? स्टार्ट होगा, यस, हाँ वो चलेगा। ओके ओके, इसी करते हैं। Yeah. और बाकी आपसे मतलब कनेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप पे करना होता है, कैसे करना होता है बात मतलब? वो एक बार बैच ले लेगा ना तो अपने ग्रुप में और मेरे एंड से मैसेज आ जाएगा, तो उस वाले नंबर पे कनेक्ट रहना बस। ओके, थैंक यू। बरसाना, Hello, sir. या बरसाना। Sir, would doing the second year of verticalship or industrial training outside India have any impact on placements in India after qualification? No, no, no. Mhm. Like, don't mention the location. No one knows every company. It's completely Okay. fine. But the concern would be ki if you're doing your industrial or articleship outside India, your work experience, if you're into some traditional domain like taxation, let's say you're doing it from Okay. US and you're into US taxation, so Mm. possibly that experience won't be of any relevance in India. But if you're doing in finance related roles, possibly finance is same in US and India also. तो वो कुछ Okay. impact नहीं करेगा। Okay. Which would be better, doing outside India or doing industrial training in India? India, India, India. Okay. Thank you. Yeah. Anjali? Anjali has left. Chalo. Thank you everyone for joining today's session. See you in the batch very soon. Just one more question, Padam. Yeah. अरे मुस्कान तू छोड़ ही नहीं Just, रही, बोल। just one more question. Yeah. आप बोल रहे थे ना कि आपने कुछ होमवर्क दिया है सबको, कुछ लेक्चर्स कंप्लीट करना, व्हाट इज दैट? जो भी 31 दिसंबर तक एलिजिबल हो रहा है एंड वो बैच का पार्ट है, तो उनको मैंने बोला है कि 16 कल तक अपनी रिकॉर्डिंग सारी देख लेना और अपना सीवी बना के रेडी रखना, तो मैं उसको पर्सनली सीवी रिव्यू कर दूंगा। और उनको होमवर्क दिया है कि मंडे से अप्लाई करना शुरू करना है, बेसिकली परसों से, और 31 दिसंबर तक मुझे ऑफर लेटर लाके देना है उनको। ओके, सो आई विल ऑल्सो बी इन दैट पार्ट, लाइक मुझे भी 31 दिसंबर टारगेट करके चलूंगी मैं। सो मेरा रिज्यूमे आपने देखा हुआ है, दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट। उसको व्हाट इफ ब्लैक कर दूं हेडिंग्स, तो विल दैट वर्क या न्यू बनाना है फिर से? न्यू ही बना दे यार, बेटर रहेगा। बट वेट वेट वेट, तेरा मैं अलग से देखता हूँ, वो ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा इफ यू आर गोइंग टू गोल्डमैन ऑलरेडी। गोल्डमैन के ना थोड़े कंपनी वाइज सिलेक्टेड सीवी वाले टेम्पलेट में देख ले गोल्डमैन में कौन कौन से सिलेक्ट हुए, राइट? तो उसके हिसाब से फिर सिलेक्ट कर। HSBC को भी टारगेट करके चलें क्या? उस बट वो अकाउंटिंग रोज देता है। HSBC बेकार है, बैंगलोर के तो बेकार है, गुड़गांव तो भी ठीक है, गुड़गांव में ही जाना है HSBC तो। डिसेंट है, टारगेट कर सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वही बेंगलोर की फर्म्स है, तो उसके लिए आप मुझे बता देना। HSBC मुंबई भी अच्छा है निखिल। मैं आपको एक बार ना रिज्यूमे सेंड कर दूंगी, आप प्लीज देख लेना क्विक, डन और बाकी सेशन में बात करते हैं। डन। यस, खुशी, थैंक यू। Hello, Padam. हाँ खुशी बोलो। Actually, I'm from Patna, and my first year is completing on 27 Jan. ओके। And I'm applying since September, October for industrial training, but I haven't got any company now. So I got call from Preeti from Goldman Sachs. I got a call from her 2 times, and she didn't select me that time. And I even got a call from Citibank, all in November. But that time they were like, you are eligible in January, so we can't take you now. And now I don't think there are any vacancies from good companies. So what should I do? I even got a mail from UBS 2 times. First one was from Anila,
and second from Riya Roopjeet. But they haven't scheduled an interview, and in Goldman and City also this happened same. They didn't schedule the interview because they said ki you are eligible in Jan. So what should I Right. do right now? Nothing. Basically, see, if you're receiving calls, that means your CV is right, you're applying the right way, right? Just that your time has not come yet. The time would be the last month, right? So good companies, obviously, I understand your concern कि good companies के तो अभी आने चाहिए. Goldman का भी आ जाएगा थोड़े time में interview call. City, probably you can apply again. Gurgaon or Mumbai. Mumbai, they have a vacancy probably. And उसके अलावा HSBC Mumbai, you can try. And just keep applying with the same CV, with the same strategy, because you're receiving calls. That means you're doing the right thing only. Just give it a patience, do it consistently, and aa jayega. It's not that far. Should I call them again? Actually, I had number of HR Monica from Amazon, but she didn't pick the call You're from first Big Four or time. Big Six? No, I'm from a mid-size firm. Mid-size. So Actually, my possibly, two friends, Nikita and Simran, was from your class only, and they got selected in Amazon. I was So, about to ask you only. Matlab, whenever I hear Patna, I hear three people: Simran, Nikita, and that one more person was from the same firm. That was a guy actually. Three um, of them. yeah, but Uh, Simran and Nikita got selected in Amazon, so I was like, yeah, I can try it. It's a mid-size firm, but I don't know why. अभी I उन्होंने बंद कर दिया है बिग सिक्स वाला. पहले तो इनका सिंपल था. सिमरन एंड निकिता वर फ्रॉम द सेम बैच थे. उन दोनों का सिंपल वो कोल्ड मेल करने से हो गया था. पर yeah. अभी दे हैव चेंज्ड. And she also told me about some internal vacancies, but it gets filled so quickly now. But you have Should the I right mentors call? actually. If you are in touch with सिमरन ना, you मतलब वो बता देगी तुम्हें. बहुत vacancies. She is very good actually. Yeah. So they'll hire from Big Four or Big Six only from now on. Mostly. Very rarely from normal. Should I call Monica again? Because I did on Monday and she Your didn't pick. work is to keep in the efforts, right? So you should be calling, regardless of whether they have big six or not. Because if anything turns out good, worse is rejection, which you have already got, right? So possibly, kar lo call. Okay, thank you. Sure, Khushi. Okay, everyone. HSBC Mumbai is also good. And yes, let's meet in the coming sessions. And if you need anything, any assistance without even being part of the batch, you can just let me know over the group and I'll try to help you in any which manner if possible. बाकी 16 से live batch शुरू हो जाएगी every day 9 p.m. for 6 days and placement till placement obviously support रहेगा and the bond we create that goes on even after placement as you have seen in today's session also with speakers, right? So ठीक है, try करते हैं. We'll be uh, having more such sessions, more such moments, and let's try to get your dream industrial training opportunity as soon as possible. If there was any issue from my side, sorry for that. And yeah, let's keep going. Yeah. Okay. All the best. Thank you so much. Thank you, Muskan, Nikhil, Renu, Harshad, and thank you, everyone. Thank you. I'll end the recording. Good night. Thank you for staying till end. Thank you.